in water supply is of ladies. They require water in the households also early in morning, a bit later than senior citizens. And they require water in the morning, noon, and in the evening. Farmers, farm laborers, employees, school-going children also require water at some other time. So, how does we will meet the need of rural population for supply of water as per their requirement? Since all are involved in the scheme, all have deposited the beneficiary share, it is the duty to provide them with water supply as and when they require. If we call the meeting of the village level sanitation committee or Gram Sabha after completion of the scheme, maybe after 1 month of completion of the scheme, we can have views of the people, how they react, the amount of electricity bill received. We can discuss the expenditure on working of the scheme, salary of the operator, minor repairs in distribution system, cost of the chlorination. So, keeping in view all parameters and the requirement of water supply at different timings, we have limited resources. We cannot run the machinery for 24 hours. Then how we will pay the electric bill? So, can anybody tell what is the option before us? Hello? Sorry. This is round the clock water supply, 24/7 water supply. We may satisfy all the citizens in the village with minimum expenditure. How? Are all agreed? We will discuss how to supply water for 24/7. Let us discuss some few important points. If we supply 24/7 water supply, there is greater or total satisfaction from all sections of society. No wastage, no Tulu pumps, no electric expenditure on Tulu pumps. No leakage and distribution system, no contamination, judicious tariff. These are the main important, very important points if we supply 24/7.
possible only if the earlier stage, the community should habit of closing the taps when they does not require water. When they cross this stage, the wastage cannot be controlled by simply installing taps. It is possible up to some extent, but not foolproof method. So we must go for metering. This thing happened in one of our villages. We commissioned underwatering project 10 years back. When the first electric bill came, there was meeting of the Gram Sabha. People were saying that the water is being wasted in village drains, going to village pond, running of the machinery is too much, bill is to be paid by the residents. After thorough discussion with the village, they themselves demanded installation of water meters. After taking the approval from the government and the World Bank, we installed water meters on the distribution system. After installation, there were some new problems which we observed. Pressure in the distribution system increased, causing some leakages in the already laid system and in the new system. We were repairing the leakage. Some of the silt or clay enters the water meters, blocking them. Scouring of pipes. This process continued for 1 month. After some time, we were able to control the system. Since all the residents have to be on the same pace, this is not possible. Some will pay on lump sum and some will pay as per consumption. I have to mention also from my experience that the single responsibility for laying the distribution system and the installation of meters is correct method of implementation. Otherwise, if there are two agencies, they will blame each other. The agency responsible for installation of meters will blame the agency responsible for installation of pipes, making individual connections. So this should be in a single contract. When we overcame this problem, we were able to control wastage completely and distribution system became leakage proof. No leakage in the distribution system. No chances of contamination. We started levying volumetric tariff, which was responsibility of the GPWSC. They fixed the rate to overcome the expenditure with some profit, so that in every month they are in profit. There were all the expenditure and revenue collection was written on the transparency wall and discussed in the village. All the people in the village agreed to this system. They were getting around the clock water supply with
reasonable tariff as per consumption. What? When we started closing the sluice valve of distribution system with intermittent supply but volumetric consumption, we see this system also creates problems. When we open the water supply in the morning, there's peak demand, maybe 3-4 times the regular demand in the daytime. Again, with too much pressure, causing some leakage. So, after a few days, we decided, the village people decided, so that we should not close the water supply during night also. We kept the sluice valve, outlet sluice valve OHS open at minimum level. There was some automatic control device. When the overhead surface reservoir is completely filled, the machinery stops pumping, and when the OHSR is half filled, machinery starts, fuel starts, or the source of water supply starts pumping water in the overhead system. So, volumetric consumption with the regular supply is sustainable for all times to come. The best possible option in the rural areas is this. You can see 2 villages, comparison of 6 villages. First 2 are on flat rate, last 4 are on volumetric basis. About similar population, number of connections, capacity of the machinery, comparable. Fourth column, you can see the pumping hours of the tugel or the machinery are 9, 10, 9, 8, 8, 10. Supply hours in first two schemes, which are on flat rate without water meters, only 4. Now, you can see the supply hours in the last 4, 24. What this happened? Running of tugel is same. Supply is 6 times. How it happened? By controlling the wastage totally, and with volumetric tariff, people started behaving according to rules, used water as per their consumption. You can also see the expenditure in the last column. Just a table showing the number of household and water connections in all the 6 villages. First 2 are volumetric, last 4 are first 2 are flat rate, last 4 are volumetric supply. Now, same table, just presentation. Green are pumping hours, blue are supply hours. This is the role of the community participation from planning to implementation phase. The results are before everybody, and it is practical.
running since 10 years. After some time, we will also present the village community, the village level committee members who are running the water supply schemes since 10 years, 24/7. Average expenditure per capita per day. So, it is clear around the clock water supply, 24/7 water supply is the cheapest form of supply, 100% service delivery, but initial stages, some hard work from the department and the community as a joint team is needed. Normally, what happens? It is like climbing a hilltop. If we climb the hilltop, we achieve. If we came back, we fail. We should not came back. If every engineer himself make one water supply scheme 24/7 personally by taking interest, maybe from any designation, then he himself can feel the internal satisfaction from working. The people will compliment like anything. Even the women in the villages were saying that there is no mental tension. Their BP is also under control. Otherwise, they were tense. What supply will go, our work will be left. This is the impact of regular water supply on minds of the people. I think all of you may agree. I request everybody to make at least one scheme himself 24/7 and see the comments of the people. But it is not possible in a moment. If the public is involved from the initial stage, pre-planning, planning, implementation, then this, of course, as you discussed, listened about all these stages in detail the previous day, pre-planning, only one thing important, listen to whole of the village, call the Gram Sabha meeting, make the representative GPWSC, you can solve all the problems. Planning, design the scheme, survey the village properly, show the village map to the people. Nothing should be left. Now, in JJM, there are not only water supply, but also sanitation, improvement in sanitation, grey water management, community health complexes, cattle troughs. We have to make the village clean. We can make if we took interest from our heart. There should be will to serve
the environment in the villages will be very good. Pre-planning stage, school children were involved to educate them for necessity of clean water supply, regular water supply, so that they can convince their parents. Children are best carrier of knowledge, transformation of knowledge, can convince their parents for this, to control wastage, to need good quality water. This was most efficient way. In planning stage, calling of Gram Sabha Ijlas. We must listen each and every people of the village, ensure participation of all the communities. All the sections of the society should have participation. All the working people, not face-showing people. Working people, sincere people should come forward. And it should be representative in GPWS. This single step may solve all the problems. If the people faith in GPWSC and GPWSC comes in coordination, works in coordination with the department, the results will reach each and every house. And result is potable water to every house at reasonable rates. You can see how the people gathered when we called to discuss existing problems, future planning, how to work, how to control wastage, why quality water is necessary, should we use groundwater or surface water. The participation of women is in maximum number, since they are affected with water supply. We have discussed the implementation stage yesterday in detail. The end result is when we are able to create mutual trust and confidence in the minds of the people that the department is serious, working as a team with the community to deliver the results. This mutual trust is in future. All pictures of implementation stage we have seen yesterday also. Checking chlorination, to train the people how to check the chlorination at the tail end. They are educated for quality testing. Record keeping. In the picture is our former principal secretary interacting with the village people. This is the picture of the village, Singhpura in Punjab, where the first 24/7 water supply scheme was commissioned in year 2009-10. First village in our country.
From this, the concept of metering 24/7 started 10 years back, and scheme is running properly as early the registers like proceeding of the committee, minutes of the meeting are to be recorded in a register, meter reading, bill generation, bill distribution, bill collection, deposit in bank, any expenditure in a transparent way, maintaining cash book, maintaining daily cash book, maintaining the account of each consumer in a ledger, complete record. चलूगा complete record is in front of you. The people are maintaining themselves, and we have called them today also. You can discuss personally, you can ask them personally how they are maintaining. And they have money in their saving bank account also. So, what the department could not do has been done by the community. But jointly, department and community. Collection of bills. People are standing in line. You can see when number of villages, about 125 villages of particular constituency, people were called at a single stage. Maybe first time in our state. As all of us know, there are a number of complaints about water supply. We cannot have get together of this level at single place. Standing in front of so much people and discuss water supply satisfaction is not easy task. If you work closely, involve community, satisfy, solve all their problems, all of them get better, then you can speak on such platform. All village panchayats, all GWSCs are on one platform. Total satisfaction, social audit. This is must after completion of all the schemes. Then information education campaign, IC campaign, so much strong IC campaign to other areas. We need not to say anything. The work done speaks itself. As we see recent times, politicians has to go to villages and
tell the work done, but work done speaks itself. So 24/7 in villages is a reality. Especially we have done it in people-based single village scheme. Now we will do also our big schemes based on canal water, group schemes involving first scheme, starting from first scheme Moga, which has been prepared by my colleague, Engineer Balveer Singh, a few years back, recently completed, will be commissioned, and government has decided to run the big water supply schemes on 24/7 volumetric tariff, around the clock potable water supply. Now you can see practical video showing video but chemical video चलाओ खाने लगी Any question so far for the post implementation phase? Any question from any participant? I think all of you are fully satisfied. Okay, any question? In case it is not there, so now we'll move into our next session. Now we will introduce you to the GPWS committee members of key model villages, and we'll have a face-to-face interaction with them, and they will share their experiences, how they're operating, how they're maintaining, what type of records they're taking. So now I just request Mr. Sukhbinder Singh, he will introduce you to the members, and then so that we can move further for our second session. Okay, over to Mr. Sukhbinder Singh. Now I am calling the chairman and cashier, secretary of the village, first village, Singhpura, which was made 24/7 about 11 years ago. Sir Jignahar Singh, Sarpanch oblique chairman of the village. Sir Gurnam Singh, Sir Jignahar Singh,
is sitting with me. He is Sarpanch of the village, unanimously elected Sarpanch, and chairman of the village level water supply and sanitation committee. Mr. Gurnam Singh, secretary of the GPWC of the village, Singhpura. Ranjit Singh, chairman Sarpanch of village Kator. The second village, which was made 24/7 in year 1 or 2 years after the village Singhpura. They are present before you. They have done the work as a team with the department. In all phases, in pre-planning, planning, implementation. In implementation phase, all these chairman and secretary, cashiers, they were, as I said yesterday, they were involved fully in quality of materials, workmanship, construction, mixing, depth of the distribution system, mixing of concrete, curing of concrete, even selecting the length of the housing pipe of the tube, installation of the tube. They were involved each and every activity from start to end. Due to this reason, their involvement, we were able to make this scheme, first scheme in Punjab and in our country 24/7. And up to that time, there were nobody knows about 24/7. And it also happened suddenly. So first we will show you brief video of these villages, then they will interact with you. Chalo. पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए ढाई आया पिता सगल चल गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਭਾਗ पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए ढाई आया पिता सगल चल गुरबाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
विश्व बैंक के सहयोग नाल पुरानी व्यवस्था ਨੂੰ बदल के पंजाब के पिंडां विच 24 घंटे पानी मुहैया कराउण दा बीड़ा चुक्या है। इस दी शुरुआत सन 2008 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। मैं बिल इकट्ठे करना जी ते सारे पिंड दे लोकी बिल एक दफ्तर बनाया है पिंड च उत्थे आके जमा कराने जी ते जेड़ा पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत। गुरबाणी दे विच पानी दे इस महत्व नूं स्वीकारदे होए इस नूं पिता दा दर्जा दिता गया है। इसे तत्त नूं मद्देनज़र रखदे होए जल सप्लाई ते सैनीटेशन विभाग पंजाब ने विश्व बैंक दे सहयोग नाल पुरानी व्यवस्था नूं बदल के पंजाब दे पिंडां विच 24 घंटे पानी मुहैया कराउण दा बीड़ा चुक्या है। इस दी शुरुआत सन 2008 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। मैं बिल इकट्ठे करदा जी ते सारे पिंड दे लोकी बिल एक दफ्तर बनाया है जी पिंड च उत्थे आके जमा कराउने जी। ये जिहड़ा रिकॉर्ड है कैश दा सारा ये पारदर्शी तरीके नाल रखिया होया जी ते जो साडा कैश बचदा जी जमा हुंदा वो सारा बैंक च असी रिकॉर्ड रखते हैं जी ते साडे कोल इस समय 4,28,585 रुपया कमेटी को जमा है। ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਘਟੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਦੀ ਇਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਢਾਈ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ TV ਦੇਖੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਘਟੌਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 10% ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 60 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਕਲੋਰੀਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਐਨ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਬੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀ, ਡੰਗਰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਡੰਗਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ, 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ
ਖੋਲੀਏ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਅੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ। ਟੈਂਕੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2007 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ। Hello, all of you have seen the video, practical video in these villages which were made 24/7 about 10 years back. Now, who have done this, they are sitting with me. They will explain themselves what they have done. We will listen and speak in Hindi. मैं पहला I will request जगनार सिंह जो उस वक्त सरपंच थे सिंहपुरा गांव के जब ये स्कीम बनी, और सर गुरनाम सिंह जो सेक्रेटरी थे उस कमेटी के शुरू से, ये आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो क्योंकि सब कुछ किया है इन्होंने, खुद किया है। और इनकी स्कीम अब भी वैसे ही चल रही है जो 10 साल पहले थी। तीनों से अलग अलग मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। शुरू तो ब्रीफली हिंदी बोल दो, ठीक है? माँ बस ठीक है, हिंदी दस दो। हाँ, उस थोड़े सरपंच सीगे वो कुछ सारिया स्टेटा तो ऑफिसर बैठे ने, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ते लेह लद्दाख। मैं जगनार सिंह साबका सरपंच पिंड सिंहपुरा, हिंदी बोल, कौन सिंहपुरा, तहसील मोहाली, डिस्ट्रिक्ट भी मोहाली। ये जो स्कीम 24 घंटे की चली है वर्ल्ड बैंक के चलाई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ वो पानी ठीक नहीं थी। इसलिए हमारे उस टाइम दे जो मौजूदा सरपंच सी मैं तो हमको टीवी में और अखबारों में पता लगा कि वर्ल्ड बैंक की ओर से ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें 10वां हिस्सा जो वो गांव को देना होता था। हमने 1 महीने में गांव में से 3,29,000 रुपया जमा कराया तो हमारे गांव में वो स्कीम लगी। स्कीम के बाद सन 8 में उससे बाद जो पानी की प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन जो पानी फालतू चलता था उसके लिए हमको बहुत कठिनाई थी, क्योंकि जो पानी है वो बहुत नीचे से डूंगा आता है, उसको बर्बाद होना हम नहीं देख सकते थे। हमने महकमा को बेनती की कि हमारे मीटर लगना चाहिए ताकि जितना के पानी असी दे सकते हैं उन्ना असी पानी दे, फालतू पानी है जो वो जाई ना जाए, क्योंकि जो पानी नीचे से आता है वो बहुत कीमती है, उसको अजाई गवाना वो ठीक नहीं है। इसलिए मीटर लगने के बाद हमारे गांव में जो मीटर लग गए, मीटर लगने जो पानी था वो ठीक जितना हमको बरतना था बरतते थे, बाकी का जो अजाई नहीं जाता था। इसका एक कारण और भी है कि जो 2-3 मंजिलें मकान की थी उनके ऊपर भी ये पानी है जो चला जाता था, उसमें कोई टुडू पंप वगैरह लगाने की कोई लोड़ नहीं थी। इसलिए हमने ये स्कीम है जो महकमे ने हमको इतना सहयोग दिया कि हमको कोई बहुत ही परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो गांव वाले लोग हैं उनका जो इकट्ठ होता है उसमें इकट्ठे होकर वहाँ फैसले ले जाते हैं कैसी कमेटी बनानी है। हर एक कास्ट विचों जो मैंबर हैं वो आपां नूं लेके पाने पैंदे हैं, क्योंकि जो बंदे जो गांव में हैं उनका हर एक का जो पूर्ण सहयोग होता तो काम सिरे चढ़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इसमें हाथ था वो उस टाइम दे एक्शन साहब थे जो सरदार सुखविंदर सिंह, उन्होंने पूरा जो हमारा साथ दिया। 24 घंटे की जो बात है कह देने वाली बात है, जी बहुत सौखी है पर रह के पूरी करनी बड़ी औखी है। एक बार की बात है कि हमारी जो मोटर थी वो सड़ गई, उस टाइम हमने एक्शन साहब को उसी टाइम फोन किया, उन्होंने कहा भी आप मोटर निकाल सकते हैं। हमने जो उसी मोटर निकाली, मोटर निकाल के दूसरे दिन जो साड़ी मोटर थी वो उहदे विच बोर में चलेगी। इसका मतलब ये है कि जब तक गांव महकमा दो इकट्ठे रल के ये काम नहीं करते उतना सिरे नहीं चढ़ते, क्योंकि गांव वालों ने काम करना होता है और जो डायरैक्शन देनी होंदी है वो महकमे वालों ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है। जे दोवां का सहयोग नहीं तो यह जिहड़ियां स्कीमां ये सिरे नहीं चढ़ सकदियां। इस कारण करके असी ये बार-बार ये गल कहने भी महकमे का अते गांव का सहयोग होना सबसे अति जरूरी है, उनका तालमेल होना अच्छा है। और इस स्कीम का आगे जाके ये है कि जो हमने फिर इसका भी किस हिसाब से गांव में पानी देना है मीटर के हिसाब से लगा, कोई ज़्यादा बरतता है कोई कम बरतता है, फिर हर एक को जितना पानी बरतेगा उसको उतना ही उसका पैसे देने पड़ेंगे। ये स्कीम जब हमारे गांव में 24 घंटे चल गई, पूर्ण सहयोग होया, उसके बाद असी महकमे नूं अगे भी बेनती की थी। उसी हिसाब नाल साडे गांव में फिर सीवरेज का काम हुआ, क्योंकि सीवरेज भी वहाँ हो सकती है कामयाब हो सकती है जहाँ 24 घंटे पानी होता है, क्योंकि जो सीवरेज का काम है जिहड़ा पानी बिना वो नहीं पूरा हो सकता। इस हिसाब नाल बाद में सानू जो सीवरेज है वो भी महकमे ने सानू उत्थे साढ़े गाँव में पवाई, और जब से स्कीम चल रही है जब से एक बारी भी ना बंद हुई है ना कोई इसमें कोई रोक पई है। जो सीवरेज है वो भी ठीक चल रहा है, जो
पानी का है वो भी 24 घंटे चल रहा है। और हमारे गांव में बिल ना देने की कोई भी ऐसी गल नहीं जिसमें कोई रुकावट पवे। हमने जो मीटर का रेंट था वो लगाया और जो उसका पानी का था उसका 5 रुपये यूनिट के हिसाब ਨਾਲ ਲਾਇਆ, जिस नाल के खर्चे कट के बिजली का ऑपरेटर का ते जो अकाउंट का काम करता वो उनका सारा खर्चा निकाल के हमारे पास कुछ पैसे बच हैं जो कि हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया। इस टाइम साढ़े को 4 लाख से ऊपर रुपया जिहड़ा वो जमा होया। बाकी जे कोई शिकायत होंदी है तो कमेटी मैंबर उसनों दस के जदे ठीक कराना। इस करके गाँव वालों की ओर से कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो बिल हैं बिल भी हम एक गल बड़े दावे से कह सकते हैं कि हमारे जो बिल है वो 1 तरीक तक आ जाते हैं और 10 तरीक तक लगभग 96-97% है जिहड़े लोग वो बिल भरा जाते हैं। अगर जे कोई को बिल नहीं दे सकता 10% अगले महीने दे विच ला के उन्होंने जो पैसे हैं वो ले जाने हैं। असी ये गल कहने हैं भी जिस तरीके नाल कोऑपरेशन महकमे ने दिता ते पिंड ने सहयोग दिता, इसी दी बदौलत अज साडा पिंड फिर भी उही बुलंदियां ते पहुंचा है। इस कारण करके असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे महकमिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। जय। ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੀ ਸੀਮਟ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਢੁਕਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੇ। अच्छा दोबारा ले आए इस सारी स्कीम के बारे में हम कुछ और कहना चाहते हैं। वो ये है कि जिस टाइम ये स्कीम बनी है उस टाइम जो कोई उत्थे पैप वगैरह बजरी वगैरह जिहड़ी कोई चैकिंग सी वो कमेटी मैंबर हैं जिहड़े वो अपनी ड्यूटी नूं बड़े ठीक ढंग नाल निभाउंदे सी, क्योंकि गाँव वाले ने ये जो कमेटी बनी है उसने सब ने जो पाइपलाइन विच पाई वो भी असी आप चैक करी है, असी आप पास करी है, वो ही लगी। उसके बाद विच जो प्लास्टिक पाइप थी वो भी जितनी पड़ी है उसकी भी हमने पूरी निगरानी के साथ वो सारा काम है जो कराया है। क्योंकि असी जो पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है चाहे जिमीदारों से आता है गाँव में से आता है उसको हम समझते हैं कि इसको अजाई ना वाया जाए, ठीक ढंग नाल इहनूं कराया जाए। सानू बोर्ड के बारे में भी पूरी जानकारी भी इसका पत्तन किन्ने फिल्टर पे है सब पासे सानू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ भी कोई चीज़ खरीदी गई है वो सारे सानू नाल लेके असी आप चेक करके ਤਾਂ वो ਜਿਹੜੀ है चीज़ पाई है ताकि उसके विच कल कलम नूं कोई ऐसी वैसी गल ना। पाइप ਤੁਸੀਂ फैक्ट्री भी गए थे चेक करना प्लस ਜਿਹੜੀ सीमेंट ਤੇ कंक्रीट मिक्सिंग ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ बाकी ਜਿਹੜੀ प्लास्टिक पाइप या दूजी पाइप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ गई है वो सारी असी नाल होकर खरीदी है। अते जेड़ा भी कंक्रीट चाहे वो टैंकी बनी है चाहे कोई होर काम है असी अपनी हाजरी विच कोल खड़ के उसकी निस्बती जिहड़ी वो पूरी ठीक ढंग नाल पाई है ताकि इसके बारे विच कल कलाम नूं कोई मुश्किल ना आवे। सरपंच साहब ने जो बताया इम्प्लीमेंटेशन फेज कंप्लीट फ्रॉम प्री प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, सारी ड्यूटी जो इन्होंने निभाई डिपार्टमेंट के साथ वो सभी इन्होंने बता दी। अब गुरनाम सिंह जो सेक्रेटरी हैं कमेटी के, जब स्कीम चलने लगी उन्होंने क्या किया वो आप खुद बताएं। जी बोलिए। ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ हैं जी, मैं सैकटरी हाँ जी। ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ है जी ਹਜੇ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਰੁਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਵਧੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, 60 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10% ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4,38,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 250 ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ IAS ਔਜਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਮੀਡੀਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਣੀ 24 ਘੰਟੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਪੀਓ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਪੀਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਆਮਲ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। 2014 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ 2015 ਚ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ JE ਸਾਹਿਬ, SDO ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੀ 15, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 2 ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 1991 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤਾਂ IAS ਅਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਵਸੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਜਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ, ਵਧੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ
ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ विस्तार ਵਿੱਚ आपको सब कुछ बताया जो इन्होंने किया। इस तरह होर नाल दे पिंड एक घटौर पिंड सी, उत्थों दे सरपंच साहब बैठे सरदार रणजीत सिंह, ये भी तुहानू अपने पिंड बारे दसणगे भी इन्हां दी स्कीम किस तरह चल रही है। सरपंच साहब दसो। नमस्ते जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं रणजीत सिंह सरपंच पिंड घटौर तहसील खरड़ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 270-80 ਘਰ ਨੇ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2012 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 50% ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ 50% ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੋ 10% ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਲ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਟਿਊਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਟਿਊਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 270 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਪਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 280-85 ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਗਰ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 6 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੰਭੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਥਾ ਪਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਓ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੂਆ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सरपंच साहब ने
बड़े ही अच्छे ढंग नाल प्रभावशाली ढंग नाल स्कीम के चलन बारे भी बताया आप सभी को, और बहुत अच्छा संदेश भी दिया सभी को, डिपार्टमेंट को और लोगों को आपके माध्यम से जो जा सकता है कि पानी को बचाइए, पानी को ठीक ढंग से बरतिए। 24/7 वाटर सप्लाई अगर गांव में हो जाए, इसका खर्चा भी कोई नहीं है, सहूलत सबसे अच्छी है, पानी वेस्ट नहीं होता। इसको अपनाइए और लोगों को साथ लेकर चलिए। इस हिसाब से वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे देश में सभी गांव में डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोगों के साथ मिलकर इस सहूलत को अपनाएंगे। ਹੁਣ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਨਟੇਨਡ ਇਟ ਐਕਸਲੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ which is better than the I may say government offices. Now he is showing to you each and every register. मैं सारे ऑफिसर साहबान को बेनती करना जी कि ऑनलाइन गल्लां चलदियां जी, एक नंबर एक है जी, तुसीं साडे पिंड विच आके देख सकते हैं जी भी वाकई ये स्कीम किस तरह लागू है जी, किस तरह चल रही है। पहला तो मैं दिखाना चाहना जी भी साडे पिंड दे विच पंडित जवाहर लाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ आज ਤੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। मेरी रिक्वेस्ट है सुखविंदर जी, अगर वी शुड टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरेक्टिव बना दे, जो भी अगर कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इनका एक्सपीरियंस जो है उसको ज्ञान लेना है। आप कराते पहले हाँ जी रिकॉर्ड दिखा दें जल्दी करो, पहले ये साडा जी कार्रवाई रजिस्टर है जी। कार्रवाई रजिस्टर ਜਿਹੜੀ भी मीटिंग होती है जी, वो हर महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मीटिंग होती है जी कमेटी ਦੀ जी, जो भी कोई फैसला लेना ਹੁੰਦਾ जी इस ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਇਹ शिकायत रजिस्टर है जी, कोई भी कंप्लेंट ਹੁੰਦੀ है जी ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। 24-25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। 1 ਤਰੀਕ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10% ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਚਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਇਸ ਤੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5-7 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੈਜਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪੇਜ ਲੱਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੂ ਹਿੱਟ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਾਈਲਸਟੋਨ in English Daily Tribune। ਹੁਣ any participant please ask any question about post implementation phase. The people who are maintaining the scheme are sitting in front of you. Please ask any question on this topic. All of you are requested so that you can implement these schemes in your areas. Please ask. We have shown practical. And these villages are in Kandi area of Punjab. Not plain Kandi area, Shivalik foothills, Block Majri, adjoining Himachal. Kindly ask any question in your mind. They will reply. ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਰਿਆਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਜਿਹੜੇ आते हैं थे। ਹਾਂਜੀ, हाँ जी। तो यहाँ का टेरेन जो है बहुत टफ है, जहाँ से हमारे जो सोर्सेज हैं उनका वाटर लेवल जो है वो तकरीबन हमारे 2000 फीट से कम ही रहता है। 2000, और हमें उनको फिर चढ़ाना पड़ता है 5000 फीट हाइट तक। ओके। तो मल्टी स्टेजेस यहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं पंपिंग के लिए। ओके। तो बड़ा जहाँ हिली एरियाज में विंड्स स्टॉर्म ऐसे होते हैं, कभी कभी बर्फ पड़ती है कुछ एरियाज में, तो ये बड़ा इंटरप्शन रहता है सर। तो प्लेन के मुकाबले में यहाँ हिली एरिया में ऐसा मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल है सर। यहाँ तो बहुत सी एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट पर ही निर्भर रहती है। तो ऐसे में हम देखते हैं इन फ्यूचर को इसका कोई हल निकले तो अच्छी बात है सर। आपका जो सोर्स के बारे में आप बात कर रहे हो, सोर्स इज डिफिकल्ट। बहुत सोर्सेज हैं और जो हैमलेट्स हैं वो स्कैटर्ड है, और वो डिफरेंट हैमलेट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट है, उनमें बीच में रिजेस हैं, कोई नाला कहाँ है, कोई सोर्स कहाँ है, तो उनको कंबाइन करना या कनेक्ट करना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो उनको इंडिविजुअल सोर्स से ज्वाइन करना पड़ता है, और वहाँ कम ड्राउट सीजन में तो वो सोर्स में डिप्लीट हो जाते हैं वो पानी का, तो काफी समस्या हो जाती है। अब जेजेएम में हम उनको कैटर कर रहे हैं बेटर वे से, और उसके लिए जो उन्होंने अभी तक जो हमारे जो दिया हुआ है सर, वो तो दिया है कि 55 LPCD
इसी के लिए हम उनमें जो स्कीम्स हैं वो फ्रेम कर रहे हैं अभी सर। तो 24/7 का तो अभी सर यहाँ कोई ऐसा है नहीं सर पॉसिबिलिटी। नहीं, अगर तो आपके सोर्स हैं जो हेलमेट्स में सोर्स हैं, अगर यस सर, 18 साल रहते हैं, वाटर इज अवेलेबल फॉर होल ऑफ द ईयर, then you can have small scheme, mini water works. You may not have to join all the helmets. sorry sir, जो the heights of the hamlets is very that is very steep and high, and the sources are very down. That I understand. You need high head pumps, but if the source is not perishable, it remains throughout the year. Not perishable, but sometimes there is a water scarcity and depletion of the water level, sir. Okay. Yes, sir. If you have to make the big scheme, right, sir, then you have to design it properly. But the distribution part, village part, that has to be controlled by the GWSC. If you will not control the wastage, then your scheme will be too much costly. You may not supply 24/7. It is not mandatory. Right. You should have controlled the wastage to reduce the expenditure, to reduce the tariff. That is necessary. The control of wastage is possible only with the help of community. Yeah. The head works, you can manage yourself, but kindly involve the people of the area in your scheme. No, sir, people of area, they are sir, depend on the government, on the agencies. The schemes are very tough, and for them it is very difficult to come the office and other, because the areas are, they are not motorable even, sir. They are not need to come to your office. Office can go to their village. Yeah. We may call the meeting in the village. Right, sir, right. We are doing this, sir. Need not call them to your office, but we should go there. And we are going, sir. We are calling these meetings also. So they are calling the officials also. But there are some geographical problems are, sir, there. Geographical problems are there. Terrain is difficult, and execution of the scheme, design of the scheme is also right, sir, difficult. But distribution part, the village part, that needs the community participation to control waste, to control tariff. Every scheme cannot be 24/7. Right, sir, right, sir. But every house should get the water according to his requirement. Right, sir. Thank you, sir. Any officer who want to ask from these sarpanches, chairman, cashier, secretaries directly, I request again, any officer. So such sir, the interaction of such dignitary sarpanches, I think it will be very important for the representatives of our areas, Kandi areas, if they have some such a program in Jammu or Kathua even, because that is a starting point of our J&K. So that is always welcome, sir. You can call a representative of your area also with you. So this depends on government level, sir. Okay. Yeah. But I think I am highly grateful to our worthy principal secretary, ma'am, who has idea in mind to call these sarpanches, chairmen, and to bring in your contact. I am highly grateful for this idea of our secretary, ma'am. Right, sir. Thank you, sir. So thank you. Thank you. हेलो। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन सरपंच साहब से है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है J&K में, तो वो रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे 3-4 साल से। क्या इशू है? तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है।
अच्छा। तो उनके जो यहाँ मतलब जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है वो रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ है J&K में। ओके। तो उनके पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितने की इनके पास है। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये ग्राम सभा बुलाते हैं महीने में एक बार गाँव में, इन कंसल्टेशन विद जो रूरल डेवलपमेंट इनकी नोडल एजेंसीज हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन होती है उसमें पार्टिसिपेशन होती है मिडिल क्लास लोगों की, और जो BPL लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उनकी ज़्यादा होती है। जो अपर क्लास होता है गांव में, तो वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं गांव में। तो मेरा ये सवाल है कि हम किस तरह यहाँ के पंच साहिबान जो है या सरपंच साहिबान है उनको कन्विंस करे अपर क्लास को, ताकि वो भी पार्टिसिपेशन करे और उनकी जो वैल्यूएबल सजेशन है, जो अपर क्लास होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, तो उनकी सजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो हम उनको किस तरह कन्विंस करें ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे ग्राम सभा में। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अपर क्लास होता है मैक्सिमम वो वाटर थेफ्ट ज़्यादा होती है, वो ड्रिंकिंग वाटर पानी जो होता है वो करते हैं गाड़ियाँ धोने में इस्तेमाल करते हैं, या उनके जो किचन गार्डन होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल जो वाटर सप्लाई होती है गाँव की वो इफेक्ट होती है। तो हम किस तरह उनको कन्विंस करें ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है गाँव की, तो ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे और जो उनका जो सजेशनिज्म है ओवरऑल गांव की डेवलपमेंट में उसका फायदा हो सकता है। समझाया क्वेश्चन तो समझाया ये है कि पूछ रहे कि किसी किने इन्वॉल्व किया है, ये ऑप्शन नहीं आती है, तो उसके लिए सीनियर लोग है कि नहीं आते हैं, उन्होंने किसी किने इन्वॉल्व किया और मेरा मुक्ति के पानी पूरी यूज करते हैं, बड़े बंदे हैं, उन्होंने किने रोके। मतलब इस तरह समझ लो कुछ अमीर लोग है, बाकी गरीब जनता वो समझते आ भी सानू लोड़ नहीं साडा ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सर आपका क्वेश्चन था ना, हेलो बोली बोली। सर जो आपका क्वेश्चन है ना, तो उसका ना जैसे गांव में पूरे लोग रहते हैं ना, छोटे लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, ये ना जो गांव की पंचायत होती है ना, और जो गांव पे और आवाज थोड़ी नहीं आ रही जी, क्लियरली आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जा। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, जो थोड़ा क्वेश्चन है ना, इसका मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ गांव है ना, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣੀ, पंचायत मैंबर है ना बने हुए। जी 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 हाँ जी हाँ, पंचायत मैंबर लो तुसी, ते अपना पूरे जो गांव का है, गांव में एक अपने पास गांव में चौकीदार भी होता है, उसको भी लो। जो लोग नहीं आते, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन पहले अगर जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट इसका अच्छा निकलेगा। जो लोग नहीं आते, एक बार हमको उनके घर भी जाना पड़ सकता है उनको समझाने के लिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, 24 घंटे सप्लाई गांव को देने जा रहे हैं, रास्ते में बढ़िया पानी मिलेगा। अच्छा ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀ। मनप्रीत जी अपना म्यूट कर लो तुसी काइंडली। हेलो, इसमें ऐसे भी हो सकता पॉसिबल हो जो आप बोल रहे हैं, जो अमीर लोग हैं जिनका अपना सोर्स है, आप उनका वाटर क्वालिटी टेस्ट जरूर कीजिए, उनके घर जाके चेक कीजिए, चेक करवाइए डिपार्टमेंट की ओर से भी उनका पानी क्वालिटी पैरामीटर में है कि नहीं है। ऐसे लोग पंजाब में भी हैं बहुत लोग जो चाहते थे हमारे पास अपना सोर्स है, लेकिन जब हमने उनकी क्वालिटी टेस्टिंग की तो पता चला कि उनका पानी पीने के लायक नहीं है। इस तरह हौली हौली स्लोली वो लोग इसमें शामिल होने लगे। दे नाउ दे आर पार्ट ऑफ द विलेज वाटर सप्लाई स्कीम। दे मे यूज देयर वाटर फॉर अदर सोर्स फॉर अदर पर्पसेस, but for drinking purpose we have convinced them, please use our water. Our water is safe, tested for all parameters. Then then they may join. You have to work hard to involve them, but in future, since water is important for life, everybody will follow
if you convince him, the way of convincing depends upon the local problems, local solution. सुखमिंदर जी, इफ आई मे ऐड, मलिक जी, जो आपका सवाल था उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि हाउ टू इन्वॉल्व जो स्लाइटली रिच इनहेबिटेंट्स हैं विलेज के या रूरल साइड के, उसमें इन्हीं से मैं गया था यहाँ पर इनके गांव में, तो इन्होंने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप विलेज वाटर सप्लाई कमेटी बनाते हैं, उसमें विलेज या पंचायत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग हों जो इन्फ्लुएंशियल हैं। यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पंचायत के मेंबर नहीं होते या पंचायत में सरपंच नहीं होते, लेकिन गांव वाले उनकी सुनते हैं। कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ वैसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं क्योंकि वो लोगों को सहायता करते हैं। अगर ऐसे लोग विलेज वाटर सप्लाई कमेटी में रहेंगे तो ये लोग सबको साथ लेके चल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। दैट इज वाई ये ट्रेनिंग आपको इंजीनियरिंग के बारे में नहीं दी जा रही, क्योंकि आप लोग सब ऑलरेडी उसमें आपको महारत हासिल है एज इंजीनियर्स। The idea is to make you a social engineer, कि how to interact with the village, convince them, influence them। तो आप influence कैसे कर पाएंगे कि जो उस गांव के जो आप कह लीजिए लोग हैं जिनकी बात सब सुनते हैं, जो पंजाबी में अग्गू कहने में जरा आगे लग के चलते हैं विलेज में, लोग उनकी सुनते हैं, उनकी बात को तवज्जो भी देते हैं पूरी कि वो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप एसोसिएट करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सारे जुड़ जाएंगे। They will be there as a part of the scheme. बोलो। सर, बात ये है जो आपने बात कही है वो शायद हमारे गांव में ही ये बात हमने भी कही थी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्राम पंचायत मेंबर नहीं बनना चाहते, पर उनका रसर अच्छा होता है, उनको भी हमने अपनी कमेटी में लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमने पहली बारी हमारे गांव में स्कीम शुरू हुई, सबसे पहले हमने किया जो साबका सरपंच थे वो भी उसमें ले, जो नंबरदार थे वो भी उसमें ले, जो और कोई जिस बंदिਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, which is a very good thing। अगर आप इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो गांव में जिनकी लोग बात सुनते हैं उनको साथ लेके चलेंगे तो अपने आप सब जुड़ जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी कारण यहाँ इतनी सक्सेस है ये स्कीम। 24 घंटे पानी तो आजकल शहर में नहीं मिलता है और गांव में मिल रहा है और कंटिन्यूसली मिल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर ऐसे है ना बात, ये हमारे गांव के सबसे पुराने सरपंच साहब है, मिला है जी, मिला। इनसे पहले भी सरपंच साहब थे। हमारे गांव में 5 टर्म हो गया जो सर्वसम्मति से पंचायत बनती है, इलेक्शन नहीं हुई। तो इन्होंने जैसे बताया है कि नंबरदार साहबान या गांव के अच्छे आदमी जो पंचायत बनती है उनको अधिकार दे देते हैं कि एक एक आदमी अपना अच्छा चुनो। हमारे गांव में पहले 15 मेंबरी कमेटी थी, अब 18 मेंबरी कमेटी है हमारे गांव में। जो आप कहते हैं कि पानी बड़े लोगों को मिलता है या छोटे लोगों को मिलता, हमारे गांव में पहले कुएं से पानी आता था, तो फिर हैंड पंप लगे थे। जो साहब जी ने बताया है कि पानी चेक करवाना पड़ता है, उसमें पानी आज 100 फुट से 200 फुट तक जो पानी है वो खराब हो चुका है। हमारे गांव के साथ में फोकल पॉइंट है, उनका गंदा पानी से सारा पानी खराब हो चुका है, हैंड पंप बंद हो चुके हैं। तो इसलिए हर घर में कनेक्शन लगा हुआ, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, तो उनको रिक्वेस्ट की है कि टुल्लू पंप किसी को नहीं लगेगा, जो लगेगा उसको पेनल्टी लगेगी। जब पानी ही 3 मंजिल पे आप चढ़ेगा तो उसको टुल्लू पंप या लाइट खर्च करने की क्या जरूरत है। तो आई होप मलिक साहब आपके सवाल का जवाब काफी हद तक थैंक यू। थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें टुल्लू पंप भी खत्म हो गया। रादर इन्होंने ये बताया आरओ भी नहीं है इनके गांव में, कोई भी आरओ नहीं है। आरओ इज नॉट रिक्वायर्ड इन देयर विलेजेस आल्सो। एंड टुल्लू पंप की जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो भी खत्म हो गई। उन लोगों को भी पानी सस्ता मिल सकता है, पोर्टेबल वाटर मिल सकता है।
सर गुलशन जी, सर मैं एक बात ही बोलना चाहूंगा। जब हम गांव का इजलास बुलाते हैं उसमें सभी लोग आते हैं, जो कमेटी हम चुनते हैं उसका हर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए, जो सारे ऑफिसर को मैं बताना चाहता हूँ, हर एक मेंबर के पीछे कुछ ना कुछ 10, 20, 25 घर होने चाहिए। उस मेंबर की मिनिमम उतने घर उसकी बात माने। हर एक मेंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ए नंबर ऑफ द हाउसेज, so that whole of the GPWSC represents fully the village. No member should be redundant. No member should be just for photographs. Every member should be working, influential, and positive mind. That if we form the committee, GPWSC formation of representative GPWSC is 50% progress. If this committee is formed truly representative, then half of our work is done. चलो जी, any further questions? कालिया जी, may I kindly take over? Thank you ji. Thank you. Thank you. Ouch. Thank you very much. Very nice interactive session. It has overstretched because the timing now. I think most of our participants have gained insight about how it is being operated in and maintained in the villages at village level. Now, for next session on similarly on, we are going to exhibit the another villages, how it is being taken and what is the best case studies. Now I request Mr. Shri Pradeep Gandhi, Social Development Manager with the GPWSC strengthening and from Department of Water Supply and Sanitation, and he'll be presenting his video as well as case study. Over to Mr. Gandhi. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन, सत श्री अकाल जी, सारे नमस्कार जी। तो मेरा आज का टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो आई वुड लाइक टू शेयर थ्रू माय प्रेजेंटेशन।
बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन पंजाब में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग कंसेंसस थ्रू ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है ये एक स्ट्रेंथनिंग पिलर है, और जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में 4 पिलर्स हैं, जिसमें हमारा प्री प्लानिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, इन्हीं को क्लब करके डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की पंजाब की तरफ से जो है एक स्कीम साइकिल जो है बनाया गया है। स्कीम साइकिल में जो है सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, जेंडर इंक्लूजन एक्टिविटी, एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड एक्टिविटीज को मिलाकर स्कीम साइकिल बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाता है। जिससे बात करेंगे ग्राम सभा की, तो डिफरेंट जो हमारे स्टेजेस हैं, चाहे प्री प्लानिंग हो, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में, सभी में जो है जो साइकिल के अकॉर्डिंग जो है स्कीम साइकिल के अकॉर्डिंग ग्राम सभा किए जाते हैं। ग्राम सभा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें जो है सर्वसम्मति, कंसेंसस जो है कम्युनिटी का पता लगता है, चाहे वो प्री प्लानिंग स्टेज हो, स्कीम को अडॉप्ट करने की बात हो, सोर्स को आइडेंटिफाई करने की बात हो, चाहे इसमें हमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में जो है उसको मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करने की बात हो, और या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में स्कीम को कैसे प्रॉपर वे में हमने उसकी साम संभाल और संचालन करना है। तो कम्युनिटी के साथ जब हम इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो 100% इसमें है जो हमें कामयाबी मिलती है। और कम्युनिटी पार्टी ग्राम सभा में कई बार हमें जो विलेज की प्रॉब्लम होती हैं, उनकी प्रॉब्लम को जो है हम एनालाइज करते हुए उनका सोल्यूशन भी जो है हमारे जो ग्राम सभा में लोगों के पास होता है। एक ग्लिम्पसेस हम देख रहे हैं किस तरह डिपार्टमेंट जो टेक्निकल और सोशल स्टाफ है वो कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है जो काम कर रहा है। तो ये बात करेंगे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर इज एवरीबॉडी राइट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें भी पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोवाइड करवाना स्टेट की जिम्मेवारी है। इसमें विलेज मेंबर सफाई है इज ऑप्टेड फॉर पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें हम एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में शेयर करना चाहूँगा। सेकंड, तो हम इस वीडियो में के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह हमने जो अर्लियर सेशन में इंजीनियर पंदेर सर ने जो हमें बताया दी फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कमेटी। तो इसमें हमारे जो जेंडर इंक्लूजन की हम बात करेंगे, तो हमारे पंजाब में 10 ऐसी GPWSCs हैं। वैसे तो GPWSC में 50% पार्टिसिपेशन है जो विमेंस की, महिलाओं की इंश्योर की जाती है। इस वाटर सप्लाई जो 10 हमारी GPWSC हैं वो होली पूरी जो है प्योर जो है पूरी की पूरी लेडीज की पार्टिसिपेशन से बनी है। उनमें से विलेज मेमा सवाई की जो है स्टोरी है, प्लीज इसमें सेकंड वाले में शेयर करेंगे। तो इसमें हमारे आज ट्रेनिंग जो हो रही है, इसमें हमारे जो ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर अर्शी साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बठिंडा डिवीजन नंबर 1 की, उनकी जो है इनिशिएटिव से ये हमारी GPWSC है जो वो बेस्ट परफॉर्मिंग GPWSC है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। और मैं बाकी भी जब तक हम ये शेयर होती है, मैं बाकी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहबान से ये रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी ज्यूरिडिक्शन में जो उनका सोशल स्टाफ है उनको मोटिवेट करें और गाइड करें, ताकि ये इस तरह के इनिशिएटिव जो बन के हमारे पास आए। और इसको देखने के बाद मानजो HOD साहब और मानजो सेक्रेटरी मैडम से ये जो है उनकी राही जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये शेयर की जाती है। ये जो डॉक्यूमेंट्री है हमारी ये शेयर की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महत्व जिद्दां गुरबाणी च कहा गया है पानी की सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल करनी चाहिए है, पर ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 25 30 ਘੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 24/7 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ GPWSC ਮੈਂਬਰਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮਸਟ ਨੀਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਵਾਸ਼ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 110 ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੀਨਾ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਭਰਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਠੀਕ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। तो हमने इस डॉक्यूमेंट्री में देखा कैसे में से कुलविंदर कौर बराड़ जो चेयरपर्सन GPWSC मਹਿਮਾ भगवाना ने अपनी जो पूरी होल जो कमेटी है वो सभी महिलाओं के साथ पूरे सारे के सारे जो वीमेन मेंबर के साथ जो है उन्होंने GPWSC फॉर्मेशन की
और उसको कंटिन्यूसली प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बना के और पूरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको बढ़िया तरीके से चला रही हैं। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्शी साहब और उनकी जो पूरी टीम है, कैसे डिपार्टमेंट ने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किया और दोनों की तरफ से मिलके वाटर कंजर्वेशन और सफिशिएंट जो वाटर एडिक्वेट वाटर सप्लाई है वो पूरे गांव में जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। और GPWSC है जो फाइनेंशियल सस्टेन है और पूरे जो है एक्टिवली जो है वीमेन की पार्टिसिपेशन से ये स्कीम चल रही है। सो इसमें एक और जो है रिमार्केबल है, पूरे पंजाब में ऐसे 10 GPW वीमेन 100% वीमेन GPWSC हैं जो अपने अपने विलेजेस की जो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का काम को बढ़िया ही जो इफेक्टिव मैनर में कर रही है। सो आगे next one. जी जी यही। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम स्लाइड में देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर के ब्लॉक तरसीका के पिंड मल्लू नंगल की है, जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर जो है GPWSC की तरफ से श्लाघायोग तरीके से मुहैया करवाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विलेज जो है रख तिनेवाल ब्लॉक खडूर साहब डिस्ट्रिक्ट तरन तारण की, जो 24/7 अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई और 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैब से यहाँ पे JJM का काम बहुत अच्छे से जो है डिपार्टमेंट की तरफ से करवाया गया और 100% इसमें टैरिफ कलेक्शन और विलेज जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल सस्टेनेबल मैनर से चल रहा है और 24/7 जो है गांव में सप्लाई करवाई जा रही है। और डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है एक तीयों का त्यौहार जो वीमेन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट्स और सभी डिवीजन में पंजाब में सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। इसका उद्देश्य वीमेंस की जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, ताकि हम यहाँ पे जितने भी गांव जो है अपने कामयाब तरीके से चला रहे हैं, हम नॉर्मली जो हमारा कहा जाता है किसी भी गांव किसी भी संस्था किसी भी जथेबंदी या सरकार और डिपार्टमेंट में जब हम औरतों की पूरी पार्टिसिपेशन करेंगे और एम्पावरमेंट करेंगे, वो संस्था सरकार जथेबंदी हमेशा ही कामयाबी की तरफ जो है अग्रसर होगा। और यही कारण है पंजाब में जो जितने भी जो डिसेंट्रलाइज है जो स्वैप मोड सेक्टर वाइड अप्रोच के अंदर जो जितने भी GPWSC जो है इसका O&M का काम कर रही हैं, उसमें औरतों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, जिसके कारण ही जो स्कीम्स हैं वो फाइनेंशियल टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल जो है कामयाब है। तो हमारी GPWSC में गवर्नमेंट की तरफ से 50% जो है पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाती है। इसमें हम डिफरेंट जो मेजर इवेंट्स और एक्टिविटी करवा के लेडीज की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए जो है इनिशिएटिव करते हैं। जो नेक्स्ट हम गांव की बात करते हैं, विलेज जातीवाल डिस्ट्रिक्ट पटियाला का गांव है। यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट सीवेज सिस्टम GPWSC चला रही है और वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से और फाइनेंशियल सस्टेनेबल मैनर में चला रही है। और ये ब्लॉक नाभा और डिस्ट्रिक्ट पटियाला का गाँव है। अगला गांव बात करेंगे खेड़ा थानेवाल, जो कि ब्लॉक रैया डिस्ट्रिक्ट अमृतसर का गांव है। इस गांव में भी 100% कनेक्शन है और इसमें जो है GPWSC बहुत ही एफिशिएंट मैनर में काम कर रही है और यहाँ पे डाउन टू डस्क जो है अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई दी जा रही है। आगे गांव की बात करेंगे फतेहगढ़ नियारा, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर का जो है गाँव है। ये पायलट प्रोजेक्ट फर्स्ट में ये 2009 में कमीशन हुआ था, तब से लेके कंटिन्यूसली GPWSC इसको बड़े ही अच्छे तरीके से 100% इसमें अब जो है कनेक्शन कर दिए गए हैं और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ऑनर किया गया है इस गांव को, और GPWSC इसको फाइनेंशियल सस्टेनेबल मैनर में जो है चला रही है। डिस्ट्रिक्ट फाजिलका का ये गाँव GPWSC चक सोना संदल ब्लॉक जलालाबाद का गाँव है, जिसको GPWSC बहुत ही जो है प्रभावशाली तरीके से चला रही है। इस गाँव में डाउन टू डस्क सुबह से लेकर शाम तक जो है अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई करवाई दी जा रही है और GPWSC की तरफ से 100% यूजर कॉस्ट रिकवरी करते हुए इसमें
जो है सरप्लस O&M बैलेंस है। इसके बाद बात करेंगे नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन की। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की तरफ से रूरल डेवलपमेंट और पंचायत के साथ DRDP के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन करते हुए ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PRI और लाइन डिपार्टमेंट के जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक दूसरे की डिपार्टमेंट की नीतियों के बारे में बताने के लिए ये प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पे किए जाते हैं। और डिपार्टमेंट की तरफ से सोशल इंजीनियर की जो स्पेशली ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो अपने डिपार्टमेंट का और बाकी सारे लाइन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, और ताकि प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन से सारे डिपार्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जल जीवन मिशन, PRWSSIP, 15 फाइनेंस कमीशन की पूरी जो है अच्छे तरीके से उसको जो है इसका इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो पीपल प्लान जो कैंपेन है PPP 2021 जो कि 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 तक जो चलाई जा रही है, जिसके तहत हर गांव में ग्राम सभा के इजलास किए जा रहे हैं। इसमें भी इसी जो है इसी मैनर में सभी डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसीज और प्रोजेक्ट के बारे में जो है बताते हैं, और 15 फाइनेंस कमीशन, PRWSSIP और JJM के बारे में उनको गाइड करते हैं ताकि जो जितने भी जो ऑब्जेक्टिव हैं JJM के वो प्रॉपर तरीके से उन गाँव में जो है हमारे अच्छे तरीके से वो चले। इसके बाद सीइंग इज बिलीइंग, जो हम अपने आंखों से देखते हैं किसी ये ग्लिम्पसेस में एक्सपोजर टूर करवाया जा रहा है जो मल्टी सरफेस वाटर की 85 विलेजेस का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मल्टी विलेज का मोगा में कमीशन हुआ है इस साल। तो वहाँ पे जो ऑनगोइंग हमारे प्रोजेक्ट हैं फतेहगढ़ साहब और डिस्ट्रिक्ट पटियाला के और फतेहगढ़ साहब के 3 जो प्रोजेक्ट पबरा, मंडोली और नानोवाल में 500 के तकरीबन जो हमारे विलेजेस और के पंची सरपंचीज और GPWSC मेंबर हैं उनको मोगा में जो हमारी स्कीम कमीशन हो गई है सरफेस वाटर की, वहाँ पे ले जाके उनको उस प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट की प्रोसीजर, उनकी बनतर कार्य प्रणाली और इसके साथ GPWSC से इंटरेक्ट करवाया जा रहा है ताकि उन्होंने किस तरीके से प्री प्लानिंग से लेके पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन तक अपने गाँव को और इस प्रोजेक्ट को करने में उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए और क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने इनको मिटिगेट किया। इस तरह सीइंग इज बिलीविंग से एक्सपोजर टूर जब वो करते हैं तो उनमें एक नई भावना पैदा होती है भी हम भी अपने प्रोजेक्ट को ऐसे कामयाब तरीके से चलाएंगे। इस तरह डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और पिंड जो शहजादपुर है डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का, उसमें 10 आवर विद सस्टेनेबल मैनर से इस गांव के पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है अपने O&M बैलेंस है। वहाँ का जो मतलब GPWSC को सोशल और टेक्निकल स्टाफ की ओर से स्ट्रेंथन किया गया ताकि वो अपने गांव की जो है लोगों को अच्छे तरीके से जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सके। गांव आगे बात करेंगे विलेज बैंस की, जो ब्लॉक बंगा का और डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर का गांव है। इस विलेज की कमेटी के खाते में जो है 5 लाख रुपए से अधिक की बचत जो है उनके सरप्लस अमाउंट पड़ी है, और उसकी जो पूरी औरतों की एक्टिव पार्टिसिपेशन और GPWSC की पूरी अच्छे तरीके से जो है उनको मैनेज किया जा रहा है। आगे बात करेंगे हम विलेज सुधार की, जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का गांव है। इस गांव के पास 5 लाख रुपए से ज़्यादा जो है O&M सरप्लस फंड पड़ा है, और जो विलेज की GPWSC है वो डाउन टू डस्क सुबह से शाम तक जो है अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई लोगों को प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, अर्लियर इंजीनियर स्पंदेर सर ने अपने लेक्चर में और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस शेयरिंग में बताई, जब हम 24/10 आवर्स की सप्लाई करते हैं तो हमारा जो वाटर की जो वेस्टेज में कमी आती है, पॉन्ड्स का जो लेवल घटता है और लोगों को जो है अपना स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती और लेडीज का प्रीशियस टाइम बचता है, जिससे अल्टीमेटली गांव के लाइफस्टाइल में जो अपग्रेडेशन होता है। आगे बात करेंगे पक्का खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा का गांव। इस विलेज के पास 4 लाख रुपए से अधिक की जो है सरप्लस अमाउंट है, और इस गांव की तरफ से जो है एनुअल O&M प्लान बनाया जाता है कि कितनी हमारी इनकम होगी और कितने आने वाले साल में एक्सपेंडिचर होंगे। उसके अकॉर्डिंग ये यूजर चार्जेस जो लोगों से लिए जाते हैं, और प्रॉपर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से GPWSC अपना काम कर रही है।
तो इसके बाद हम काम करेंगे दुगाट डिस्ट्रिक्ट पटियाला का 24/7 से जो मैनर से 24 घंटे 7 दिन जो है ये जो गांव अपने विलेजर्स को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवा रहा है और मोर देन 80,000 रुपीज इनके जो अकाउंट में पड़े हैं। डिस्ट्रिक्ट बंगा का खाना विलेज है जो कि जीपीडब्ल्यूएससी बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर से जो काम चला रही है और इस विलेज के 24/7 वाटर सप्लाई के साथ साथ 1 लाख रुपया इनके सरप्लस जो है अकाउंट में है। इस गांव जब नया कमीशन हुआ था तो इस गांव के प्रीवियस जो एरियर था वो 3 लाख रुपए का एरियर था पेंडिंग। तो इसकी अच्छे काम की जीपीडब्ल्यूएससी की तरफ से वो एरियर को कवर करते हुए 1 लाख रुपया सरप्लस फंड जो चलाया है। इसके बाद बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ के ब्लॉक अनंतपुर के सुखसाल गांव की जीपीडब्ल्यूएससी के पास जो है डाउन टू डस्ट वाटर सप्लाई अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई के साथ दी जा रही है और गांव के पास जो है 2 लाख से अबव जो है उनके पास पैसे पड़े हैं। पिंड मानो जो कि जलंधर डिस्ट्रिक्ट के आदमपुर ब्लॉक का जहाँ पे भी पूरी 100% जीपीडब्ल्यूएससी जो है वीमेन कमेटी है और ये बहुत ही एफिशिएंट मैनर में जो श्लाघायोग तरीके से गांव को चला रही है। इसके बाद फतेहगढ़ साहब के बरवाली कला की बात करेंगे। इस गांव के पास जो है 3,76,000 रुपीज की जो सेविंग है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है और इन्होंने एक अपना जो है लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी की हुई है, अच्छा गार्डन है। सिंपली विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर और ब्लॉक गढ़शंकर का विलेज है और इस गांव के पास अपना 3 लाख रुपए के ऊपर और लैंडस्केपिंग जो है अच्छी की है। इस तरह श्री मुक्तसर साहब का विलेज है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो सिनेरियो की पंजाब में टोटल विलेजेस जो हैं 13,325 विलेजेस हैं और इसमें जो ग्राम पंचायतें हैं 13,262 जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं और जीपीडब्ल्यूएससी हैं जो ग्राम पंचायत वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी और 11,684 विलेजेस में जीपीडब्ल्यूएससी की फॉर्मेशन की जा चुकी है और टोटल वाटर सप्लाई स्कीम है जो पंजाब में वो 8327 8327 जो है स्कीमें, इसमें जो हैंडेड ओवर टू जीपीडब्ल्यूएससी है 5665 मोर देन 600 से ज़्यादा जो स्कीम्स हैं वो 50 जीपीडब्ल्यूएससी को हैंडेड ओवर की जा चुकी है जिनका O&M है जो प्रॉपर तरीके से जीपीडब्ल्यूएससी की तरफ से किया जा रहा है और इसमें जो 100% कॉस्ट रिकवरी कर रही है वो 3,785 जीपीडब्ल्यूएससी है जो इसकी जो लागत है कॉस्ट रिकवरी को कवर करते हुए इनके पास जो 10,000 रुपये से लेके 17 लाख रुपए तक इनके पास सरप्लस O&M बैलेंस पड़ा है। और इसके अलावा जो है 24/7 जो हमारे पंजाब में 304 गांव ऐसे हैं जो अपने गांव वासियों को सस्टेनेबल मैनर से जो है जो 24/7 जो है अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं और मोर देन 3913 गांव में हमारे मोर देन 10 आवर सप्लाई और सुबह से शाम तक जो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है प्रोवाइड की जा रही है। इसका जो अल्टीमेट हमारे डिपार्टमेंट जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्निकल, सोशल, एनवायरनमेंट, सोशल सेफगार्ड स्पेशलिस्ट और जो जेंडर सभी तरह की एक्टिविटी ऑफिसर और ऑफिशियल काम कर रहे हैं और सबको साथ मिलके उनको क्लब करके एक्टिविटीज को स्कीम साइकिल जो है स्कीम साइकिल के अकॉर्डिंग ही जीपीडब्ल्यूएससी को और जीपी को कैपेसिटेट और सेंसिटाइज किया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और डिफरेंट जो प्रोग्राम करवा के उसको कंटिन्यूसली गाइड किया जाता है। सो ये हमारा जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पंजाब में। थैंक यू एवरीवन। हाँ, कोई पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन हो तो डिस्कस करेंगे। Any query or question from participant? So thank you everyone. Thank you so much. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਧੁੰਨੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀਡਬਲਿਊਐਸਸੀ ਜੀ
ग्रेट, बहुत ही बढ़िया ਤੇ एक्शन ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਧੁੰਨੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਗਵਾ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मैं और अर्शी साहब ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਊਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ अर्शी ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ 100% ਵਿਮਨ GPWSC ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ और GPWSC ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ GPWSC ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much, Deepji, for elaborating on best practices being adopted in Punjab. मेरे ख्याल है सभी अपने participants must be pleased to know that so many of schemes are successfully being run in different villages under GPWSC, and the involvement of women is in forefront. And with that, I just thank you, Deepji. Now, our next session, if I just find Mr. DS Bolaji, sir, are you? Bola sir, are you there? We are going to have a next session from Good afternoon. So, I just welcome Shri DS Bolaji. He'll be delivering on ensuring service delivery through effective long-term O&M. The Pola sir, in case you have connected now, then. Yeah, I'm connected. Okay, sir. वो So, sir, मेरा PPT उसमें आप अपलोड कर दें. we run the PPT, sir. We just share it. Okay. I just request all the participants to be available. Yes, sir. They can discuss with me. They can PPT upload कर देंगे आपने? Yes, we have done it, sir. Yeah. Great. Good afternoon to all. मेरे ख्याल से आपका पिछले कल का और आज सवेरे तक के सेशन बड़े अच्छे रहे होंगे और आई होप कि जल जीवन मिशन का जो को आपने इंटरनलाइज अब कर लिया होगा. कल काफी अच्छे डिस्कशंस भी हुए थे, तो मुझे इंस्टीट्यूट ने ये मौका दिया है कि मैं आपसे बात करूं डिजाइनिंग एप्रोप्रिएट स्कीम फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन मेंटेनेंस हर घर जल. जैसा कि सभी को मालूम है कि हम हर घर में पानी कनेक्शन लगाना तो ठीक है, वो तो पैसे का इश्यू है और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या किसी के भी थ्रू आप उस कनेक्शन को लगा सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन नलों में पानी भी आना बहुत जरूरी है,
तभी उसका नाम फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन रखा है। पानी 55 LPCD और प्रिस्क्राइब क्वालिटी का भी, जो हमारे मोस्टली हम 13 पैरामीटर्स को उसमें बात करते हैं, उन पैरामीटर्स में वो पानी होना चाहिए। तभी हम असल में जो है जल जीवन मिशन तभी सक्सेसफुल है। जल जीवन मिशन का मैं दोबारा फिर इसको कह रहा हूँ कि कहीं भी ये मतलब नहीं कि खाली नल दे देना ही जल जीवन मिशन का मकसद नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे कि हम हर घर जल की बात कर रहे हैं और फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस की बात करते हैं, तो इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था कल की जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियर हैं वो कैसे चेंज मैनेजमेंट करें, कि वो पहले इंजीनियर थे, कॉन्ट्रैक्ट देखते थे केवल या डीपीआर बनाते थे, तो अब उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियर बनना है और सोशल इंजीनियर बनना है। तो आपको जब आप विलेजेस में जाते हैं या उनसे बात करते हैं तो ये कंसेप्ट भी समझना चाहिए कि उनको समझाएं कैसे। तो यहाँ पर ये दो आप फिगर देख रहे हैं, दो चित्र देख रहे हैं, तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टैंड पोस्ट पहले था, स्टैंड पोस्ट में देखिए बहुत भीड़ लगी है, पानी की लाइन लगी है, कनस डब्बे लाइन पे हैं और महिलाएं इंतजार कर रही हैं, धूप है, बारिश है, ठीक है। लेकिन स्टैंड पोस्ट से जब हम हाउस होल्ड कनेक्शन की ओर जाते हैं तो हर घर के अंदर एक नल, ये लेडी यहाँ पर दूसरी राइट साइड में एक लेडी है, उसका पर्सनल नल है, पर्सनल उसका एक नल है और उससे वो जब चाहे पानी भर सकती है जब भी आता है, और केवल उसी को ही उससे पानी भरने की उसी को भरना, और कोई नहीं भरेगा, वही भरेगी उसमें, क्योंकि वो उसका पेमेंट भी कर रही है, उसके यूजर चार्जेस भी देने की बात है, कंट्रीब्यूशन उसने दिया है, तो अपना साफ पेयजल वो उसमें प्रॉपर प्रेशर में वो पानी ले रही है। तो इसके फायदे नुकसान हमको समझने चाहिए कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। इधर राइट साइड में जो सिंगल है उसमें देखिए डिस्टेंस कम हो गया उसके घर से आने का, और उसको सफिशिएंट मात्रा में सफिशिएंट एक गुड क्वालिटी का पानी मिल रहा है, और उसको भीड़ भाड़ भी नहीं है तो उसमें समय कम लग रहा है, ठीक है। इन सब का प्रयोग वो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में अपने परिवार के उस समय का प्रयोग या उस पैसे का प्रयोग जो है अपने परिवार के बेटरमेंट के लिए कर सकती है। तो लाइफस्टाइल चेंज यहाँ पर होगा। तो जल जीवन मिशन को हम ये कहें तो ये लाइफस्टाइल चेंज भी कर रहा है लोगों का। और अभी तक तो हम जब शुरुआत में कहते थे लाइफस्टाइल चेंज करेगा, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं, 8.5 करोड़ जो है लोगों को पानी के नल दे दिए गए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अब ये लाइफस्टाइल परिवर्तन भी कर रहा है। बहुत सारे विजिट्स पे ये देखा गया, आप भी फील्ड पे जाते हैं तो लोगों के चेहरे पे खुशी, हैप्पीनेस आ रही है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर इस पूरे जो स्लाइड्स हैं इसमें मैं ये आपको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या होगी, क्या क्या कंपोनेंट होंगे, वो भी इसमें लिखे हैं, लेकिन उसका पर्पज ये नहीं है। उसका पर्पज है कि हम कैसे ऐसी एक स्कीम बनाएं जो सस्ती हो, जिसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी सस्ता हो और जो लंबे समय तक चल सके। तो उस तरह की स्कीम बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, वो सब इसमें डिस्कशन है। ये उन बातों को आप ध्यान में रखते हैं, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जिनको आप जोड़ सकते हो, और मैंने ये कुछ जो है पॉइंट्स मैंने अपने अनुभव के आधार पे इनको वो किया है। तो बेसिक पर्पज ये है, आपको टेक्नोलॉजी बताना मेरा पर्पज नहीं, बल्कि ये है कि किन चीजों का आप ध्यान रखें कि लोग बाग उसको लॉन्ग टर्म कैसे होगा, यदि वो सस्ता होगा और लंबे उसका कंट्रीब्यूशन लोगों की देने की लिमिट में होगा। अब आपने ऐसी स्कीम बनाई कि उसका कंट्रीब्यूशन देना लोगों के लिए मुश्किल है तो स्कीम फेल हो जाएगी। तो इसीलिए, और ऑपरेशन मेंटेनेंस कम है, छोटा मोटा है ऑपरेशन, तो इजीली आसानी से वो हो जाएगा। तो सस्टेनेबल वाटर सोर्स हो और उसमें सफिशिएंट वाटर हो तभी वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर सोर्स हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का, तो सेफ वाटर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऑल एग्रीड सोर्स होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी गांव में बहुत सारे के स्रोत होते हैं और सभी स्रोतों में सभी लोग एग्री नहीं करते। कोई कहता है कि ये गंदा है, कोई कहता है कि अलग अलग तरह के विचार लोगों के होते हैं। तो ऑल एग्रीड सोर्स होना चाहिए। ओनरशिप ऑन द प्रोजेक्ट, लोग जो है ये महसूस करें कि ये परियोजना हमारी है। उसके लिए आप उनको बताओगे
कि भाई ये परियोजना आपकी क्यों है। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि जब आप गांव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये मत पूछिए उनसे कि हम वाटर टैंक कहाँ बनाए, ठीक है। आप ये पूछिए कि आपने वाटर उस हमारी स्कीम के लिए पानी का रिजर्वायर कहाँ पर उसके लिए जमीन सोची है, कहाँ पर बनाना है, बनाएंगे आप उसको, कहाँ पर कौन सी जगह दे रहे हो। तो ये कहने का टोन, कहने का स्टाइल आप जब चेंज करेंगे तो उनको ओनरशिप महसूस होगी। जब आपके जाने के बाद वो इस बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जब आप कहोगे कि हमको पानी का टैंक बनाना है, जमीन दीजिए, तो कहेंगे कंपनसेशन दो। तो ये एक स्लाइड चेंज है, लेकिन इससे बहुत सारा परिवर्तन पॉसिबल है। कैपेसिटी टू पे होनी चाहिए, वो लोग ऐसे होने चाहिए कि उनकी कैपेसिटी पे हो। उसके लिए जरूरी है कि आपकी लो कॉस्ट O&M की और लो कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट की स्कीम आप बनाएं। सर्विस डिलीवरी, रेगुलरिटी ऑफ सेफ सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ वाटर, ये होना चाहिए। मैं यदि रेगुलर वाटर सप्लाई आप नहीं दे पा रहे हैं, सेफ नहीं दे पा रहे हैं, तो तब भी आपके पास ऑपरेशन मेंटेनेंस के इश्यूज आएंगे और लॉन्गेविटी नहीं रहेगी। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनते ही टूटना शुरू हो गया। मैं बहुत जगह गांव में देखता हूँ कि जो पानी सब तो बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन लास्ट में जो पानी का नल है, जैसे आपने इसे पिछले उसमें फोटोग्राफ में देखा कि महिला के पास नल तो है अब, लेकिन वो नल खाली एक पाइप खड़ा कर दिया गया। उसको थोड़ा सा प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाना बहुत जरूरी है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, लुकिंग फॉर द बेटर लाइफ, लोगों में इच्छा हो कि हम एक अच्छी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, उसके लिए आपको उनके मन में एक अच्छे बनने का भाव जगाना पड़ेगा, जो सभी के मन में होता है। रिडक्शन ऑफ द, उनको बताना पड़ेगा कि देखिए महिलाओं की जो ट्रेजरी है वो कम होगी। पानी भरने की जो समस्या है, उनको धूप में जाना पड़ता है, बरसात में जाना पड़ता है, लंबे उस पर राजस्थान में तो 10-20 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है, 5-5 किलोमीटर लंबा उनको जाना पड़ता है, सर में बहुत सारे बर्तन रख के लाने पड़ते हैं, ठीक है। और ये इससे आपको बचाव आप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो अपना टाइम अच्छा समय बिता सके। रिडक्शन इन द मेडिकल बिल्स, पानी अच्छा सफिशिएंट पानी होगा, घर के अंदर होगा तो और वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो उनको बीमारी नहीं हुई तो मेडिकल बिल कम होंगे या नहीं होंगे। और मेडिकल बिल नहीं होगा तो ऑब्वियस है वो पैसा वो कहीं पे उसको बेटर काम के लिए यूज कर सकते हैं। झारखंड में एक विजिट के दौरान, कोविड के टाइम पे विजिट कर रहे थे, तब मैं एक महिला से पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस कोविड के टाइम पे उन्होंने करीब 26,000 रुपये का सेविंग किया। तो मैंने कैसे किया, तो कहले वहाँ पे प्रधानमंत्री पानी योजना के अंतर्गत उनके 4-5 घरों के बीच में एक वाटर टैंक था, और उसका जो है पानी वहीं पर से उनको कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन दिया था, जो उनके घर के अंदर आता। वो साफ पानी था, वो एश्योर्ड पानी था कि वो साफ है। तो कह रहे इस बीच में हमको कोई बीमारी नहीं, और हमने वो पैसा जो हमारा और टाइम पर लगता था वो नहीं लगा। तो इस तरह की बातें भी देखी गई हैं। इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन उसकी इंप्रूव होगी। ऑल एग्रीड पॉजिटिव थिंकिंग, लीडरशिप भी वहां पर गांव में डेवलप होगी। अच्छा गांव होगा, अच्छा लीडरशिप होगी, तो अवश्य जो है गांव का विकास होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे जॉट डाउन किए हैं, इनको आप देखिएगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें अपने तरीके से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका फील्ड पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट साइकिल। अब प्रोजेक्ट साइकिल हमारे 4 स्टेज का प्रोजेक्ट साइकिल है। पहला फेज प्री प्लानिंग फेज, पहले हम एक बोल सकते हैं, वो इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन उसको हम प्री तैयारी करना, भाई कैसे हम करेंगे। प्लानिंग फेज में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ द विलेज एक्शन प्लान बनना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, DPR बनेगी, प्रिपरेशन फॉर टेंडरिंग एंड ऑल आप इसमें करोगे, और कम्युनिटी मोबिलाइज करोगे। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होना है, और उस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के दौरान ऑब्वियस है आप सीधे गांव के लोग इस परियोजना में कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन उस परियोजना में जो लोग काम करते हैं वो गांव के हो सकते हैं। एज ए लेबर वो यूज कर वहां पर काम, एज ए कोई सप्लायर वहां पर उसमें काम कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होगा उससे। और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि गांव के लोग अपनी योजना को समझ रहे हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं, तो उनकी समझ में आ रहा है कहाँ पर वॉल्व लगा है, कहाँ पर बैंड लगे हैं, कहाँ पर क्या है, तो ऑपरेशन मेंटेनेंस के टाइम में मदद होगी। यहीं पर ही आप जो गांव का जो पॉसिबल प्लम्बर
की टीम है या 1-2 लोग या फिटर जो हैं उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो उसमें, जिससे वो अपने यहाँ पर पेड वर्क भी करेंगे और उनको सारी कुछ जानकारी परियोजना की मालूम भी। तो ये ध्यान देने की बात है। मॉनिटरिंग भी करते हैं, गांव के लोग ये भी देखते हैं कि काम अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, उसका फीडबैक आपको देंगे। पोस्ट इम्प्लीमेंट फेज में बेसिकली ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा और पूरे प्रोजेक्ट की फंक्शनिंग अच्छा फंक्शन होगा और हमको अल्टीमेटली है उसकी फंक्शनिंग एज ए यूटिलिटी की तरह देखनी है। हमको समझाना पड़ेगा गांव को कि सर्विस लेवल बढ़िया करिए तो आपको लोग पैसे देंगे और आप यूटिलिटी एज ए यूटिलिटी इसको कर पाए, चला पाए। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टेप ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, क्या क्या स्टेप्स हैं? देखिए स्टेप्स मोस्टली आप जानते हैं, फिर भी यहाँ पर मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। कंसल्टेशन करना है, ये बहुत जरूरी बात है, इसीलिए बार बार इसको हम कह रहे हैं कि कंसल्टेशन लोगों के साथ करना है, उनके साथ बैठना है, बातचीत करनी है, मोबिलाइज करना है, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी पूरा इंश्योर करना है। उसके बाद आप एक प्री फिजिबिलिटी बनाएंगे जिसमें आप गांव में कम से कम 3 वाटर जो सोर्स हैं, 3 टेक्नोलॉजी की बात आप करेंगे। तो यहाँ पर एक यदि गाइडलाइन देखें तो उसमें 3 प्रेजेंटेशन ऑफ 3 ऑप्शंस की बात, टेक्निकल ऑप्शंस की बात होती है। सपोज कोई पहाड़ी गांव है, उसमें एक स्प्रिंग है, एक उसमें जो है लिफ्ट स्कीम बन सकती है। तो लिफ्ट 3 ऑप्शन क्या हो सकते हैं? तो स्प्रिंग से पानी ग्रेविटी से लेके आ रहे हैं, एक ऑप्शन हो सकता है। उसका पूरा प्रोफिजिबिलिटी, कितना कैपिटल है, कितना उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट है। और दूसरा मान लीजिए कोई एक ऐसा स्रोत है जो गांव ऊपर है और पानी का स्रोत नीचे है, तो वहां से लिफ्ट करने की बात है। एक लिफ्टिंग हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल पंप आप उसमें लगाएं, बिजली के थ्रू वहां पर पंप कर रहे हैं, तो उसका एक कॉस्ट और ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। तीसरा ये हो सकता है कि उसी को आप सोलर के थ्रू सोलर पावर पंपिंग सिस्टम आप लगा रहे हैं, सोलर से उस पंपिंग सिस्टम को सोलर से आप पावर कर रहे हैं, तो उसका एक कॉस्ट होगा। तो ये 3 ऑप्शन आपने वहां पर लोगों के सामने आप प्रेजेंट करेंगे, तो लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। एक तो उनके घर के अंदर सफिशिएंट पानी मिल सके, पहला, वो पानी की क्वालिटी अच्छी हो, यदि क्वालिटी में कहीं खराबी है तो आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, और उसका कैपिटल कॉस्ट कम हो, जिससे वो 10% जो उनको देना है वो कम हो, और ऑपरेशन मेंटेनेंस कम हो जिसको वो आसानी से पे कर सकें। तो ये 3 ऑप्शन आप उनको देंगे। फिर आप ये गांव वाले डिसाइड करेंगे, एग्री टू डू मीटिंग इसको बोलते हैं, कि कौन सा ऑप्शन उनको प्रेफरेंस है। कल बात भी हो रही थी कि क्या गांव में 2 ऑप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। 3 अलग अलग एरिया हैं तो उनको 3 अलग अलग वाटर सोर्स से पानी दिया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसमें ध्यान रखना कि फर्स्ट आप जनरली एक देखें कि जो ग्रेविटी सिस्टम है वो सबसे कम कॉस्ट का होता है, सबसे कम उसका मेंटेनेंस होता है। और यदि पहाड़ों में तो ग्रेविटी सिस्टम है तो आपको 24/7 भी वाटर सप्लाई आप उनको दे सकते हैं, बशर्ते कि उनको आप इतना मोबिलाइज कर दें और इतना उनका ज्ञान बढ़ा दें कि पानी की बर्बादी भी ना हो और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो सके। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एग्री टू डू मीटिंग करेंगे, तो एग्री टू डू मीटिंग में कम से कम 80% ऑफ गांव के लोग होने चाहिए, 80% लोग गांव के होने चाहिए, और उनके बीच में उसमें हर वर्ग और हर समाज का हर वर्ग, हर एरिया के लोग, गांव के एरिया के लोग होने चाहिए, छोटा बड़ा गरीब सेठ सब उसमें होने चाहिए। और वो सब मिलके आपकी जो प्री फिजिबिलिटी है 3 ऑप्शन को फाइनलाइज करेंगे, उसमें से कोई 1 या 2 ऑप्शन, और फिर उसको वो पूरे सब लोग उसमें साइन करेंगे। तो ये एग्री टू डू मीटिंग होगी। इसके बाद आप जो है उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे और डीपीआर प्रिपरेशन करेंगे, और डीपीआर प्रिपरेशन करने के बाद आप उसको फिर एक बार जो है गांव के सामने लेके आएंगे। जैसे कि कल हम लोग वहाँ जम्मू में विजिट कर रहे थे, तो वहाँ मालूम पड़ा कि बहुत सारी ऐसी डीपीआर हैं जो बना दी गई हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में वो डीपीआर बनी, ऑफिस में वो डीपीआर बना दी, इंजीनियर ने अपने लोगों से डिस्कस नहीं किया। तो कल मैं एक जम्मू के सज्जन थे, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो डीपीआर उन्होंने दोबारा सबके साथ, अभी गांव वालों के साथ डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें चेंज आता है। हम भी गए थे वहां पर, तो हमने देखा कि जब डिस्कस किया तो लोगों का व्यू बिल्कुल डिफरेंट है।
वो दूसरे तरीके से चाहते थे, और उस डीपीआर की कॉस्ट भी कम हो गई। एक जगह पे तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपया, श्रीनगर में 2-3 करोड़ रुपये की कॉस्ट कम होगी उसकी। तो ये सब बातें जब आप कम्युनिटी को लेके चलते हैं तो इसीलिए ये ऑपरेशन मेंटेनेंस को कम करने के सारे ये तरीके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको डिजाइन करेंगे, प्रिक्योरमेंट प्रॉपर डिजाइन करिए, ओवर डिजाइन मत करिए उसको, ठीक है, या अंडर डिजाइन ओवर डिजाइन नहीं करिए, प्रॉपर डिजाइन करिए, ऑप्टिमाइज डिजाइन होना चाहिए कि और उसका जो लेआउट है प्रॉपर लेआउट होना चाहिए। एक्सपोज पाइप नहीं हो, पाइप जमीन के अंदर ही हो, 3 फीट नीचे कम से कम पाइप होनी चाहिए, जिससे वो लंबे समय तक चलने की उसकी संभावना है। कोशिश करें कि एसडीपी पाइप यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी अच्छी रहती है, लॉन्गेबिलिटी है। आपने खुद भी देखा है बहुत जगह एसडीपी पाइप को यूज करने, जीआई पाइप भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मटेरियल हो वो तो आपके हिसाब से उसमें चलेगा। और उसका टाइमली प्रिक्योरमेंट होना बहुत जरूरी है। श्रीनगर में, लेह में हमने देखा कि बहुत सारे बड़े लोगों में जोश है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वर्किंग ईयर्स मंथ्स वहाँ के 6 महीने ही होते हैं, उसमें उनको सब कुछ करना है, रिक्वायरमेंट भी करना है और वहाँ पर उसको स्कीम को बनाना भी है, वही वर्किंग टाइम भी होता है। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा लिंक करके आपको चलना पड़ेगा कि कब आपको डिज़ाइन करना है, कब आपको उसका एस्टिमेशन करना है, फिर डिज़ाइन करना है, फिर उसको प्रिक्योरमेंट करना है, टाइमली टेंडर हो जाए और सही मात्रा में लोग मिलें। अब वहाँ पे कुछ जगहों पे ये भी समस्या आ रही थी कि बाहर से बुलाए गए जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे थे, उनके बहुत सारे रीजन ऐसे रहे कि जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर लोकल लोगों को ही वो कॉन्ट्रैक्ट देने की बात है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उनको जॉब देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही होना भी चाहिए। लेकिन डीपीआर हम ऐसी बना दे रहे हैं कि वो लोकल लोग उस डीपीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो 5 करोड़ की डीपीआर में काम कर सकेंगे। 5 करोड़ की डीपीआर होगी, यदि हम 50% मटेरियल कॉस्ट माने तो समझिए कि 2-2.5 करोड़ रुपए का, तो इतना रुपया कैपिटल कॉस्ट होना और फिर उसको एक साथ लगा देना, क्योंकि टाइम कम है, वर्किंग आवर्स, वर्किंग मंथ्स कम है, सारा मटेरियल लेके आना, ये इकोनॉमिक्स पूरी और नहीं मैच करती। तो वहाँ पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने शायद ये सोचा है कि हम जो मटेरियल कॉस्ट है वो हम प्रिकोर करके देंगे, ऑलरेडी जो पाइप है इनको ऑलरेडी प्रिक्योरमेंट करके दे देंगे, तो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें वो प्रेशर कम आएगा। लोकल कॉन्ट्रैक्टर होने का फायदा ये है कि वो अपनी लोकल जो रिक्वायरमेंट है उससे वेल वर्स्ड है, उसको आसानी से वो उसको वहाँ पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात है, इसमें टाइमिंग वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन, फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस, फिर उसका लास्ट में होना है। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा तो होगा नहीं कि वो पहले में साल में ही टूटना शुरू कर दे या उसमें गड़बड़ी आना शुरू कर दे। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत दिनों बाद आएगा, 2-4 साल, 2-3 साल में, लेकिन फिर भी जो गांव वालों से ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उसको उनको कलेक्ट करना ही पड़ेगा, और लगातार वो प्रैक्टिस में बिहेवियर चेंज करने की बात है, उसको लेके आना पड़ेगा। ये उसी तरह से है कि आपकी कोई भी आप नया सामान खरीदते हैं तो एकदम से वो खराब, आपकी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वो तुरंत खराब नहीं होती, उसको टाइम लगता है, 2-4 साल वो चलती है, फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, प्रिक्योरमेंट टाइमिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा, नेक्स्ट करें प्लीज। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ अक्सर कि बरसात जब होने वाली होती है या बरसात हो रही है, कल बरसात होने वाली है, आज अनाउंस हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है रोड में ब्लैक टॉप बिछाना शुरू कर देते हैं। उस दिन मैं अक्सर देखा है, जिस दिन पता लगा उसको बिछाते समय बरसात हो जाती है, या उसके एक दिन पहले बरसात भी होती है, या वो एक दिन बाद बरसात हो जाती है, तो ब्लैक टॉप जो रोड होती है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। अब आपने पहले से गर्मी के टाइम पे एक टेम्परेचर है तारकोल का, उस टेम्परेचर पे वो होना चाहिए, तो वो बढ़िया उसकी लेइंग होती है। तो ये टाइमिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, हाउ यू मैनेज दिस। तो एक कोई प्रोग्राम कालिया साहब बता रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा बात करेंगे इस बारे में। अब कितने तरह की स्कीम हो, ये भी आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि गांव वालों के साथ मिलके
कैसे आप अलग अलग तरह की स्कीमें बनाएंगे। हमको जेजेएम परियोजना में सबसे टॉप प्रायोरिटी में ध्यान देना है, सिंगल विलेज स्कीम को ही बनाना है इसमें, ठीक है। तो ये मल्टी विलेज स्कीम तो बहुत बात की बात है। मल्टी विलेज स्कीम हमको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है वहीं पर ही हमको मल्टी विलेज स्कीम की बात सोचनी है। और उस मल्टी भी ये 2 विलेजेस की एक स्कीम बने तो ज्यादा बढ़िया, 3 विलेज की एक स्कीम बने, मैक्सिमम 4 विलेज की बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सी स्कीम, मैंने बहुत सारी डीपीआर देखी हैं जो कम से कम 150 किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। लेकिन जब उस डीपीआर को हम देख रहे थे तो हमने उसके इंजीनियर से मैप में देख रहे थे, हमने टेल एंड पे के गाँव पे के बारे में उनसे पूछा क्या इस टेल एंड के गाँव में लोकल पानी अवेलेबल नहीं था। तो उसने कहा है लेकिन अंडरग्राउंड पानी अवेलेबल है। तो कितना डेप्थ है, 600 फीट की डेप्थ है, 600 फीट पे पानी अवेलेबल है और उसको आप ट्रीट कर सकते हैं और उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो वो एसबीएस है, न कि 150 किलोमीटर दूर के टेल एंड पे आपने वो विलेज लगाया, उसको तो पानी मिलना ही मुश्किल होगा। टेल एंड पे पानी नहीं मिलने के तो मतलब लगातार बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट हैं कि टेल एंड पे पानी मिलना मुश्किल होता है। और दूसरा, ऐसी स्कीम हम बनाएं जो इलेक्ट्रिकल, जब मान पंपिंग की बनानी है तो कोशिश करें कि वो सोलर पावर। आजकल सोलर पावर स्कीम बहुत बने, पहले सोलर पावर स्कीम में बहुत कॉस्टली होती थी, पैनल महंगे होते थे। अब धीमे धीमे उसमें इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और मटेरियल पे कॉस्ट का फर्क पड़ गया है कि उसकी कॉस्ट अब कम होने लगी। तो इस बारे में भी आप सोच सकते हो। वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट बनाना बहुत जरूरी है। यदि पानी खराब है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मल कोर्स में भी हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें मोस्टली ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाते हैं, उसमें केवल क्लोरिनेशन करके हम करते हैं। लेकिन उसको चेक करना जरूरी है, पहले कहाँ पर बोर होना है, आप बोर कर रहे हैं उसके बाद उसको वाटर को टेस्ट करना जरूरी है, क्या वो पानी साफ है या उसमें किसी ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए सोलर पावर स्कीम है, बहुत सारी सोलर पावर स्कीम है। यूपी में तो लगभग मैं एक बार वो किया था कि 1500 थे लगभग सोलर पावर स्कीम है, उन्होंने बनाने का प्लान बनाया है। असम में तो सोलर पावर बहुत सारी स्कीमें बनी, पहले भी उनकी बनी थी जेजेएम से पहले, अभी भी वो जेजेएम में सोलर पावर स्कीम बन रही है। माजुली एक प्लेस है जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के बीच में एक आइलैंड है जिसमें करीब 90 वाटर सप्लाई स्कीमें वो सोलर पावर स्कीमें बना रहे हैं। और बहुत उन्होंने सीधे एक टैंक बनाया ऊपर और उसके नीचे बोर उन्होंने किया और उसी में एक उन्होंने प्रेशर फिल्टर लगा दिया है और उसको वो उससे पानी ट्रीट करके लोगों को पानी लोकली पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और जो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट वो सब वहीं पर ही उस जगह पे उन्होंने ये सोलर पावर सिस्टम लगाया और टैंक की छत पे भी सोलर पावर सिस्टम लगाया है। तो उसको भी आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आप उसको फील्ड विजिट भी कर सकते हैं, आप जाके देख के आइए उसको, या आपके आसपास जितने भी इस तरह की स्कीम है उनको आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब कितने तरह के सोर्स होते हैं ये मोस्टली यू नो, फिर भी हम लिस्ट करते हैं। रिवर है, स्मॉल स्ट्रीम है, स्प्रिंग है, इन्फ्लेशन वेल है, डीप ट्यूबवेल है, डग वेल बना सकते हैं, नौला बाउली बना सकते हैं। नौला और ये बाउली उत्तराखंड हिली एरिया में होता है। डग वेल भी बेसिकली प्लेन में भी होता है, तो हिल्स में भी डग वेल बनते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे डग वेल 96, 97 के तौर पे हिल्स में बनाए थे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब आप हिल्स पे हैं तो एक आप जगह पे खड़े हो जाइए, वहां से आप ऊपर को देखिए, पहाड़ की ओर देखिए, तो आपको एक वैली नजर आएगी ऐसी। उस वैली के एंड पे आप खड़े होते हैं और वहां पर ये देखिए कि क्या यहाँ पर जो घास है, एक तो नॉर्मल घास होती है वो ग्रीन होती है, लेकिन कहीं जहाँ पर पानी होता है वहां पर ज्यादा वो डार्क होती है, ग्रीन होती है। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर का जो वेजिटेशन है ये इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका मतलब कहीं नहीं, इसमें 80% चांस ये है कि उसके नीचे कोई वाटर कैपिलरी वहां से जा रही है जिसका पानी वो प्लांट ले रहे हैं, तो उससे उनका कलर चेंज बढ़िया हो रखा है। तो उस जगह पे आप खोदना शुरू करिए, बहुत सावधानी से खोदिए। 10 फीट 15 फीट तक आप खोदेंगे एक साइज का डगवेल, तो आपको नीचे वाटर कैपिलरी मिल जाएगी। उस कैपिलरी को आपको कैच करना है, उसके नीचे आप
कंक्रीट करके चारों ओर परफोरेटेड ब्लॉक लगा दीजिए और उसमें दोनों साइड फिल्टर भर दीजिए। और यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि जो कैपिलरी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। जरा भी आप उस कैपिलरी को डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर दूसरी डायरेक्शन में चले जाएगी और आपका ये डगवेल सूखा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो ये उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है कि कैपिलरीज, जो पानी की कैपिलरी है उसको बहुत सावधानी, बहुत हिलाना नहीं है। वहां पर हिल जाने से, पत्थर पे हिलने से उसका डायरेक्शन चाहिए। तो उस डगवेल पे आप ऊपर फिर एक पंप लगा दीजिए, या हैंड पंप तो खैर नहीं लगाना है इसमें, पंप लगा दीजिए, उससे लोगों को वाटर सप्लाई आप दे सकते हैं। और बड़ा साफ पानी होता है इसका। अंडरग्राउंड स्प्रिंग है बेसिकली, वो जमीन के अंदर का स्प्रिंग है। स्प्रिंग तो वह है जो जमीन से कैपिलरी निकल रही है लेकिन सरफेस पे आ जाती है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि आपके पानी एरिया में ये रेन्स इतनी, इस साल देखिए कितनी बरसात हुई है, जगह जगह पानी बह रहा है, वो सब मीठा पानी है, स्वीट वाटर है। उसको हम किसी तरह से उसको हार्वेस्ट करके हम पानी को कलेक्ट कर लेते, या उससे हम सोर्स को रिचार्ज कर देते, तो हमारे सोर्स में सफिशिएंट वाटर होने की संभावना बढ़ जाती है। हर घर को, गांव के हर घर को आप बोलिए कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, और उसमें फिल्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेन वाटर सीधे आपने जमीन के अंदर, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम बना के आप उसको जमीन के अंदर डाल सकते हैं। इवन जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरिया हैं या राजस्थान के एरिया हैं, वहाँ पे वो जमीन के अंदर एक टांकी बना के, टांकी बोलते हैं उसमें, टैंक है, वाटर टैंक है, उसको जमीन के अंदर डाल के पूरी छत का पानी वो उसमें रख देते हैं। और वो इतना सफिशिएंट पानी होता है कि पूरे साल भर उनके वो काम आता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है जहाँ पर रेंज होती है। आप थोड़ा आइडिया आपको लगाना पड़ेगा क्या कितनी रेन है, क्या है। तो इस तरह का भी प्रोविजन आप कर सकते। कैनाल से, जैसे पंजाब में और गुजरात में कैनाल से पानी लेके, डैम रिजर्वायर से, यूपी में बुंदेलखंड रीजन में बहुत बड़े जो डैम्स हैं उनसे जो है पानी लेके वाटर सोर्स को वो किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये डिफरेंट टाइप के, जैसे ग्रेविटी गधेरा, ग्रेविटी स्प्रिंग, पंपिंग ट्यूबवेल, पंपिंग इन्फिल्ट्रेशन वेल, नॉला बाउली अपग्रेडेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिक्स स्कीम, इन सब की कोई मिक्स स्कीम भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट। अब एक कंपोनेंट देखें तो ग्रेविटी सिस्टम के कंपोनेंट हैं कि स्प्रिंग वाटर सोर्स है तो उसमें स्प्रिंग कलेक्शन चैम्बर होता है, सप्लाई मेन होता है, रफनिंग फिल्टर होता है, और एक क्लोरीनेटर होगा, क्लियर वाटर रिजर्वायर होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन मेन होगा। यहाँ पर भी जो है रफनिंग फिल्टर है तो थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन उसको करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कन्वेंस मेन एक हमने आइडिया दिया हुआ है। एवरेज साइज मोस्टली 25 mm का डायमीटर का मीडियम क्लास का पाइप लगाया जाता है। ये एक आइडिया है, एक्सपीरियंस है, आप अच्छा जानते हैं। क्लियर वाटर रिजर्वायर को 30 इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन कर दें तो इतने लीटर कैपेसिटी का वो बन सकता है। एक मोटा अंदाजा जब आप प्री फिजिबिलिटी करते हैं तो उस समय इससे आप कॉस्टिंग का आइडिया लगा। क्लोरीनेटर 25 लीटर का होना चाहिए लगभग, ठीक है। ये सिंगल विलेज स्कीम बात हो रही है, जिससे सबसे कम सस्ती और सबसे कम ऑपरेशन मेंटेनेंस की स्कीम बनेगी। एवरेज साइज ऑफ पाइप 20 mm लेते हैं, जीआई लेते हैं, या कोई आप एसडीपी ले लो, मीडियम क्लास का पाइप होना चाहिए। बेसिकली 3 तरह से होते हैं, येलो एक कलर रहता है, एक ग्रीन रहता है, ब्लू रहता है, और एक रेड रहता है। रेड तो हाई क्लास है, ज्यादा मजबूत होता है। मीडियम क्लास का आप लेंगे तो फायदा है। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगेगा, और IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। कल एक सज्जन बात कर रहे थे कि हमको IoT बेस्ड सिस्टम, फ्लो मीटर कहाँ पर लगाना है। वो बेसिकली फ्लो मीटर तो कायदे से तो हर घर में लगना चाहिए, लेकिन अभी उसका कॉस्ट बहुत आ जाएगा। आपके स्टेट ये एग्री करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो जो वाटर टैंक जो है डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर क्लियर वाटर रिजर्वायर है जिसमें ट्रीट होके पानी आ गया है, क्लोरीनेशन हो रहा है, उसके बाद उस फ्लो मीटर को आप लगाएंगे तो वहां से साफ पानी निकलने वाला, क्लोरीनेटेड वाटर जो निकल रहा है, उससे आप मेजर कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट प्लीज, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मेन में नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेन में रेजिडुअल क्लोरीन होना बहुत जरूरी है। लोगों को ये बताइए, जब तक वो पानी जब लेते हैं उसमें थोड़ा सा क्लोरीन की स्मेल नहीं आ रही तो पानी मत पिए। मेरे यूनिसेफ के मेरे सीनियर हैं, वो ये कहते हैं कि वो फ्रांस के हैं, कि वो जब इंडिया आए तो उन्होंने ये सोचा कि पानी गंदा हो सकता है, घर से बाहर निकल गए, तो वो कहता है कि मैं जिसमें क्लोरीन की स्मेल आती नहीं वो पानी पीता ही।
तो ये एक प्रैक्टिस हमको बनाने की जरूरत है। क्लोरीन की, और जब आप क्लोरीन की स्मेल नहीं आ रही है तो गांव वाले उसको पकड़ेंगे, फिटर को, प्लम्बर को भी इसमें क्लोरीन डालो, तो वो यदि क्लोरीनेटेड वाटर आप पी रहे हैं तो फिर आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको कोई बीमारी होगी। ये देखिए ग्रेविटी सिस्टम है, इसमें भी बोल्डर फिल गैलरी, उसमें स्प्रिंग कलेक्शन चेम्बर है, बोल्डर फिल गैलरी होती है हिल्स के केस में, इसमें सोर्स एंड फिल्टर हम लगाते हैं इसमें। तो इसमें भी कुछ ऐसी कैलकुलेशन के आइडिया दिए हुए हैं और इससे आप जो है प्री फिजिबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये पंपिंग स्कीम है, ट्यूबवेल वाटर सोर्स होगा, इन्फ्रेशन वेल हो सकता है, इसमें पंपिंग चैम्बर होगा, डिफरेंशियल क्लोरीनेटर होगा, पंपिंग मशीन इसमें लगेगी, पंपिंग मेन होगी, ओवरहेड टैंक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेन होगी, स्टैंड पोस्ट होगा, घर का जो FSCC है वो होगा। ओवरहेड टैंक आप 30 into प्रेजेंट पॉपुलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम अंडरग्राउंड वाटर है तो इसमें ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि खाली क्लोरीनेशन करके उसको छोड़ देते हैं। ये भी एक सस्ती स्कीम हो सकती है जहाँ पर प्लेन एरिया में, जहाँ पर ग्रेविटी स्कीम नहीं बन सकती है। लेकिन इसमें यदि आप सोलर पंपिंग लगा दें तो वो बिल्कुल ज्यादा सस्ते। आजकल तो सोलर पैनल ऐसे भी आते हैं जो बहुत कम लाइट में भी पूरी सफिशिएंट एनर्जी पैदा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, आप अपने आसपास के कंपनीज को बुलाइए, उनसे प्रेजेंटेशन करवाइए, डिस्कस करिए, और जो ऑप्टिमम पे जो आपको सोलर पैनल दे सकते हैं उस तरह की टेक्नोलॉजी को, स्टैंडर्ड को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब सोर्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म होना है, और सोर्स अच्छा आइडेंटिफाई नहीं होगा तो वो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, बार बार उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है, तो लोग फिर वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उसमें नहीं रहेगी। जैसे डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर टिल द एंड ऑफ डिजाइन, ये 30 ईयर का डिजाइन पीरियड है। CPHEO मैनुअल आप देखिए इसको, ये हम लोग भी एक टेक्निकल मैनुअल बना रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बन गया है, थोड़ा वेटिंग में चल रहा है, तो वो भी मैनुअल आने वाले समय में आपको मिलेगा, जिसमें उसका ये डिजाइनिंग का तो सारा CPHO मैनुअल पे ही वो है। CPHO मेरे ख्याल से अर्बन में जो लोग काम करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ही जानते हैं उसको, लेकिन जो रूरल में काम करते हैं वो कम जानते हैं। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक CPHEO करके एक यूनिट है जो वहाँ का टेक्निकल सारा पूरे देश के जितने भी वाटर, सीवर, ड्रेनेज, पार्क्स, इनके लिए जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, सॉलिड वेस्ट के लिए जो मैनुअल बनाते हैं वही लोग बनाते हैं। तो वहाँ पर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वाटर का आपको मैनुअल मिल जाएगा और उस स्टैंडर्ड को ही आपको फॉलो करना है। ठीक है। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ आप ऐसे निकाल 1.5 इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। वाटर डिमांड आप 1.5 इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन लीटर पर डे इंटू 55 LCD आप ऐसे करेंगे तो वाटर डिमांड निकला। ये ब्रॉड आइडिया स्टेप्स, ब्रॉड कैलकुलेशंस हैं। डिस्कस विद द लोकल सोर्स के बारे में, उसकी पेरेनिलिटी के बारे में गांव से बात करें। अब यहाँ पर कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, सोर्स का आइडेंटिफिकेशन कम्युनिटी कैसे करें। कम्युनिटी के लोग वहीं रह रहे हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं। आप जब गांव में जाएं तो सोर्स की जिस दिन बात करनी है उस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को आप आइडेंटिफाई करें, जिनके बाल सबसे ज्यादा सफेद हो, दाढ़ी सबसे ज्यादा सफेद हो। अब उनके साथ बैठे, वहां पर बैठे, थोड़ा सा उनसे गप्पे मारें और तब उनसे पूछेंगे दादा बताइए कौन सा ऐसा स्रोत है जो सबसे पुराने समय से आप देख रहे हो। अब तो वो बताएंगे आपको, जब हम छोटे थे यहाँ पर स्कूल के सामने खेलते थे तो ये ट्यूबवेल से पानी पीते थे, तब इतना मोटा पानी इसमें ऐसे हाथ से उड़ाते हैं, इतना मोटा पानी आता। आज भी उतना ही पानी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको देखिए, उसकी सोर्स की लाइफ आपको मिल गई जो आप किसी भी मेजरमेंट से या किसी भी तरीके से नहीं आ रही। वो उसकी पता 60 साल के वो दादा हैं तो समझ लीजिए कि 55 साल का सोर्स जो है आपको आइडिया होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये बहुत जरूरी है, उसकी पेरेनिलिटी को वो करना है। विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, ये देखें कि कोई पॉल्यूशन उसमें नहीं हो रहा हो स्रोत में। ठीक है। ग्लास, एक जनरल आइडिया के लिए ग्लास में पानी डाल दें, उसको उसकी क्लियरिटी और टर्बिडिटी का थोड़ा सा आइडिया लगाएं, पी के थोड़ा सा टेस्ट करें उसको। ठीक है। और सबसे खास बात है, सोर्स का डिस्चार्ज तो हम मेजर कर देते हैं लेकिन उसका यील्ड मेजरमेंट नहीं करते हैं कि वो कितना जब चल जाएगा तो कितना पानी वो देगा,
क्योंकि जब शुरुआत में हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं तो पानी ज़्यादा मालूम पड़ता है, लेकिन एक टाइम के साथ जब हम उसको मोटर चला के उसमें देखते हैं तो उसकी यील्ड का मालूम पड़ता है, एक्चुअल पानी कितना है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये सब बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। अब क्या स्टेप्स में, क्वालिटी ऑफ वाटर देखिए उसमें, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, कितनी है, हर साल पेरिनियल है नहीं है, क्वालिटी, क्वांटिटी देखिए, क्वालिटी देखिए, और उस एरिया में लैंड अवेलेबिलिटी के क्या इश्यूज हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात है, लैंड अवेलेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, ये देखिए, ठीक है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में कितना कोई समस्या तो नहीं आएगी। बहुत सारे स्रोत कभी ऐसी लोकेशन पे हम जमीन आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वहाँ पर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने एक जगह देखा कि उन्होंने थी तो वाटर सप्लाई स्कीम, लेकिन वो रोड बना दी उन्होंने पूरी, और उस स्कीम को देखने से लग रहा था कि ये रोड की स्कीम है, न कि ये वाटर सप्लाई की स्कीम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, बड़े बड़े बोल्डर थे, पानी को, नल को उनको जमीन के नीचे डालना था, तो उतना उनको वाइड खोलना पड़ा। तो बेसिकली उसमें लग रहा था कि रोड को ध्यान में रोड बनाने को ध्यान में रखते हुए वाटर स्कीम बनाएंगे, और ऐसा था भी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, हम रोड नहीं बनाने जा रहे हैं, बल्कि हम वाटर स्कीम बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वाटर सोर्स का डिस्चार्ज जो स्प्रिंग सोर्स होते हैं, यदि उसको हम देखें तो 9 LPM से ज्यादा का उसका डिस्चार्ज होना चाहिए। यदि उससे कम का डिस्चार्ज है तो उसके सूख जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहते हैं। तो कम से कम ये देखिए 9-10 LPM लीटर पर मिनट का उसका डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट, यील्ड मेजर करना बहुत जरूरी है। सरफेस स्रोत है तो बकेट मेथड से आप कर सकते हैं, फ्लो मेजरमेंट करना वीनॉज मेथड से कर सकते हैं, एरिया वेलोसिटी मेथड से भी आप उसका सोर्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आजकल भी हो सकता है इंजीनियर्स ये करते हैं अपने साथ में, लेकिन जब मैं फील्ड पे काम करता था तो ये बहुत सारे मेजरमेंट मैंने खुद किए हैं। मैं लोगों को भी प्रमोट करता कि आप खुद मेजर करें, क्योंकि आप किसी या तो कोई एक्सपर्ट किसी को सिखा के वहां पर भेजें जो उसको प्रॉपरली भी मेजर करता हो। ये उसी तरह से है कि आप कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में जो दवाई है उसका सही मात्रा और उसको सही दवाई का होना बहुत जरूरी होता है। 1 सेकंड में आपका गलत दवाई लग गई तो समस्या हो जाएगी। ये उसी तरह से आपने यदि गलत मेजरमेंट कर दिया तो पूरी स्कीम, आपकी करोड़ों की स्कीम बेकार हो जाएगी, ठीक है। ट्यूबवेल में आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, बीनॉस से भी कर सकते हैं, और उसका पंप के थ्रू भी उसमें करते हैं, हाइट नाप के। ओपन वेल में रेट ऑफ पंपिंग मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। यील्ड टेस्ट में कुछ प्रिकॉशंस रखने की बात है। वाटर pumped out should be discharged away from the well, bore well, so that the same water doesn't enter in the aquifer। ये ध्यान रखने की बात है। तो ये आपने पानी निकाला और वहीं पर डाल दिया तो वो जो है वाटर एक्वीफर में चल जाएगा और फिर दोबारा आ गया तो आपको यील्ड ज्यादा महसूस होगी। तो सही यील्ड निकालने के लिए उस पानी को आपको दूर डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, मल्टी विलेज स्कीम। वैसे मल्टी विलेज स्कीम की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले तो सिंगल विलेज स्कीम ही बनानी चाहिए। मल्टी विलेज स्कीम मैक्सिमम 2 विलेज 3 विलेज से ज्यादा की मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सोर्स का मल्टी विलेज ग्रेविटी स्कीम है तो उसमें करना 6 लीटर पर मिनट का वाटर सोर्स होना चाहिए। उससे कम का स्रोत होगा 60 LPM का, उससे कम का होगा तो चांसेस हैं वो आपका पानी लंबे समय तक नहीं चलेगा। और ट्राई करें कि सोर्स नजदीक हो। ग्रेविटी स्कीम में तो 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर में सोर्स होगा तो हम इन विलेज वाटर पे सस्ती स्कीम बनेगी। क्लस्टर ऑफ हेमलेट्स हैं, वो सब को जो है उससे हम पानी मिला। एक गांव में यदि हिल्स का ग्रेविटी सिस्टम बन रही है तो अलग जगह पर 2 अलग अलग जगह डिस्टेंस में तो 2-3-4 स्कीमें भी वहाँ पे छोटी छोटी बना सकते हैं, जिससे उन गांव के लोगों को जो जहाँ पर पानी नहीं पहुंच रहा था उनके अप स्ट्रीम में कोई स्रोत देके आप बना सकते हैं। पंपिंग स्कीम, ट्यूबवेल का लोकेशन विद इन ए क्लस्टर होना चाहिए। बहुत ज्यादा दूर आप ट्यूबवेल को न देखें, ठीक है, गांव के नजदीक देखें, जिससे उसका राइजिंग मेन की लेंथ कम होगी, क्योंकि राइजिंग मेन वह है और उसकी कॉस्ट भी कम होगी। और गांव के नजदीक ट्यूबवेल होगा तो लोग उसकी आते जाते में देखभाल भी करते हैं। और वहां पर भी ट्यूबवेल की यील्ड कम से कम 200 से 300 लीटर पर मिनट होनी चाहिए।
उससे कम होगी तो चांसेस है कि नीचे पानी अवेलेबल आने वाले समय में सूख जाएगा। तो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ये बहुत जरूरी है। हम 55 तो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका ट्रीटेड वाटर देना, ठीक है। अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड देखिए, टर्बिडिटी ऑफ वाटर देखिए, नेचर ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल क्या है उसमें, उसको देखने की बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड, कितना वॉल्यूम हमको ट्रीट करना है, उससे आपसे ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी क्या है, ट्रेन ऑपरेटर, ये सब के हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो इसको भी बहुत सावधानी से बनाने की जरूरत है, और गांव के लोगों को उसको आप सिखा भी सकते हैं, जिससे वो आपकी मदद करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इसमें है, ज्यादा टेक्निकल पार्ट है इसका। नेक्स्ट, वाटर स्टोर स्ट्रेंथिंग। यदि वाटर स्रोत तो आपने ढूंढ दिया सही, 9 LPM से ज्यादा का आपने ढूंढा, 60 LPM से ज्यादा का आपने ट्यूबवेल, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस स्रोत को हमको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। बरसात के टाइम पे जो पानी आता है उससे आप उस सोर्स को रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड रिचार्ज की होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का यदि आप में सर्च करेंगे तो वहाँ पर वाटर सोर्स रिचार्जिंग की बहुत सारी मेथड्स दी हैं, जो बड़ी साइंटिफिकली डिजाइन मेथड्स हैं। तो उसमें से मैं लिख रहा हूँ, जो स्प्रेडिंग, वाटर को स्प्रेड कर देते हैं बहुत लार्ज एरिया में, स्प्रेडिंग विद द चैनल के थ्रू कर देंगे, स्प्रेडिंग स्ट्रीम वाटर थ्रू द नेटवर्क ऑफ डिचेज एंड फेरो से आप रिचार्जिंग कर सकते हैं, पॉन्डिंग ओवर द लार्ज एरिया कर सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं, नाला बंद कर सकते हैं, जो नाले हैं उसकी बंदिंग उसकी कर सकते हैं, ड्रेनेज बेसिन वर्सेस पर्कुलेशन टैंक्स, ऐसे आप पर्कुलेशन टैंक बना सकते हैं लंबे ड्रेनेज बेसिन में। रिहेबिलिटेशन ऑफ द विलेज वाटर बॉडी है रिचार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के माध्यम से यहाँ पर आप जो है, जो गांव की बहुत सारी पुरानी वाटर बॉडीज थी, ये माना जाता है कि जो भी गांव पहले बसते थे वो वाटर के किनारे ही बसते थे, जहाँ पर पानी है उसके किनारे। आपने सिंधु सभ्यता वो सब सुना होगा, सरस्वती सभ्यता सिविलाइजेशन, जो पानी खत्म हुआ तो पूरी सभ्यताएं खत्म हो गई। तो इसलिए जो गांव में जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, उनको रिकवर करने की जरूरत है। मनरेगा से आप उसको ये करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो भी वाटर रिचार्जिंग के बहुत काम आते हैं। रिचार्ज सेफ्ट हैं, वर्टिकल सेफ्ट, लेटरल सेफ्ट बना सकते हैं, इंजेक्शन वेल आप बना सकते हैं, जहां पर जैसा सिचुएशन के हिसाब से बनेगा। और प्लांटेशन वाटर सेट, आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मोस्टली वाटर सेट पे काम करता है। बहुत सारे स्टेट में वाटर सेट का पूरा डिपार्टमेंट भी है। प्लांटेशन, कंटूर बंदिंग, कंटूर ट्रेंचिंग, बेंच टेरेसिंग, गली प्लगिंग, ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। मैंने आपको एक कल किताब दिखाई थी कि वाटर सोर्स रिचार्ज की, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्प्रिंग, तो उसमें भी ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं। और हमारी वेबसाइट पे आप चेक करेंगे जल जीवन मिशन की, तो वहां पर एक प्रेजेंटेशन है जिसमें ये गली प्लगिंग का साइज क्या होना चाहिए, कैसे डिजाइन करेंगे, बेंच टेरेसिंग कैसे करेंगे, कंटूर ट्रेसिंग उसका साइज, उसका कहाँ पर, ये पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। कभी ऐसा मौका लगा तो मैं आपको उसको बता भी सकता हूँ। नेक्स्ट, ये मैं पीछे बैक चले जाएं। बैक, 3 टेक्निकल ऑप्शंस, ये हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं। यदि 3 टेक्निकल ऑप्शंस में आप बताएंगे गांव के लोगों को जो जो पॉसिबल वहां पर स्कीम है, तो ये डिफरेंट टाइप की उसमें एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आपको उसमें वो करना पड़ेगा। गांव के लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो और इसको उसको प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। एग्री टू डू मीटिंग, 80% गांव के लोग होने चाहिए एग्री टू डू में। जो 3 ऑप्शन है उनको आप फाइनलाइज करेंगे एग्री टू मीटिंग में, ठीक है। और इसमें ये बहुत सारी चीजें इसमें दी भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन, वाटर सप्लाई स्कीम कैसे बनेगी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कैचमेंट प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, कैपिटल कॉस्ट क्या है, ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कितना उनको ऑपरेशन में देना, O&M का पैसा देना है, सर्विस लेवल क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ FSCC बेनिफिशरी सारे गाँव के लोगों को, ये सब चीजें एग्री टू मीटिंग में आप
फाइनलाइज कराएंगे। इसमें 80% लोग होने चाहिए, महिलाएं उसमें जरूर होनी चाहिए। जितनी भी गांव की महिलाएं हैं वही उसको उस निर्णय को लें, उस निर्णय को लीड करें तो ज्यादा अच्छा है। बल्कि यदि गांव की महिला सरपंच है तो तब तो बहुत ही अच्छा है, वो उसको अच्छे तरीके से उसे लीड कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब ऑपरेशन मेंटेनेंस के मेजर कंपोनेंट्स क्या, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट है, डेली ऑपरेशन होगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर होगा, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसमें O&M एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सब की बात होगी। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है तो उसमें क्या सेटअप है, कैपेसिटी क्या, IC का काम होगा, ठीक है। कंप्लेंट रिडर्सल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे ऑपरेशन मेंटेनेंस की चीज है। और यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक बात बताना भी चाहूंगा कि अभी मैं पिछली बार भी कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक मैनुअल बनाया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग वो मैनुअल, उसमें मोस्टली मैनुअल में तो बहुत लंबी लंबी कहानियां लिखी रहती हैं, तो लोग उसको पढ़ते नहीं है, अब इतना आदमी बोर हो जाता है। तो उन्होंने बहुत ही बुलेट 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 करके एक लाइन, मतलब एक लाइन जो उनकी लिखी है वो सफिशिएंट है अपने आप। उससे फिर उस लाइन से आप पूरा समझ जाओगे क्या करना है, दूसरी लाइन से क्या करोगे, दूसरा एक्टिविटी। तो बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उन्हें टू द पॉइंट वो बनाया है। तो हमारे उन्होंने शायद उसको एडिशनल सेक्रेटरी साहब को, भरतलाल साहब को भेजा था, तो उन्होंने मुझे बोला था अभी तुम इन्हीं लाइन पे एक ऑपरेशन मेंटेनेंस का पूरी कंट्री के लिए एक मैनुअल बनाओ। तो पिछले 2-3 हफ्ते जो हमारे थे दिवाली के टाइम पे, इस टाइम पे मैंने वो मैनुअल बना के एक ड्राफ्ट मैनुअल सबमिट कर दिया है। अब उसको थोड़ा सा रिव्यू चल रहा है, यदि आने वाले टाइम पे ठीक हो, सब कुछ वो हो गया, तो वो बहुत जल्दी वो मैनुअल आपको जो है वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। उस मैनुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसको हमने भी वो बिल्कुल पंजाब स्टाइल पे स्टोरी नहीं लिखी है, बहुत सारा मटेरियल हम उससे भी ले रहे हैं, स्टोरी नहीं लिखी। उसमें हमने पहले इश्यूज क्या हुआ और उसका कॉज क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। मान लिया स्लो सैंड फिल्टर का रेट कम हो गया है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, तो ये तो इश्यू हो गया। इसका कॉज क्या है कि हो सकता है चोकिंग हो रही हो, सॉल्यूशन क्या है कि ऊपर के लेयर स्क्रैप कर दी, इस तरह के उसमें एट्रीब्यूट्स दिए हैं टू द पॉइंट। तो जो गांव का जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो बंदा होगा वो उसको सीधे सीधे वैसा एक्शन कर पाएगा, ठीक है। और जो जूनियर या जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो सीनियर, तो उसको वो देख पाएंगे। दूसरा डू एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स करके भी उसमें वो डाला है, क्या क्या टूल की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें उसमें डाली गई है, जिससे कि आप बहुत आसानी से जो है उसको वो कर पाएंगे। इन सब माले ऊपर वाले का वो रहा तो जल्दी से वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी थोड़ा सा एक हमने वो दिया हुआ है कि भी देखिए ऑपरेशन मेंटेनेंस में यदि 1 किलोमीटर ग्रेविटी स्कीम है, 1 किलोमीटर की लंबाई है और 65 mm का यदि पाइप लगा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन में 4 किलोमीटर है, 80 mm का लगा है, तो एक प्लम्बर एक हेल्पर के माध्यम से आप उसका बहुत अच्छे से ऑपरेशन मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर आइडिया है, आपको अच्छा आइडिया हो सकता है। यदि आपको कोई ऐसे आइडिया हो तो आप मुझे भेजेंगे तो मैं उस मैनुअल में उसको जोड़ लूंगा। नेक्स्ट प्लीज। और मुझे जरूरत है आप भेजिए अपने जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, जो आप तो फील्ड पे रहते हैं, छोटे छोटे टिप्स मेंटेनेंस के होते हैं, वो आप ये भेज देंगे तो हम उसको उसमें मैनुअल में जोड़ देंगे कंपोनेंट वाइज। जैसे CWR है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, स्लो सैंड फिल्टर है क्या क्या ध्यान रखना है, इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके पास होंगी। तो अब ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कह रहा था कि यदि आप गाँव वालों को बोलिए जब जाते हैं कि यदि उसमें रेजिडुअल क्लोरीन की स्मेल आपके स्टैंड पोस्ट के पानी लेने पे नहीं आ रही है तो उस पानी को मत पियो, बिल्कुल मत पीजिए उस पानी। बहुत जरूरी है क्लोरीनेशन का होना। कल मैडम भी इस बारे में काफी उन्होंने पंजाब में जो उन्होंने किया है उसके बारे में जिक्र कर रही थी, वो बहुत ही मतलब शानदार बात है। मतलब वो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे छोटी छोटी बातें उनको भी मालूम है और वो स्प्रेड करनी है। मैं आई एम रियली हैप्पी। तो यहाँ पर एक चीज ये दी, देखिए एक सेकंड थर्ड लाइन पे 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर द 1000 लीटर को ट्रीट करने में लगभग 5 ग्राम की जरूरत होती है। अब गाँव उनको बताने की बात है, 5 ग्राम वो कहाँ तौलते फिरेंगे, इससे अच्छा उनको बताइए कि माचिस के डब्बे में यदि आपने
सही स्ट्रेंथ का क्लोरीन डाल के उसको घोल के 100 लीटर पानी 1000 लीटर पानी मिला दिए तो उसमें ब्लीचिंग सफिशिएंट है और सारे पैसेंजर उसमें मरने की संभावना ज़्यादा है। और उसको मिक्स करने का भी एक तरीका नीचे दिया गया है, इसके हिसाब से उसको करें। अदरवाइज मोस्टली क्या कहते हैं, जो प्लम्बर होता है वो ले आता है एक थैले में और वो सीधे वाटर टैंक के अंदर ही ब्लीचिंग पाउडर को डाल देता है। वो तरीका गलत है। पहले आपको उसे घोलना चाहिए, स्टेयर करना चाहिए और फिर उसको एक मलमल के कपड़े से जो हल्का है उससे छान के फिर जो रेजिड्यू उसका है उसको जो है ब्लीचिंग पानी में डोजर के थ्रू मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। कल के उसमें ये था कि भाई फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन सबको मिल गया है और 55 इलेक्ट्रिसिटी पानी मिल रहा है, तो अब सड़कों में जो है, नालियों में और गांव की स्ट्रीट्स में जो है पानी भरने लगा है, तो वो ग्रे वाटर है, उसको भी मैनेज करने की जरूरत है। तो गांव के लोगों को अवेयर करना इस बारे में। रूटीन सिनेरियो इन द विलेज मोस्टली यही रहता है। और वाई वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है वेस्ट वाटर में, फाइंड वे टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर घुस जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में ये जॉइंट प्रॉपर जॉइंट नहीं है तो उसके अंदर घुस जाएगा और वाटर को पॉल्यूट कर देगा। बहुत जगह पे मैंने ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं या विजिट किए हैं कि वही नाली है, उसी में से गंदा पानी भी जा रहा है और पानी का नल भी उसी में से जा रहा है। तो थोड़ा सा ये जो ले करते हैं, जब इंजीनियर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम नाली अलग और पाइप अलग होना चाहिए, पाइप थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। जब MEP की बात आप करते हैं, जब आप किसी बड़े कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंगें बनाते हैं तो वहां पर अलग अलग लेवल होता है। सबसे नीचे सीवर का पाइप जाता है, फिर उसके ऊपर वाटर का पाइप जाता है, जिससे कि वो आपस में मिक्स नहीं हो। बिजली का पाइप और उसके ऊपर जाता है, तो ये सब लेयर्स हैं उसकी, तो उसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग को ध्यान में रखें। इसके लिए यदि आपको कोई जानकारी जरूरत है तो नेशनल बिल्डिंग कोड है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको पढ़िए। करीब 1700-1800 पेज का है, उसको पढ़िए, उससे आपको मालूम पड़ेगा। और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए स्वच्छ भारत मिशन में इसके लिए फंड अवेलेबल है और वहां से आप इस फंड को लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांव के लोगों की, BWC की सारी जिम्मेदारी है कि जो छोटी छोटी खर्चे होते हैं, लोगों का कंट्रीब्यूशन जमा करना, लोगों को मोटिवेट करना और ऑपरेशन मेंटेनेंस का रिकॉर्ड को रखना, ठीक है, समय समय पे केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करवाना, और ये सब चीजें BWC का काम है। टाइम अपने प्लम्बर के माध्यम से टाइमली सब चीज का रिपेयर करना, ये सब का, और डेली पानी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, ये सब उनका काम, ये उनको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये प्लम्बर की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैं पहले बताता है कि हमारा प्लम्बर का मैनुअल आज हमारा तैयार हो गया है, हमने डिजाइन करके कॉपी एडिटिंग करके तैयार कर दिया है, उसको भी बहुत जल्दी आप लोगों को वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये प्लम्बर, मैं जैसे बात कर रहा था कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो पॉसिबल प्लम्बर है उस गांव का, उसको उस ऑपरेटर है उस टीम में, कॉन्ट्रैक्टर की टीम में आप उसको जॉब दे दें और वहाँ पर उसको काम करने के लिए लगा दें, तो जिससे कि वो उसको सारी जान के, तो प्लम्बर का जिम्मेदारी होगा मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, इंश्योरिंग टाइमली रिपेयर, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करना होगा या नहीं भी होगा, डिपेंड करेगा, BWC डिसाइड करेगी। और समय समय पर ग्राम पंचायत और उनको जो है मिसयूज और उसके लिए अलर्ट करना। बहुत जगह पे मैंने देखा है पानी आ रहा है तो लोग इरिगेशन करने लग जाते हैं, और जो घर खेत के किनारे होते हैं वो तो सीधे नल अपने खेत में ही खोल देते हैं, ठीक है। करेक्ट क्लोरीन डोजिंग का भी सही होना बहुत जरूरी है। ज्यादा क्लोरीन डोजिंग होती है तो तबीयत खराब हो जाएगी, कम होगी तो बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो ये लिमिटेड सही तरीके से इसको करना चाहिए। FTK, मोटिवेटिंग FTK टेस्ट, जो गांव की महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करने का काम उसका रहेगा है। क्लोरीन का स्टॉक है नहीं है, ये सब उसको वाल्व टैग सबका स्टॉक उसको रखने के लिए BWC को बोलना पड़ेगा, और कोई मेजर फॉल्ट है तो BWC को बताना पड़ेगा। कीप आई ऑन द ग्रे वाटर, पानी बह रहा है पूरे रास्तों में, उस पर ध्यान रखना, उसका प्रॉपर वो करने के लिए BWC को वो करना, गाँव के लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। ये सब काम जो है हमारे प्लम्बर के रहेंगे। नेक्स्ट, कंप्लेंट रिड्यूसल सिस्टम,
ये तो सभी लोगों के पास मोस्टली होता है। कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया होना चाहिए है। लोग कहते हैं, स्टेट कहती है बहुत बढ़िया कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। एक किसी गांव वाले ने हमको कंप्लेंट करा तो उसको रिड्रेस करने में मुझे महीने भर लगे। तो वहां पर मुझे लगा कि कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम तो फेलियर है। हमारे इंजीनियर साहब हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, या उस गांव वाले की बात, हमारी बात नहीं सुन रहे तो गांव वाले की बात भी नहीं सुन रहे होते। तो ये थोड़ा सा एक इशू है, एक समस्या है। इसको भी हमें, जब तक आप थोड़ा सा, कोई आदमी आपको कंप्लेंट करता है तो तुरंत उसको रिड्रेस करना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा है और आप ऑफिस कैसे आएंगे, आप पानी कैसे पिएंगे? 2-4 दिन पानी नहीं आएगा तो आपके साथ भी सेम समस्या रहेगी, आप, क्योंकि आप भी उसी समाज में रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक लास्ट पॉइंट है कि फेरूल लगाना। बहुत, अब तो खैर ये फेरूल बहुत जगह लगने लगा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब फेरूल लगाते ही नहीं थे लोग बहुत, ठीक है, सीधे सीधे उसमें वाटर का कनेक्शन दे देते थे और फेरूल। तो अब जो है फेरूल लगाने की जरूरत है और इसको प्रॉपरली आपको लगाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेरे पास फेरूल पड़ा हुआ है, ये देखिए फेरूल है, ये इसको क्लैंप है और ये फेरूल है, ये निकल जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ से इसको टाइट करते हैं पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए। फेरूल का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इसलिए है कि ये कहीं पे पानी आता है ज़्यादा, कहीं पर नहीं आता है। उस पानी को यदि आप प्रॉपर प्रेशर सारी जगह पे यदि करना चाहते हैं तो ये फेरूल का लगाना बहुत जरूरी है। ये क्लैंप है जो पाइप में लगेगा और ये फेरूल जरूर लगाएं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो थोड़ा सा रिच हैं या उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है तो वो पंप लगा देते हैं। तो उस पंप को ब्लॉक करने के लिए आप फ्लो मीटर लगा सकते हैं। वो उसमें एक गोली होती है, वो ज्यादा 5 LPM का लगा देंगे तो उससे ज्यादा वो पानी नहीं ले पाएगा, ठीक है। और ये फेरूल जरूर लगाइए। इसका फायदा यह है कि जो वाटर टैंक के नजदीक जो घर हैं वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो फेरूल को आप एडजस्ट कर देंगे अंदर इसके नट से, ये नट है, इससे आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर देंगे तो पानी का प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और दैट विल हेल्प इसको एडजस्ट करके आप जो टेल एंड पे जो वो है घर, उसको भी आप पानी उसी प्रेशर में दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये कुछ बातें मैंने कही थी, ये कहीं ना कहीं इन सब चीज को हमको एड्रेस करना है जिससे कि हम ऑपरेशन मेंटेनेंस, सस्ता ऑपरेशन मेंटेनेंस कर सकें, सस्ती स्कीम बना सकें और उसमें जो है लोगों की कैपेसिटी हो कि वो पैसा भी आपको दे सकें। यदि आपके पास पैसा होगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस का पैसा आपके पास आ रहा होगा तो सर्टेनली आप जो है लॉन्ग टर्म वो स्कीम में चल सकती है। ये मेरा मानना है, आपका भी यही मानना होगा। तो इसी के बाद मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। और यदि किसी कोई सवाल है, यदि कालिया साहब चाहेंगे तो कोई सवाल कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है। सर। थैंक यू दुपोला सर, आपने बड़ा एलेबरेटली बताया सभी को। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो दुपोला सर से पूछने के लिए रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी कैसे करनी है किसी भी स्टेट से, बिकॉज काफी स्टेट्स ने जैसे हरियाणा ने किए हुए हैं यहाँ पे, बट फिर भी उनका अपना एक्सपीरियंस, जैसे दुपोला सर ने कहा था कि अगर आपका कोई इनपुट है वो वी कैन ऐड अप इनटू द मैनुअल आल्सो, उनसे आप कर सकते मैं हो। तो कालिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इन सब से आप छोटा छोटा इनपुट लेके मेंटेनेंस का लिख के मुझे भेज दें तो मैं उसको जो है उस मैनुअल में यूज करूंगा, तो बहुत ही प्रैक्टिकल मैनुअल हो जाएगा वो। तो सबसे गुजारिश है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप की जो भी इनपुट है एंड विच वुड लाइक टू ऐड के एक मैनुअल में पार्ट बन जाए वो। तो और देखिए वर्स करने से एक आदमी यदि एक इनपुट भी दे देगा तो यहाँ तो 60 लोग हैं लगभग, तो 60 इनपुट हमारे पास हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई छोटा सा इनपुट की भाई आप फिल्ट्रेशन के वक्त ये करें ना, ऐसा इनपुट एक एक आदमी भी दे देगा तो हमारे पास 60 पॉइंट हो जाते हैं। उसमें आप इनपुट लिख दिए, कहाँ पर आप रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो भेज देंगे तो देखिए 60 पॉइंट्स हो जाएंगे।
और आपका जो फील्ड लेवल का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर बैठे हुए नहीं हो सकता है, वो जो है उसमें इंडोर्स हो जाएगा, पूरे देश का भला होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। किसी की है कोई आप रिक्वेस्ट, कोई इनपुट है, वैल्यूएबल इनपुट, और कोई आपने क्वेश्चन है? चलिए, मुझे लगता है सब बिजी हैं। अब बहुत ऐसी बात नहीं थी हमने जो बताई जो लोगों को नहीं मालूम है। हमने तो उसको सिस्टमेटिक, और पीपल नो, बहुत सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो अच्छा करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहीं पे हम अपनी बात को विराम देते हैं, और फिर आपसे दोबारा जब भी आप मौका देंगे हम आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। Thank you very much, Bola sir. Thanks for inviting everybody on this. Now we'll break for lunch, and we will reassemble at 2:15 with the topic on effective maintenance of water supply schemes with available resources. That will be addressed by Engineer K.S. Saini, Chief Engineer, Department of Water Supply and Sanitation. So let's meet at 2:15. Thank you very much. Thank you once again, Bola sir. Okay, sir. Thank you.
Good afternoon. Somebody is listening. Please allow me to share the screen. Hello. Good afternoon. जी जी. हाँ सनी सर आप ज्वाइन कर गए हो ना? Yes, yes, yes. I am into the VC now, but I'm not able to share my screen. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. I'll just get it in. Right. Please. Otherwise, I have forwarded you. You can share from there as well. Not possible. सनी सर आपको इफ यू जस्ट काइंडली एक तो अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन करके एंड नीचे शेयर का रेड बटन होगा, इफ यू जस्ट क्लिक दैट. उसमें ओनली होस्ट को आ रहा है सर. आपको होस्ट, हमने आपको होस्ट किया हुआ है. नहीं, को होस्ट है ना मैं. आप उसको क्लिक कर दीजिए. मैं क्लिक कर रहा हूँ ना. क्लिक करने में ओनली होस्ट वर्ड आ रहा है. एक मिनट. ओके, मैंने ऑल पार्टिसिपेंट में चला गया हूं मैं. हाँ, बैकग्राउंड में मेरे को लगता है खोलनी पड़ेगी पीपीटी, है ना. जस्ट अ सेकंड, आई एम गोइंग टू डू इट. हाँ, बस जस्ट आई एम ओपनिंग द पीपीटी. आई हैव डन. अब मैं जाता हूं उसमें. यस, इज इट विजिबल नाउ? कैमरा तो ऑन है. कैमरा इज ऑन नाउ. कैमरा ऑन है, ठीक है. पीपीटी नहीं आ रही अभी? नहीं, अभी नहीं आई. अच्छा, एक सेकंड.
का तो इशू नहीं है। क्या चक्कर है? नहीं नहीं, ओनली होस्ट ऑल पार्टिसिपेंट में मैंने किया ना, एक्चुअली मेरा नाम जहाँ पे है वहां पे को होस्ट ही आ रहा है। सर आप को होस्ट हो? हाँ, आपने को होस्ट होस्ट किया हमें यहाँ से, है। हम होस्ट हैं, आप को होस्ट हो। हाँ, बट ऑल पार्टिसिपेंट में जब मैं कर रहा हूँ पहले तो खुल गया था। पार्टिसिपेंट नहीं खोलने सर। हु कैन शेयर ओनली होस्ट है ना, ऑल पार्टिसिपेंट में आने हु कैन शेयर ओनली होस्ट आ रहा है मेरे कंप्यूटर में ऑप्शन। जब मैं स्क्रीन शेयर में जाता हूँ ये तो आप मुझे मेल कर दो पीपीटी। मेल करूं या मैंने व्हाट्सएप तो किया हुआ है आपको। किनके पास है? काली सर के पास है। दोबारा मैं या तो मैं दोबारा हो जाता हूँ उसमें, लीव करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो सर हाँ, 1 मिनट मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ शायद। ओके सर ओके। हाँ, एक्चुअली इसमें कमांड ये आ रही है होस्ट डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, अब आ गया। आ गया सर। मेरी पीपीटी विजिबल होगी? हाँ हाँ हाँ। राइट, थैंक यू सो मच। मेरे स्क्रीन में पर मेरी फोटो ही आ रही है। जस्ट म्यूट योरसेल्फ। जी, आपने स्क्रीन शेयर की है। आपने स्क्रीन शेयर की है, कोई बात नहीं, वील रन इट फ्रॉम हियर। राइट राइट, नहीं बट मेरी स्क्रीन आ रही है ना। आपकी स्क्रीन आ रही है। राइट, सो पहली वाली इसमें मेरे एक्चुअली लैपटॉप में पैरेलल नहीं आ रही है, बाकी सारा ठीक है। सर वील रन इट फ्रॉम हियर। आपने जो भेजी हुई है वील रन इट फ्रॉम। नहीं, यदि मेरी आ रही है तो मैं आगे करता रहूंगा। सर आप ब्राउजर मिनिमाइज करो। हैं? ब्राउजर को मिनिमाइज करो, इसको जो पीपीटी चल रही है उसको खोलो उसमें सिस्टम पे। पीपीटी खोल लेता हूं ना मैं। जस्ट डबल क्लिक करवा वो ओपन हो जाएगा। टाइम काफी निकल रहा है, या तो आप ही कर लो। होम स्क्रीन तो सर दिख रही है लैपटॉप की। हाँ, एक मिनट। सर आप ही शेयर कर लो, फिर आगे पीछे करना प्रॉब्लम आ जाएगी।
सर आप स्क्रीन शेयर हटा दो, इसको स्टॉप कर दो। सही सर? हाँ मैंने कर दिया। जस्ट विजुअल सर? नहीं ये कोई और आ गई है। जी जी। So let me start now. Yes, sir. Yes. Good afternoon, everyone. That's wonderful. We have been all together here. I think 43 participants have been into the VC, and I'm really thankful to DG ma'am, our worthy principal secretary Jasprit Talwar ma'am, who has started a very, very great venture. And in this JJM from the government of India, Mr. Pramod is doing a lot of wonderful things. And every day I met him, every day he is doing a lot of planning. And the program is going to be big, 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 bank successful under these leadership. So we are into the topic today. I think a lot of discussion have been held. This is 2 days, a big schedule. You have been very seriously watching everything. Or ye wala the portion today, which I am going to present you, that's effective maintenance of the water supply schemes with available resources. Let me introduce myself. I am Kuldeep Singh Saini. I am working as a Chief Engineer North in the Department of Water Supply and Sanitation, Punjab, since 1987. And I graduated from REC Kurukshetra way back in 1985. There I had been lecturer for few months, and after that I joined this department and working regularly in this department and very much passionate about the water supply things. And we have been given, this is a gift from the God, because in routine this is a to serve people with water. It should be in the part, but we have been given salary for this, so we feel obliged by divine power. We are into the department together now into the VC maintenance part. Next slide please. Just it's the overview, just to remind you what's the JJM. We have into the journey from, it is 1972 mentioned for the accelerated rural water supply program. Otherwise public health wing is much before in the Britishers' time. Separate engineers were there and all the diseases and all things were taken care of, which are the water based by the public health engineer. The original name is public health engineers. So public health, you understand what is a big term for all of us. And we are running short of time, just wasted in putting the presentation online. So we'll go a little bit fast to cover the topic. So 1972 to 2009 government thought कि हर household को पानी मिलना चाहिए. The coverage was as per the household, और ये this target was kept 2030. From minimum need to the program converted to every household. Now in the JJM in 2019, we all of know the concept is functional household tap connection. This is a very, very big term. In the house of someone having the water connection, what should be the quality? It should have the prescribed water standard as per the BIS. I mean, it should be free from all the contaminants, including biological and chemical and metallic. And you are all aware of this. And this water should be regular and on the long-term basis. Once we are giving a tap water, that means tap should not be off after a few times. And quantity should be 55 LPCD liter per capita per day. Although Punjab has kept 70 LPCD, we have been into the 70 LPCD since 2008. Or in 1990s, it was in the gallon, 5 gallon. And you just imagine what service standard have improved.
And I think participants are from the many states, and everybody must be aware about the quantity and quality of the water. And if it is the sustainability issue, and we have to design the things for next 30-40 years, that means what is the service standard. We have created the infrastructure and how it is going to survive during the life cycle period. So this is a big responsibility on all of us. We are together responsible for the health of the society as far as water is concerned. So har ghar mein nal se jal, it means that is a big responsibility. GOI has shared the target 2024, and we are all from the many states, but Punjab has just to let you know, we have kept a very ambitious target to cover all these things by 2022 March. But the sustainability operation and maintenance is a big, huge task. We need to understand the importance. Next slide, please. So what is the proper and effective maintenance of water supply? Today is main topic here. This is the basically precondition for satisfactory service delivery to the community. If maintenance is not proper, maintenance, what is the service delivery? This is proportional to the best maintenance. So how we have to achieve all these things? So what is the maintenance unit? We will talk about it. In Punjab, we will give the example of Punjab. What is our maintenance unit? How we have created the structure, and which is actually the foundation over the efficient superstructure of optimum efficiency. We are supplying water at a proper quantity, proper quality, and how efficiently, how we are keeping all factors in place regarding complaints and etc. This is the main motive. So success and failure of this unit is judged from the increase or decrease in number of complaints received, how we satisfy people fully, and how our maintenance unit, if it is maintained by the Gram Panchayat, how if it is the department, how these are converted to the utility department or the utility wing, that we are going to serve the things in a proper manner. So for this, a robust round-the-clock complaint registration system, these are all prerequisite, and we should all leverage things. We should extend our hand with the existing technology, mobile app based. We have also developed a Jal Seva app, and website based and telephonically, all these systems should be into the place. So we will talk about a little bit next Punjab SNK system. Next, please. So what are the nature of complaints and service standards? We have the schedule. I mean, we are running a water supply scheme. We are doing maintenance thing. And if everything is left open, there is no goal setting, no specific period is involved, then how we will work on this area? Suppose you get up in the morning, you don't set the goal to go to bathroom. You won't go. You will delay it by 30 minutes, 1 hour. So goal setting is important. So we have made the service standard. You just go on the screen, electrical, mechanical fault in machinery should be, these are the maximum days, should be removed by 2 days. What's like failure due to absence? These are some of the things. I am just summing it out just to know the idea how nature of complaint should be dealt within a specific time period. And that will build up your focus, build up your sharp focus to do for rectification work, the bad quality of water. And nothing should be taken more than 2. But where 7 days we have mentioned something is open. I mean, household water connection and related to consumer. These are the maximum days given. If any complaint which is a difficult in the nature or typical type of, we have just mentioned 7 days. But the specific area which we cannot delay, these should not over with these days. So Punjab DWSS introduced a centralized complaint redressal system. We have given facility of toll-free number. Shikayat Nivaran Kendra we have made it. The proper office is there. Round the clock people are sitting there. And number is given. This is a toll-free number. And publicity, for the publicity,
we have painted in many places, 5-10 places in a village, so that it should be a proper access to the public. People should know, and we have a television, Doordarshan program to publicize it. And in every ad, every newspaper ad, media, we always go for these numbers. If we make any signboard, we just put up these numbers there, so that it should be widely publicized. And we are using website and Jal Seva app also. So robust and efficient maintenance. To summarize the thing, robust and efficient maintenance, it is important that all the repairs work or everything should not exceed from a particular day, and we should set some standard for this. Next, please. Service delivery mechanism should have the goal. And how effective maintenance is possible? What are the best practices? The best practices, in fact, it is the preventive maintenance. We should have all SOPs and all systematic inspection, repair, replacement. But preventive maintenance does not mean that you do the things before the time period actually required. I mean, very preventive maintenance also involved in the high load of budget. So it should be in a proper routine. There should be a schedule. In next slide, we will go through the detail also. And corrective, corrective maintenance, minor repairs, replacement, broken, worn out, as and when it appears, we have to do promptly. Then crisis maintenance, response to the breakdown and the severe public complaint, and we press into the energy. But these are the firefighting kind of thing. Crisis maintenance and corrective maintenance is a firefighting kind of thing. We get the problem, we are going to rectify it. But the preventive maintenance, that is the proper thing. We have a confidence, we have a trust, we build the trust in people that we are doing the right thing at the right time, so that there shouldn't be any emergency arise. And if emergencies arise, that should be a minimum in nature, small in numbers, controllable, and there won't be public outburst, and that will build the trust of the community. And trust is the basic foundation for the for everything, for revenue generation, proper maintenance. People are willing, people will be motivated. That is the foundation of everything. Next slide, please. So in general, the scope of maintenance of water system broadly includes the following. Aapka equipment aa gaya, and everybody, you are aware of this. Various type of schemas there. Groundwater supply, we have a waterworks, and canal water, we have a water treatment plants, and there are machineries involved. And of course, distribution system network is everywhere. Wherever we have a groundwater based or canal water based or river water based surface water schemes, there is a distribution system. And for all the things, infrastructure into the place, we require a material required, spare parts and everything, material required for the maintenance work. And of course, capacity building of the staff, training of water supply system maintenance personnel. Those are the backbone of maintaining the schemes in a proper, efficient manner. They should have a proper training, proper skill development, and of everything regarding capacity building. Next, please. So there are so many elements of the good maintenance. It depends what kind of waterworks you are maintaining, or what kind of scheme you are maintaining, or treatment plant you are maintaining, what is the infrastructure, and some of the point. I mean, suppose it is a machinery. So lubrication is a very important aspect. Was it a part of SOP when we are doing it regularly? So what are the timely things we have to do? We have to do overhauling of obsolete and defunct equipment. This is the part. Routine checking of equipment and availability of spare machinery. And you require something emergently and you don't have in the stock, there should be a proper game plan of spare parts and spare machinery and all these things. So prompt action should be in the case of breakdown and leakage. This is very important for the water supply engineer. Suppose if you put yourself in the shoe of others and you don't have the water supply in the morning, and what you will going to do? That's a bad example. We have to think about the people. And serving, what is the serving? Serving is to give the proper service to them timely. So prompt action, what do you mean? If you do not do prompt action, suppose there is a leakage, heavy leakages, diarrhea will not take any more time
to spread in the village that may hamper health of so many people, and even deaths are there. So prompt action means no laxity. If leakage is pointed out, if breakdown is there, there is no 9 to 5 working at that time. So we need skilled staff, well-trained staff. Next, please. So proper maintenance of pumping machinery needs a trained and skilled staff. There should be well-trained staff equipped with the maintenance manual. Maintenance manual, normally we are short of these things. Manufacturer should be involved for this, for the maintenance manual of the machinery. And it should be simple, proper, crystal clear what to do. When basis of any effective maintenance or any effective work is the power of clarity. Wherever there is a clarity, that work is going to be in the very, very, very fine tuning. So in the absence of clarity, things cannot run smoothly. So just write down in your diary. I'm sure you people are having some diary you can note down. When my thinking is, whatever you note, that you will be able to retain. If you think I am going to deliver a lecture and you listen, then nothing you can retain it. So I encourage you have a proper pen, paper, and you just note down whatever you like for your future reference, and you can read it, reread it. It may be important for you, it may not be important for you. That depends on the mindset, that depends on the attitude. But I encourage you to write down few things that you will be able to read it. So there should be well-trained staff equipped with the maintenance manual. And of course, with the help of manufacturer, this will be more effective. And you have to be well conversant. And clarity, you write down power of clarity. In every step, every work, in personal life, in official life, clarity is the most important. If something is not clear, confused, that is never going to happen in field or physically. And chronological record of machinery equipment. In 90s, when we were SDO, we were told by the senior, you keep a diary. Whenever you visit any scheme, see the nameplate of the machinery, that all voltage, ampere, whatever is written. And if submersible set you are using that is under the water table, then you can note down these things from the bills or order. But you should have a record of machine. Whenever plant machinery received, it should be entered into a register that should be kept at the waterworks. And when whatever maintenance you are doing, whatever logbook is there, it is changed. But there should be a separate register of equipment and machinery. My recommendation is, on the basis of the recommendation of manufacturer, equipment schedule of preventive maintenance should be prepared in a simple language. Again, I'm talking about the clarity to be easily understood by the maintenance staff. Next, some of the things you can just for your reference. Suppose it is a centrifugal pump and it is a question of bearings. Checking of temperature with thermometer. You should have equipment available there. Maintenance unit should have these things. If it is a gland, now what are you doing? Greasing every 2 months. Gland packing, are you checking it or not? And leakages are very important from the gland. Gauges, pressure vacuum gauges, are we checking it? At least after 3 months, there should be a schedule. The valves changing of gland, packing in deliveries in slew valve, section valves, bypass valve, reflex valve. Every 6 months we should check. If there is a leakage or any other thing, of course, that should be done before that. But there should be a routine. There should not be any major thing carried forward. Impeller, these are the blades and all this thing. Next, yearly maintenance of these. Some of the monthly, some of the bi-monthly, some of the half-yearly, some of the yearly. There should be, these are the schedules. An induction motor, stator, rotor. Most of the things you know. The only thing is how you plan it and how you duplicate the things to your staff. Duplication of the staff is very important. On a proper schedule, proper maintenance. Daily maintenance, weekly, monthly, half-yearly, and annually, and how you have placed to the mind of your staff as with respect to system. If somebody is transferred,
it should not be hampered if there is a schedule and printed booklets and everything is available ready hand, so that if staff is changed and he can go through the book. So bearing, slip ring device, windings, these are the things. Next. Even nut and bolts, we never bother about this thing, loosening of these things. We should check in routine, oil tanks. Next. So for the maintenance work, I'm not able to move here. Yes. Now this is a cluster-based approach introduced in our department for preventing breakdowns due to various reasons, human behavior, unforeseen wear, tear, poor quality of spare, etc. Various breakdowns do occur. To address such maintenance issues, cluster-based whole-to-part approach we have adopted, where each junior engineer, assistant engineer in charge of a cluster of villages, 20 to 25, and this is based on simulated with the population also. I mean, certain designated population having in these villages. Some villages are small, some are big, but we have made cluster as per the population, as per the household. It normally falls from 20 to 40 villages under a junior engineer or assistant engineer, and he is designated as the section officer of this cluster or section. Proper offices are made. I mean, whole department is divided into the zones. Zone is headed by the chief engineer, then divided each zone into the circle, from then division, then subdivision. Then subdivisions are having 2 to 5 sections, mostly in under one STO. So 2 to 5 junior engineers under one STO. That how we are dealing with all 12,000 villages of Punjab. So you may replicate or make out things out of that. JAE should have a well-trained, well-equipped team of workers who will attend to such breakdowns and everything of related to those villages, data entry from data entry to repair work to everything, for even field collection of field data, for retrofitting or everything. But that section is an ideal thing of the miniature of the department. So sufficient stock of spares, toolkit, complete with maintenance record, all these things should be available at section office. The idea is section office should be strengthened fully. So we have provided office, furniture, even computer. They're having generator also, and full TNP. Some sections may be now under strength, but department is taking care of. There should be full staff. So this is a point we can strengthen. That will be the brand ambassador of the water supply department to these 20-25 villages. This is the whole idea. And under that, under 20-25 villages, if we have handed over scheme to Gram Panchayat, and most of the schemes are now handed over, how they are being converted to utility services, the section would be very, very helpful. Next, please. So need to standardize, prescribe the minimum quantity of spare parts to be kept ready at each section. It should be mandatory to raise purchase requisitions sufficiently in advance, keeping in view time lag between raising of purchase requisitions and arrival of material at site. These are the factors the section officer has to maintain. Quality spare should be there by the way of longer life, lesser maintenance costs, reduced stoppage, temporary arrangement, lower breakdowns. High cost of quality and genuine spare is to be balanced against above advantages, because budget is very, very important. And sometime older machinery we keep on repairing and repairing. So we need to assess older machines, increase cost of maintenance as extra manpower requirement, accessory inventory cost. So it should be compared with the purchase of new machinery. It is imperative to find a suitable relation between life of various machinery equipment and their maintenance cost. Next, please. Our worthy
Principal Secretary ma'am has effected the order way back in 24th May 2018, where all section, which is headed by, just it is for your reference how we have done it, junior or assistant engineer to head the section, and he will be having 3 teams. Operational team shall comprise of 1 junior technician or community based operator with 2 helpers, mean 1 plus 2, 3 staff. So 2 operational team having 6 number of staff, and 1 maintenance team. Maintenance team will be having 1 fitter or plumber with 2 helper. Again, this is the 3 staff. These are the total 9 person under 1 junior engineer, and they will be strengthened with the capacity building and strengthening of the offices and all the resources and budget planning and operation of even app, data in app, and MIS and IMS related activities as well. And now we have added social staff also. That is the name designated is block resource coordinator. Normally in 1 block we are providing 2 social staff, and in 1 block there are 1 or 2 subdivisions. 2 social staff also do see the service delivery aspect, as this is the most important thing nowadays for a water supply engineer, how to serve people. Behavior change and capacity building, these are all the topic of the social officer. They are also having community development officer above them, and this is also controlled centrally with the senior officers from the IC wing, so that everything should run smooth socially with the technocrats. Next. These are the few pics of the section. I mean, these are the boundaries shown, division is shown, and then this is divided into the section. And when we formed the section, some of the junior engineer were not having proximity to the villages. So we rescheduled all the section. I mean, J is having 20 schemes in different villages, but some is here, some is there. With this planning, with the map planning, what we have done, 1 junior engineer, above that the sub-divisional officer, then the division, they have the proximity area to save time and energy in the traveling and controlling the things, and a proper network of that particular area. And a lot of exercise were done before finalizing the section. Next. So I have, I think, 10 or 15 minutes more left. So these are the few pics of the section, just for your reference. Next. There, in previous slide, there was the display board where all the name of the villages were displayed, telephone numbers and everything. This is the screenshot of the app, and we are giving access to the public also. They can do the complaints, they can give the feedback. If officer goes to any scheme, he can put the feedback, he can add the photographs, and all data is also, scheme data is also carrying with this app. Thank you so much. Next. Then operation maintenance part. Maintenance of water supply scheme cannot be seen in isolation, and it is incomplete without proper operation mechanisms set in place. O&M go hand in hand for sustaining water supply infrastructure with improved service delivery. So it involves broadly recurring cost, electrical charges, chemical costs, expenditure on preventing and breakdown maintenance, remuneration of pump operator, technician, etc. So financial sustainability is the most important part in operation and maintenance budgeting. For effective O&M, Gram Panchayat local bodies have to act as a utility service provider, ensuring functionality of household tap connection. This is the coordination between all the bodies. So DWSS, our department, all we can say in general, public health engineering department should be expert enough to make things in the coordinating efforts to involve all the stakeholders for achieving a particular goal of the improved O&M and service delivery of the scheme. Next. The technical factors likely to influence operation and maintenance as well as sustainability as a whole, technology selection, complexity of technology,
If it is there, complexity of technology is there, then there should be proper document to have a clarity over the technology. People should know. Suppose it is we have put the arsenic and iron plant for removal of arsenic. So this is a little bit complex. So maintenance part should be very clear to the people who are at the ground. Its capacity to respond to a demand and desired service level, its impact on the environment, technical skill needed to operate and maintain a system, the availability, accessibility, cost of a spare part, and cost of maintenance. These are the technical factor. We have to keep it in mind, which influence broadly our operation and maintenance part. Next. So water testing protocol, you are aware, these are the guidelines, and we have to do test periodically, once in a year, chemical parameters, twice bacteriological. S2S kit is there. Whenever we go to the field, we should check the water for the bacteriological contamination and chlorination, and these are very important. Disinfection is the most important part of the effective maintenance. Most of the time you read in newspaper water supply diarrhea has spreaded and so many deaths are there, children are affected, and this is a very, very serious point for public health engineer to control the disease, because water is elixir and water is the basic thing. And normally if the blame is put into the water, there was a bad water and this has affected to the diseases. So we should be extra careful for the disinfection of the whole system. Next, please. What we have done in Punjab, we are now using sodium hypochlorite. Previously, we were using bleaching powder. That was, operators were not liking that. Their hands and all, they needed to wear the gloves, and some difficulties were there. And bleaching powder has a half-life period, only 3 months. The potency is lost in just after the storing. If you bring 30% bleaching powder to the site, it loses its 50% strength in just 2 or 3 months. It comes to the 10 or 15%. And when we put practically, and it is most of the time it is not effective. So less strength, sodium hypochlorite 9%, we are using it. And we have made the stores. We have coordinated with the sewerage board department. They have also made the store. Public health has also made the store. And in the most of the district are having one store. And from the schemes, people come and they dispense the sodium hypochlorite to the people in 20 or 30, 40 liter cannies, and they take to the scheme. With this arrangement, what we are feeling, we are never short of this chemical. Otherwise, if chemical is not available, how you will disinfect the water? This is a mechanism. Next, please. So generally, O&M rural water supply scheme is poor due to a number of complex reasons, including low priority according to O&M over new projects. Normally, we got the workload. Suppose in Punjab now we have the surface water project. The big projects are going on. Even small projects, so many schemes, junior engineers, SDOs, accents are holding it. So their focus shifted to the new projects, and O&M is ignored. Wherever O&M is such a thing, it is just like your health. If you don't take bath every day, or you don't do the routine maintenance, if you don't go for the test after 6 months or a year over your all the pulses and cholesterol and everything, so there will be a health hazard to yourself. You don't do like this. So low priority should be not to the O&M. It should be have a proper time given to it for its monitoring, for its checking, for its building over the time, how we are taking work from the staff and how they are capable of doing the things in ground. So proper priority should be given to it. Poor cost recovery, low revenue, because lack of trust. Sometimes we are not able to, social staff is also a very great duty to put the importance of the water to the minds of people. And normally what people have the mindset, government should give everything is free. So free is available only in pots. If we treat the water and supply to the doorstep of the people, then they have to pay. And it is not that major amount. Only thing is people should have the mindset of paying the things, paying towards the cost. And definitely that is the main backbone of the O&M.
budget. So inadequate staffing, we should see the staffing, which may result from the relatively low status of O&M compared with construction activity, lack of appropriate capacity building for the key stakeholder. I am repeating again and again of these points. Next, please. So if we are having poor O&M, you just see things are stolen, generator is in the bad shape, there's no cleaning, and even you are not able to open the gate. It has not, as if it has not been opened for so many months together, years together. Next. We have to retrospect the things. Honestly, we have to see things at the ground level. So what are the success factors for good O&M? So motivation is the most important. Motivation everywhere. If you are not motivated, you are not even your personal health keeping well. Availability of good quality space. We should give a proper attention for the selection of material. This is most important. Sufficient stock should be there. You should not run here or there. And sometime if you are not able to get the small space, that can lead the breakdowns for a longer period. So there should be a proper planning. Efficient and local workshop. We should identify proper workshops. And they should keep the things so that you should know from where these works can be carried out most efficiently, most economically, and technically sound. This should be a job that will remove your headache for repair work. Well-versed operational staff, again, the most important thing, environmental conditions, replacement policy for outlived and obsolete equipment, and robust complaint registration system. Like in Punjab, we are having SNK, Shikayat Nivaran Kendra. Next, please. Maintenance undertaken before known. I have already told you, you do things much beforehand, then it will result in excessive cost. So that should be on the schedule. And equipment subjected to various strain during its running needs attention. If this attention is not provided in time, it breaks down. Therefore, timely overhauling of equipment should be a regular feature of any maintenance system. This can be achieved by listing of total available equipment. You should know drawing monthly or periodic overhauling schedule when we are going to do it, monthly, bi-monthly, half-yearly, executing overhauling schedules. Next, please. Next, please. Yes. So routine checking. These are the just routine checking. Next. All equipment apart from overhauling at definite interval need closer observation to check if running conditions have changed, requiring some action, such as failure of gland sealing, resulting in loss of water, creating unsafe conditions for operation. And if water stands there, and these are the days of dengue, there shouldn't be any spillage of water that comes in the fresh water. We should be very careful from the public health standard. There shouldn't be any stagnation pool of the water. So leakage is the main aspect in this. Loosening of foundation at other ports. And if vibration is there, definitely all efficiency, everything is gone. Wear tear will be more. So coupling bushes, absence of lubricant, sudden development of sound by the equipment, others. This is only, you can check only if you are on the site and operation staff is proactive. Then only these are the things can be noticed. Otherwise, major breakdown will be there. This can be achieved by introduction of checklist. We should have a checklist properly printed and hanging in on the wall. And for shifts also, everything should be in place. Next, please. General measures, wastage of water. I mean, a lot of topics I think must have been covered by our previous speakers. Wastage of water should be minimized by the installing taps. Consumer must be aware. These are our awareness program should be there with the social staff. No consumer should be allowed to install any type of pump directly on the distribution pipeline. Tullu pump is very common otherwise in villages. That results in the head loss or their water connection. Strict action against the defaulter should be taken by village panchayat. Physical losses from leaking, broken pipes should be minimized by repairing the distribution pipeline promptly. And one scheme is fully commissioned, operational, 100% house load should be increased. This is the game plan of the JJM target. 100% FSTC should be in the village.
Revenue collection should be 100%. If water meter is there, it should be functional. And if water meter is there, it is functional. Volume billing should not be flat. It should be volumetric. That will be as per the state policy wherever we are. People are from J&K, Haryana. I have been told Ladakh, all into this VC. So as per the state policy, you have to work to minimize the electricity consumption. Power factor is very important. We have to take care of shunt capacitor, everything. Next, please. Running of pumping machinery during peak hour, and everybody knows what are the peak hours. Normally 8 in daytimes, in summer 8 to 2. We should avoid pumping. Morning is the best hour. Similarly, in evening, these are the peak hour. If we run in peak hour, there is a voltage loss, and we should plan the running of pumping machinery hours. Operators should know what is the optimum time. Emergencies are always there, but what is the regular schedule? All valves should be functioned properly. No wastage. Avoid potable water for construction activities. Everybody knows commercial and all these issues are there. Accounting system should be transparent. That is the basis. Utility service is successful if it is transparent. Election, Gram Panchayat should not be, bogusly selected. Arm is lost. There should be a proper representation of the people. Leadership should come out from the greater number of the people. Then there won't be any more oppositions, and that will be more friendly to the village. So at the time of selection of the members, if we do the things proper, it will be a long-lasting achievement. Representation to all sections of society. These are the guidelines already you have in your state. Next, please. So role of community. 15 finance funds, how we are using judiciously. Arranging operation of the system through barefoot technician. Normally we say person technician should be from the proximity of the village. Carrying out minor repairs, capacity should be there, chlorination, water quality testing, proper infrastructure use, cleanliness, etc., etc. Leakage repair, this should be, community should be involved. Next. So we started a program of facelift. These are the old position, these are the new position. And JEs have been given the not the target, rather we have asked them, you select yourself, make yourself motivated enough. In a month, 1 or 2 scheme you take into hand, you do it in the finest way, everything, chlorination, connection, illegal connection, everything should be taken to the task, so that you should have an increasing number of well-maintained water supply scheme month after month. There should be a game plan. So we recognize them who does the proper work. Recognition, with the recognition, they are more motivated. Next. Yes, these are the some very good waterworks maintained. Next. So almost most of the things have been discussed. So maintenance deal with the activities that keep the system in proper working condition, including management, cost, recovery, repair, preventive maintenance, motivation, effective maintenance is success factor is what? Motivation should be there. Timely training of maintenance crew, availability of sufficient quality spare tools, routine checking, community participation, complaint. We should not fear from the complaint redressal system. Rather, we should encourage it. It will improve our service standard. So, end of the day, this is the department where we have been given opportunity to serve. And if we do from our heart, dil se kaam karenge, that will bear the fruit. Mistakes would be there. Perfection is never there. Perfection is only 10 seconds before. 10 seconds पहले perfection आती है, उसके बाद भगवान बुला देता है. So don't worry about the perfection. Perfection delays the things also. Start doing the things. Don't work showing to others. Do work for yourself. You know about yourself. It is the self-image. What is the self-image? Self-image is what you feel yourself inside your heart. What you are, you will do for others. So you have to think for yourself. What is my duty? Complain, criticize, condemnation has no value. We have to coordinate, cooperate.
and we should have compassion. We should be away from these things. So we have to do work for ourselves. I just would take 2 minutes more. There was one contractor, वो घर बनवाता था, उसका जो बंदा था घर बनाता था. तो मालिक ने बोला आपने सारी जिंदगी इतने घर बनाए हैं. वो कहता मैंने रिटायरमेंट लेनी है. तो कह रहा एक घर और बनाओ, ओनली वन. वो कहता नहीं अब तो बहुत टाइम हो गया सर. क्या? नहीं कहते एक घर बनाओ रिटायरमेंट से पहले. उसने बड़ा जल्दीबाजी से इधर से उधर से सब कर कुर के घर तैयार कर दिया. उसके बाद वो मालिक बोलता है चलो चलते हैं देखने. जब वो घर में पहुंचा तो उसके घर की जो की है, he handed over to him, this is gift from to you. वो बंदा अपना सिर पीटे कि मेरे को पता होता मैं अपना ही घर बना रहा हूं तो मैंने कैसे बनाना था. So these things we have to remember कि are we building the things as per our own standard or just showing others. So that's all from my side. Over to our great host, Mr. Pramod and Mr. Vikram, I think. This was all about from me. Thank you so much. Any discussion is there? I am there. If somebody wants to ask any question, please. Any question, please? Thank you, sir, for giving a very elaborate derivations on. I'm sorry, I had to start. Some time was lost. So we did things in fast way. Any questions? Participants are requested in case you have any question for Sani sir, please feel free to ask. Yes, I'm there. Very experienced person in the field of water supply solutions. कोई भी पार्टिसिपेंट्स है उनको रिक्वेस्ट है अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछना है और क्लैरिफिकेशन है या उनका अपना कुछ सेशन है और जी बोलिए कौन बोल रहे? हेलो. हाँ जी. Yeah, good afternoon. Good afternoon, Sani sir. Good afternoon, sir. I wish you had continued more. Sir, first I thank Sani sir for giving us such a good presentation on operation and maintenance. And now, as we are waiting, now welcome Sir Talwar sir, IAS Amit Talwar, IAS, and for having an interactive session. So, sir, over to you. Talwar sir. Thank you. Well, thank you, Kalia sir, for inviting me to this session. As I'm given to understand that this is an interactive session, and it is more about the summing up of the learnings of the last 2 days. Just briefly setting the tone for today's session, that all of us are well involved with the Jal Jeevan mission. We all know what the mission is. It's almost 2 years, and there is quite an achievement made by the states as per the objectives of the mission. The only thing which needs to be taken care of is that we are working in a very, very unidirectional way. That is the achievement of a target, that the pipe water supply connection. But whether the water is flowing out of that pipe, what is the service delivery parameters for that water which is flowing, what is the quality of that water. So these are the other essential topics which demand equal attention, if not less, than the objective of providing the pipe water supply. So it should not be that we supply the water, but that water is not potable or the quantity is not sufficient. As per the Jal Jeevan mission, we all know that minimum of 55 LPCD per day. That is the that is the minimum parameter benchmark set up for the rural drinking water supply schemes. So, and the time frame, the life of the design life of the schemes is mentioned as 30 to 40 years. So accordingly, the engineers and the planners have to do the planning.
And service delivery, of course, is the no number of hours is not prescribed, but in Punjab, we are doing the projects with the World Bank. So service delivery parameters, number of hours is an important parameter in the project delivery objectives. But that is what we call one of the important project delivery objective PDOs. So whether it is 24-hour, yes, there are a few 300 odd villages in Punjab which are providing water 24-hour. There are approximately, I think, 3,000 villages which are 10-hour plus supply. So what kind of a number of hours of service delivery we are providing? So that is an equally important part. So I hope that all the discussions and quality, of course, that water quality being provided is safe for drinking rather than providing unsafe water through the pipe water scheme. It's better to provide the safe water through the small buckets or whatever. So wherever there is an adequate measure for the mitigation is not taken up, it is no use extending the pipe water scheme. If there is a proper mitigation measure taken up, quality is addressed. So only then the pipe water supply scheme has to be designed. So in Punjab, we have this issue with the groundwater. In many areas, there is a issue of arsenic, fluoride majorly, while at some places uranium also is there, selenium is also there, and other heavy metals are found in minor quantities. So, but for arsenic and fluoride, Punjab has started working on changing the source from the groundwater to the surface water from the canals. Basically, perennial canals are used so that there is water availability throughout the year. So from these major big canals, like a Bohar Canal, Ganganagar Canal, or SYL feeder, so water is taken up so that throughout the year water is available and then treated at some big facility, and then transmission is done in cluster format to the number of villages. So that is what the new mode is. Approximately 2,000 villages are planned to be covered by this through the surface water. So since I know that there are people from Punjab as well as from other states, so they will be keen to know about this. I hope somebody has made presentation on the surface water projects also already from Punjab. कालिया जी, किसी ने करा surface water पे कोई इसका? Yes, Sukhminder Singh has covered during his the surface water projects. Surface water. The Moga surface water project was also covered in any of the sessions. It was demonstrated like all the people and showed it. So that way everybody is aware of that what we are talking about, in the sense that one project, rather two projects are completed, including Moga, and another 16 projects are in pipeline. So that will be covering about 2,000 villages, not only where the water quality is affected, but where the water is scarce, like the Fazalka and the Bohar belt, where groundwater is, we have waterlogging issue, the water available underground is very, it's affected by the salts that are there in the water, and it is not potable, the groundwater, although it is available at quite a little depth, but it's not potable. Currently, the water is being supplied to the canal network, which is not perennial, and these are the miners which remain closed for major part of the year. So there is a huge problem in these areas, and similarly, the Kandi area belt, where the water sources are very scarce and terrain is difficult. It's difficult to carry the water. Even the Kandi area, one project has been designed by Punjab, where the surface water has been is being roped so that the water is available 24/7 throughout the year, and the areas which are marred by the scarcity of water, they will be flush with the drinking water at least. So that is what the recent interventions, and of course strengthening the laboratory network and making it accessible to the public by way of notification of whether it is institutional, by notification of rates. People can get their water quality checked, and otherwise issuing a monitoring protocol and mitigation protocol for all the schemes, that all the schemes once in a year will be tested for chemical parameters and twice in a year for the bacteriological parameters. And similarly,
for mitigation also, long-term mitigation is through surface water or through the plants which are put in the line, that all the water which is being supplied at 70 LPCD, Punjab, the parameter is 70 LPCD, more than 55. So all the 70 LPCD water goes through the plant till the last mile, till the last tap. Or surface water is the long-term measure. But in the short-term measure, all the habitations are being covered with the community treatment plants or the RO systems or the household purifiers. So these are alternative methodologies taken for the mitigation in short term. So that is what the context is about the quantity, quality, what is happening in Punjab, what we were dealing in the Jal Jeevan mission. As I said, that the mission is not only to lay down a pipeline, but mission is that the pipeline should have a potable water in adequate quantity. So that is, and it sustains over the lifetime. So once we talk about the sustenance, then the issue of the involvement of the community, ownership of the community, making the community ready for that change to take the ownership. Although we know that all this emanates from the 73rd Amendment, when the water was management of water at the local level was given to the local self-government. At the village level, the local self-government is the panchayat or the village panchayat, gram panchayat. Now, through the constitution of gram panchayat, water and sanitation committees in Punjab, in every village or every gram, with every gram panchayat, so that business is managed, that they are capacities built, they are trained, they are to be given some training about the financial management. Rather, in Punjab, we are developing a platform where the gram panchayat, can plug, they can put all of their data of the consumers, and then they can plug and play for the bill generation, bill collection, and keeping and all the accounts on the platform. That platform is being built for us by the eGov Foundation. So that platform is already ready. I think pilot must have also started. It was planned somewhere at the end of October. So with that, it will be much easier for the panchayats to keep an accountancy, and it will be available digitally. And with a little training of the revenue collector, which is very, very minimal training. So the platform will be available to the gram panchayats for financial management. So these kind of interventions to build capacity of the panchayats, to provide support to the panchayats, I think that can go a long way in self-management, enhancing the self-management by the water supply schemes by the panchayats. So that is what exactly the role of the local self-government is. And that is the role of the state government, is how to support the local self-government. So it's since 1992, when the 73rd Amendment happened, but still after 30 years, still the local self-government is yet to be trained, and enough capacity has yet not been built. And that kind of orientation, that they are responsible for their own schemes, they are responsible for their own management. So that still there is a huge gap which is to be covered by way of dialogue, training, involvement, exposure, so that IEC activity has a great role on bringing on board all the stakeholders. So that is what the Jal Jeevan mission also places a lot of stress upon. So this is the broad contours I have discussed in a very, very general format, very generic, without referring to the much specifics. So I think now some kind of a dialogue or two-way discussion or some kind of a participatory discussion that we can initiate. And I will request that some of the participants कालिया जी, participants कहाँ से हैं? तो आपके the view just नीचे participatory है, नीचे बार के ऊपर, we just click that. Okay. Yeah. Okay. So Sari Saab is still there or is left? Yes, sir. Yes, sir, I'm there. Okay.
So just to build up a discussion format, I will request your this thing kind of moderation. Right, sir. So, what kind of issues you have referred in your discussion with the participants? Sir, mainly first issue, rather not the issue, I have advised as per the Punjab structure, section should be strengthened as far as technical matter and social matters. Sir. Precisely, that is what I mean to say is that there is a gap. Like state knows its role, but how the local self-government is to be facilitated or supported, this gap is through the machinery of hierarchy of sections, which is the lowest rung, which is to provide the technical support base to the gram panchayats, to the group of villages, cluster of villages, which is the responsibility of that particular section. So institutionalizing a section means that the section strength is fixed, the capability of a section is fixed. There are 3 people from the group C, that junior technician level. There are 4 people from the helper level, technical helper level. So these 7 people are there in the section. Of course, we can't claim to be having the 100% institutionalization in Punjab even, but still that concept, it has been conceptualized and it is being evolved. So that is the kind of support which is required to be given to the local gram panchayats to be of their own and to ultimately take up the responsibility of their own management of the water resources. So that is it. And rather, sir, we can add here from the GPWSC side, all the operator should have the capacity building on the pattern of our regular staff, sir. They could handhold to the GPWSC those staff which is kept by the GPWSC themselves for the operations. Yeah. So there is hardly any difference, Sani Saab, in the sense that ultimately everything has to go to the GPWSC. And yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, and goal is utility services. Yeah, there should not be any distinction as to our staff or the GPWSC staff. In that sense, that everybody has to be on board and has to be equipped with the same skill set to manage the scheme. Even if whether that is a department person or whether that is a GPWSC person, the skill set of technical side, skill set of social side, skill set of the financial side, that has to be imparted to the last mile, that is the last person who's managing the scheme. So I 100% agree with you, Sani sir. May I request some other participants to come up with any other suggestions or any other issues which they've naturally there has been a discussion for last 2 days. In last 2 days discussion, whatever the idea, suggestion, issue you feel, or any kind of a puzzle or a riddle which is yet not solved, so we can discuss that right now. This is the session for this purpose. Officers, the participant from Haryana can also, because yesterday they were having some issues, or they can elaborate on. They have also having a section being how they are being operated or how it is different from Punjab. Anybody from Haryana? So Sanjeev Kumar ji, aap ho? Or from J&K? Even J&K and Leh Ladakh, those are the hilly terrain. Yeah, Ashok Banglu ji, if you have any question. Kalia Sahab, the people, engineers who are serving at the hilly area like J&K and Leh Ladakh side, I think they are into this program. They are there. J&K, Leh Ladakh. They should have a proper, program over the working of the sluice wall. Community are settled at the different elevations. How they give equitable water, that is the main
aspects in the hilly area piped water supply. Equitable water to the communities settled in some is our 100 meter above, some is 100 meter below. How they ensure the water? I think same is it may be on the elevation may be different. Sanisau, the same is the problem in the Malwa schemes in the canal where there are zones. Yes, So, yes. Right. So there are the villages at the fag end of the last end of the. Sir, you are more technical pipeline. now, sir. Zoning is the right word, actually. Yeah. So whether irrespective of the altitude, there are zones which are to be given water in equitable manner. In Whether it is Haryana, plain engineers area or also whether can it comment is. over. Haryana engineers can also comment over this. Sir. They are most of the having canal water schemes. And they must be working on the zones also. Yes. Somebody can come out, action sir, how you are maintaining the zoning and equitable water supply to every locality of the village, every patti and what you can say. सर सुनना ही पसंद करते हैं ज्यादा लोग. I request Rana ji, आपको This is the mode on the online. Once it is offline, then I think we can do some more activity and role playing or anything like that. So that kind of. Javed ji, आप कहाँ पे हैं? Where are you participating from? नमस्कार सर. हाँ जी, नमस्कार जी. सुधीर जी. सर एक्चुअली मैं गांव में हूँ हरियाणा में, तो हमारे पास वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है ट्यूबवेल बेस्ड हैं. हाँ जी. तो जोनिंग की जो बात हो रही है वो जस्ट इस तरह से है कि जो हमने हर एक जोन के लिए, जैसे पॉपुलेशन 4000 है और 1000 पे एक ट्यूबवेल आता, तो हमने कॉर्नर्स पे विलेज के वो ट्यूबवेल लगा रखे हैं, तो वो इक्विटेबल मतलब बराबर इसके हो जाती है जो हमारे. नहीं, आपने हर जोन के लिए एक ट्यूबवेल लगाया? ऐसा है सर कि हर एक जोन में अलग अलग लगा दिया, अलग अलग कॉर्नर्स पे विलेज के 4 पॉइंट्स पे. ओके, व्हाट अबाउट द स्टोरेज? इज इट 4 सेपरेट स्टोरेज? और डायरेक्ट पंपिंग करते हैं. देयर इज नो स्टोरेज, डायरेक्ट पंपिंग. एंड हाउ मेनी आवर्स द सप्लाई इज केप्ट? Sudhir ji, how many hours the supply is maintained? So supply hours are 2 in the morning and 2 hours in evening. So that makes it 55 LBCD हो जाता है उससे? Yes sir, आ जाता है. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ कैनाल बेस्ड नहीं है, ट्यूबवेल बेस्ड स्कीम्स हैं, जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं. क्लोरीनेशन में क्या करते हो आप? सर क्लोरीनेशन में हमने डोजिंग पंप्स लगा रखे हैं, उस पे पंप चेंबर के अंदर डोजिंग पंप्स, और जो डिलीवरी है पंप सेट की उस पे उसको इंस्टॉल किया हुआ है. और ये सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं आप? सॉल्यूशन सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज कर रहे हैं सर. ओके. कहाँ से लेते हैं आप लोग? सर ये पंजाब एल्कलीज से लेते हैं हम. अच्छा, यहीं से ले रहे हो? पीएसईएल से ले रहे हो? जी. नहीं, हरियाणा जो अदर पार्ट है नारनौल साइड, वहां पे कहाँ से जाता है? सर एक्चुअली हेड ऑफिस ने ऑर्डर कर रखे हैं कि और बाहर से परचेज नहीं करना, उन्हीं से परचेज करना है. हम टोटली उनसे 8 MT का कंप्लीट मंगा लेते हैं और उसी को यूज करते हैं. Right. That's good. That is excellent. But it's interesting, Sani sir, that we can do without the storage also. Like storage can be planned maybe subsequently if required. But direct pumping is, I don't know, we in Punjab are not much relying upon the direct pumping. Yes sir. Actually महाराष्ट्र कॉन्सेप्ट भी यही है सर. ESR, एलिवेटेड सर्विस रेजरवायर, छोटे छोटे बना लेते हैं जहां जरूरत होती है. That acts as a balancing reservoir basically. That is agreed. But for small habitations, as we are mentioning, like 1000 or less than 1000, do you really need that storage? नहीं, that does not require sir. 5000 लीटर का 10000 लीटर का टैंक लेंगे, उससे डायरेक्ट पंपिंग हो जाए, सप्लाई आवर सफिशिएंट है. ब्रेक एक्चुअली पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी इशू भी नहीं है ज्यादा सर. Actually, the storage tanks were of the era when there were 4 hours supply and 20 hours blackout. Now it is other way around. Rather, even not 4 hours blackout is there. It's 24-hour water supply. But JJM में 50%.
So once the 24-hour electricity supply, you can do the direct pumping. That is not. कर सकते हैं. JJM में वैसे 50% कर दिया सर स्टोरेज. We are doing 33%. Right. %33 of what? Capacity of the scheme ना हम लोग 30% mostly सर capacity of HSR. But आपका 70 LPCD पे भी है ना उनका. हाँ 70 है. JJM ਦੇ ਵਿੱਚ 50% मतलब. आप 30% of the 70 कर रहे हो ना. जी. तो वही आ जाता हूँ. जी जी जी. So another concept we have practiced in Punjab also, sir. We have kept a small 200-liter tank on the rooftop of the people in the small habitations. And once this is filled, that is a 24-hour water supply rather. Yeah, this was a few pilot where the number of households was 60, 50, 60 and population about 300, 400. Yes. So instead of having the one big tank, small tanks or like 200, 250, that has been provided on the top of the roof rather than doing one consolidated storage. Yes. So this is another trial, but of course it has its own questions and issues. Whether that is to put up by the household or whether to put up by the government in that sense, or government has to provide 5,000 LPCD at one place. So nonetheless, but I will like that other. There have been like 2 days of discussion and monologue also already for last 2 days. I will request the other participants to be two-way communicative. To basically it's a feedback session and to take suggestions and feedback and summing up. Interactive session. Anybody else? If can. J&K. रैना जी आपका कोई J&K से है आप कोई इश्यू कोई आप बोलना चाहें? From the J&K, who's the senior most officer, we have to make it compulsive participation on interaction. Who's the senior most officer from J&K? जैसे जुगल किशोर हैं जी यहाँ पे विजिट है. किशोर बांगू जी हैं. जुगल किशोर जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. हाँ सर, हमारे मोस्टली जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ता हूँ सारी लिफ्ट स्कीम में है सर. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको? सांबा डिस्ट्रिक्ट है सर हमारा. सांबा, ओके. हाँ, हमारे सारे ट्यूबवेल ही हैं सर. तो जो डिस्ट्रिक्ट में तो हम काम चला रहे हैं. अभी हमने जो 105 स्कीमें JJM में बनाई हैं. 105? हाँ जी सर. Covering how many villages? सर देयर आर 382 विलेजेस. हाँ. तो एक स्कीम मल्टीपल विलेजेस में भी जाएगी? नहीं सर, जो 382 में हमारी जो है वो 176 जो है वो JJM में आ रही है सर. ओके. हाँ, तो उसके लिए हमने 105 स्कीमें बनाई हैं. मोस्टली हमारी कोई 50% स्कीमों पे काम 40% स्कीमों पे काम चल रहा है. अभी उनके सोर्सेज डेवलप हो रहे हैं. राइट. तो जब सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद हम पाइपलाइन जो है वो शुरू करेंगे. क्योंकि बगैर सोर्सेज के पाइपलाइन बिछाना तो गलत हो जाएगा सर, अगर हमारा सोर्स ही फेल हो गया तो. पंजाब के एक साइड पे आप हो, दूसरी साइड पे हरियाणा है, उनसे थोड़ा सा पूछ सकते हैं. वैसे उन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्लीट कर दिया सारा. नहीं सर, हम पहले हमारे ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल में कई बार डिस्चार्ज आता है, कई बार नहीं आता है. तो पहले हम पूरी जील्ड लेंगे ट्यूबवेल की, उसके बाद हम अपना नेटवर्क आगे पूरा करेंगे सर. हम अपना. Okay. Sir, he is right, sir. Actually, source we have also these guidelines, sir. If source is not developed, source is developed properly, then only network should be taken into hand, sir. Yeah, I agree with that. That is.
That is a systematic way of doing the things, but I think we can have another learning from Haryana. हरियाणा से सुधीर जी, आपके तो मेरे ख्याल से आपने 100% कर दिया है पाइप वाटर कनेक्शन पहले। आप म्यूट पे हैं। हाँ सर, हमने कर दिया है सर। एक्चुअली हमारे ऑलरेडी कनेक्शंस भी थे, पहले से ही थे लोगों के, लेकिन वो रेगुलाइज भी नहीं थे, तो वो रेगुलाइज भी कर दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी हमने कंप्लीट कर दिए। और सोर्सेज का काम अभी चल रहा है कई जगह पे। हाँ, सोर्सेज का काम चल रहा है सर, जैसे कि क्वांटिटी बढ़ानी है या क्वालिटी ठीक करनी है, वो हमारा काम चल रहा है। बाकी कनेक्शन सारे घर में प्रोवाइड है। जहाँ क्वालिटी का इशू है, वैसे वहाँ कनेक्शन का कैसे, फिर हाउ डू यू, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? सर एक बार फिर से थोड़ा, जहाँ पे क्वालिटी का इशू है वहाँ पे कनेक्शन दे दिया है, तो हाँ वहाँ सर, पे क्वालिटी का जैसे कुछ पोर्शन ऐसा है, ट्यूबवेल बेस्ड है हमारा, पर वहाँ पे क्वालिटी का इशू है, तो हमने उसको कैनाल बेस्ड शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है एनसीआर चैनल आती है, उससे रॉ वाटर लेके हम पंप करके लेके जा रहे हैं उस एरिया में, और वाटर वर्क्स वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। No, that is okay, but water quality के लिए कैसे कर रहे हैं? जब हाउसहोल्ड में पानी पहुंच जाएगा, are we suggesting that this is not drinkable or potable for the time being? सर एक्चुअली जो है उस कुछ पॉकेट है, ज्यादा नहीं है, कुछ पॉकेट ऐसी है जिसमें शैलो डेप्थ पे पानी फिलहाल तो पोर्टेबल है, लेकिन मतलब कॉज ऑफ रिजेक्शन की तरफ जा रहा है वो। ओके। तो उस पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं जेजेएम में। राइट। Any other participant I will request? No, it can't be discussion between 2, 3, 4 people, right? अशोक जी, आपका क्या, कहाँ से हैं आप? मिस्टर अशोक बांगड़ू। हेलो सर। हेलो जी अशोक अखनूर जी। पीएचई अखनूर जल शक्ति से हूँ सर। हाँ जी, अखनूर जल शक्ति। अखनूर। हाँ जी सर, हमारे पास सर जेजेएम में 120 स्कीमें हैं। ओके, कितनी इम्प्लीमेंट हो गई, कितनी अभी होनी है? 40 पे काम चल रहा है सर। अच्छा। 40 स्कीमों पे काम चल रहा है, तो सारा लिफ्ट है हमारा सर, सारी लिफ्ट स्कीमें हैं। लिफ्ट स्कीम कैसे है? ट्यूबवेल बेस्ड है सर। अच्छा, तो वाटर इज अवेलेबल, कितने डेप्थ पानी कितने डेप्थ वही पे सर, अवेलेबल? सोर्स पे अभी सोर्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि नहीं, पर सोर्स जनरली एरिया में कितने डेप्थ पे पानी अवेलेबल है? सर 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट भी। और साफ पानी है, कोई क्वालिटी का इशू? नहीं, क्वालिटी का इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सर 90% पानी ठीक है। यू आर लकी दैट इज। पानी आपका पानी उसकी डेप्थ भी ठीक है, ज्यादा नहीं है, और पानी भी साफ है, तो दैट इज normally it is linked with the depth. More the depth and more the impurities in the water. Right. When Punjab used to have water at a lesser depth, then there were no issues with the water quality. As the water table साथ है, तो उसकी वजह से सर। हाँ जी, रिवर चनाब भी है साथ साथ, अखनूर में चनाब। राइट। तो उसकी वजह से कि ज्यादा डीप हमें जाना नहीं पड़ता है। राइट। आपके क्या चैलेंजेस, इश्यूज मतलब फेस कर रहे हो आप? लिफ्ट हमें, हमारे पास काफी स्टेजेस बनती है। अच्छा। टेरेन है तो लिफ्ट काफी बन रही है, वो दिक्कतें हैं हमारी। कितना लिफ्ट करते हैं आप मैक्सिमम? वही सर 100 फुट भी है। 100 फुट है ये 100 फुट के आसपास भी लिफ्टें बनती है हमारी। तो अब इसका एक्सटेंशन, नेचुरल एक्सटेंशन ये होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा उसकी। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिसिटी और तो हमारे JNK में वैसे भी सर पूरी नहीं मिलती है, तो वो इश्यूज हमारे ऑलमोस्ट अल्टरनेट सप्लाई हफ्ते में 2 बार 3 बार प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जनसेट वगैरह यूज कर रहे हैं फिर? नहीं सर, जनसेट नहीं यूज कर रहे। तो फिर वाटर सप्लाई 2-3 दिन में आती है, तो स्टोरेज पे रिलाई करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट पंपिंग जैसा कुछ नहीं हो सकता जैसा हरियाणा में वो है, स्टोरेज पे रिलाई कर दे, स्टोरेज करना पड़ेगा। राइट सर, स्टोरेज। बट इन इस टाइप सिनेरियो में 55 LPCD तो मुश्किल हो जाएगा अचीव करना। वो है सर, वो चैलेंजेस है हमें। 55 LPCD
अचीव करना मुश्किल है सर, लेकिन फिर भी अब JJM में देखते हैं, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा काफी। ओके, जब आप वाटर लिफ्टिंग करते हैं तो स्टोरेज तो उसी लेवल पे बनाते हो कि जैसे आपका जहाँ पे सोर्स है स्टोरेज वहीं पे करते हैं, या स्टोरेज नहीं भी नहीं, लिफ्ट करके करते हैं ऊपर लिफ्ट से? करके स्टोरेज करते हैं वहीं से, तो फिर ग्रेविटी से सप्लाई, ताकि ग्रेविटी से सप्लाई आ जाए वहां से। ओके ओके. No, there can be two alternatives which I can think technically. One is that storage के साथ ही सोर्स के साथ ही स्टोरेज अगर बनती है तो वहां से आप जब मर्जी अपनी मर्जी से लिफ्ट कर सकते हैं, पर सिंस आपके वो भी बिजली है। का इशू है, राइट, तो बिजली का इशू है तो स्टोरेज आपको ऊपर ही करनी पड़ेगी। राइट, हाँ, उस वजह से स्टोरेज अमूमन हम ऊपर ही करते हैं। राइट. So this is how the last KRC meeting in last week. So I was talking about on the other side, I was talking about the context that no project can be thought in there's no cut and paste formula for the projects. Every project has its own specifics. Every scheme will have its own specifics. So one has to think of the context. Now, context in the Kruur is entirely different from the context what we heard from Haryana. So these are two entirely different scenarios. So according to the scenario, and then scenario is not in terms of terrain only. Scenario is in terms of the local population readiness also. So how much the local population is ready, whether they are active participants, the local population, or whether they are inactive participants, and how much effort is required to mobilize their support for the projects, to mobilize them to take up the ownership of the projects. So that is also a context which has to be recorded, and accordingly उस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा प्लानिंग की स्टेज में, rather pre-planning stage में, not a planning. Before pre-planning, one has to note down the context very carefully. What kind of sources are available? What kind of terrain is there? What kind of difficulties, distribution network, whether it is a hilly network or whether it is a plain network. एक तो वो तो टेक्निकल साइड हो गया. देन सोशल साइड पे who are the influencers, social key people out there, उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस लेवल को कितना बढ़ाने की जरूरत है. So all those kind of social context also is important. So contextual identification of context, that is the most important thing to be done in the pre-planning whenever a scheme is designed. So village action plan is one very good way to go about that, as envisaged in the Jal Jeevan mission, that while preparing the village action plan, we can capture all that context. What is the geographical resources available with us? What are the technical water sources available with us, and what are the social mapping is done to find out how much social work has to be done to make the people involved and to take up the ownership. So right from the as early as possible, that ownership has to be built right from the planning and the design. So village action plan is the first activity towards that. And after that, not only the completion of the scheme, but after the completion of the scheme, it has to be handed over and managed by the community. So the idea is to plan so that it is ultimately handed over to the community. But in certain scenarios, again, the context is very important. You have so much of lifting of water, the electricity bill will be so high that people will not be ready to take up the scheme. Again, the context comes into the picture. So you have more handing over where the electricity bills are less, where the overall expenditure on the scheme is less, handing over is more. Where the scheme expenditure, O&M expenditure, the electricity expenditure, electricity is the major expenditure in O&M. So wherever the electricity expenditure is higher, there is a less acceptability of the scheme ownership. So what is the kind of what can be the solutions to these localized problems? How to resolve this? How to bring the equality platform in all these? I think the recent Punjab government has taken a decision to already the electricity for the agriculture is free. To add on to that, the rural drinking water supply scheme electricity bill is also taken up by the Punjab government of its own. So that is quite an equality factor. Now the only variation is only leftover expense is the expense of the actual maintenance of the scheme on the water side.
leaving aside the electricity. So in a sense, that is quite a equitable step in that sense that there were schemes with a high expenditure on the electricity, there was scheme on the less expenditure on the electricity, but now there is equality at least for that part of the electricity. So the only variation now is how efficiently the water part of the scheme is managed. So that should, I believe that should help the Punjab government now in smooth handing over and quick handing over of the schemes after this. So any other views on that or any other reactions to this statement? Any more questions? Any, I will like, there are many officers from Punjab itself. Okay, Chamak. Chamak Singla. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी जी सर। तो आप बताइए अब कैसे हैंडिंग ओवर वगैरह इजी हो जाएगी कि नहीं? सर अभी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जो हुआ है लाइक उसमें काफी मतलब सर रिस्पांस ठीक मिल रहा है लाइक अभी जो तो मतलब लाइक अभी अवेयरनेस वगैरह कर रहे हैं सर गांव में। कुछ ज्यादा हैंडिंग ओवर का सर मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो स्कीम पे उन्हीं में इशू आ रहा है। बाकी तो मतलब सर मतलब पंचायत से यहाँ इस एरिया में लाइक दे आर विलिंग कि उनका वर्क हो जाए, उसके लिए ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही सर। थोड़े जहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्क है सर वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, वो थोड़ा सा उनको मतलब मिसगाइड कर देते हैं। वैसे कोई ऐसा कोई भी पंचायत ने मतलब इस चीज को लेके नहीं मतलब मना किया काम करवाने से। Sani sir, how do you view this? Sir, we are talking about handing over. I think Harbans Singh ji wanted to say something. Yes. Yes, sir. I am also from Jammu. Right. Sir, you might be knowing Mata Vaishno Devi ji. Yes. So I have that part of in my jurisdiction. Okay. District Riasi, sir. Now the context, I let me visualize. Your context is entirely different. Yeah. There is a huge variation in the demand at peak season and off peak season. Moreover, there is also a huge difference of levels from the source to the Mata Vaishno Devi ji. Right. So there are multi stages of pumping stations. So Perfect. electricity and this pumping, it is a, I think, manifold question there. No, So, but there is a shrine board who should pay the bills to you. No, shrine board is helping us, but I mean to say, sir, other topography is the same. Right. Riasi district and other hamlets are very high peaks. High peaks. So we have all over this problem, sir. In the district, we have almost 118 schemes. And these are looked after by the two divisions. One is Mahor division and our is this Riasi division. What is your source for the Katara and Bhavan? Sir, there are local sources, small nalas, streams, and other spring sources. So, to cater the demand of Shrine Board, Shrine Mata Vaishno Devi, we have a just 5 or 6 years ago, we have proposed a scheme that is functionally well. That is giving almost 30 lakhs gallons per day. That is a Tansar scheme. So, whenever you sir, you visit the Shrine Board, you may visit that scheme. So that is a big achievement for us and for the Shrine Board relief. जो हमें उसी स्कीम से सर हमें रिलीफ मिल रहा है जो श्राइन बोर्ड को ये इतना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो अदर सोर्सेज हैं उसमें इतना हमें पानी नहीं मिल रहा है। वो एक उधर लोकल एक रेवर्ड श्राइन है उधर, उसको भी बाबा धनसर बोलते हैं, और वहां से उसको स्प्रिंग को पानी को हमने टैप किया हुआ है। वो बहुत बाणगंगा का पानी नहीं यूज करते हैं सर। बाणगंगा का भी यूज हो रहा है बट वो बहुत लिटिल क्वालिटी में, वो उसका जो वॉल्यूम है वो कम है सर, उसका क्वांटिटी इतना ज्यादा नहीं वो कर रहा, कैटर नहीं कर रहा सर। तो अदर बाणगंगा एक स्मॉल पोर्शन में रह जाता है, उससे आगे हमारे बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है वो स्प्रेड करता है और रामबन तक वहां आगे चला जाता है सर। ये हेमलेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है। तो मैंने इसमें अब चुनाव भी एक साइड पे चलता है मगर उसको हमने टैप नहीं किया, वो बहुत उसका लेवल तो बहुत हाई है। तो उसके जो जैसे ये अखनूर से मेरे एक साथी बोल रहे थे, इनको रिचार्जिंग मिल जाती है उसके रिवर बेड जो चुनाव का बेड है, हमें उसका रिचार्जिंग नहीं मिलता सर। आप अल्टीट्यूड पे हो गए ना उससे।
राइट सर, राइट सर, राइट सर। सो दीज आर मेरा कंटेस्ट यही है कि पंपिंग एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज टू हाई सर। आपके पंपिंग में कितना मैक्सिमम हेड की मशीनरी यूज हो रही है? सर अभी मैं तो मैकेनिकल साइड से नहीं हूँ, मैं आई एम फ्रॉम सिविल साइड, बट इसमें जो हमारा जैसे कटरा से हमारे जाता है पानी माता वैष्णो, ये 6 और 7 स्टेज में जा रहा है सर। ये हेड कितना होगा? 200 मीटर, 100 मीटर? सर ये ऑलमोस्ट इसमें डिफरेंस होगा कोई 2500 फीट का। 2500 फीट का अप्रोक्सीमेटली सर, आई एम सेइंग। नहीं, 600 मीटर की हेड की होगी ना मशीनरी फिर हाँ, आपकी? 600-700 मीटर हेड की होगी सर। हाँ यस सर, इतने दिन हेड की हमारी मशीन नहीं, आप मल्टी स्टेज बोल रहे हो ना, सो यू मस्ट हैव हाँ ब्रोकन मल्टी द मशीन। नहीं, इसको हमने मल्टी स्टेज में डिवाइड किया हुआ है ना सर। तो आपका फिर 150-200 का एवरेज होगा ना हाँ, आपके एक 150 स्टेज का? राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। तो वहां पे आपके वो ट्यूबवेल नहीं लग रहे वैलीज में? सर पहले ट्यूबवेल जो है वो थोड़ा इतना डिस्चार्ज वो इतने फिजिबल नहीं है। कुछ हमने अभी पिट्स दिए थे जेजेएम में, वो फेल हो गए सर। पर्कुलेशन वेल, पर्कुलेशन वेल? हाँ, वो पर्कुलेशन वेल कभी है ज्यादा। हमारे पास जो स्प्रिंग्स हैं उनको कलेक्शन में बनाया हुआ है और उन्हीं से हम थोड़ा ज्यादा कलेक्शन टैंक बना दिया उनको। राइट सर, राइट सर। और ट्रीटमेंट क्वालिटी? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए अभी तो पहले तो चल रहे हैं जैसे हमारे, उसके लिए तो प्रॉपर सैंड फिल्टर और जो भी हमारा बना हुआ है उसके लिए तो प्रॉपर है जो श्राइन बोर्ड के लिए जाते हैं। बाकी भी हमारे वो उसमें सर बनाया हुआ है हमने। तो जो आप जेजेएम वगैरह है इसमें तो नए प्रपोजल में हर एक चीज जायज पर साइट रिक्वायरमेंट जो है वो हमने प्रपोज किया हुआ सर। तो आपके स्प्रिंग्स में हैवी मेटल वगैरह तो नहीं होंगे? सर एक जगह मैंने कल भी इशू किया था, एक जगह इसमें कैल्शियम आता है सर, एक हमारा सोर्स है कोई मैंने अच्छा। या और पता नहीं, मैंने केमिस्ट से पता किया था कल ही हमारा ये मीटिंग में हमें ये थोड़ा पता चला, तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि कैल्शियम का थोड़ा प्रॉब्लम है एक जगह। तो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी हो तो वो सर वी विल हैव इन आवर प्रोजेक्ट्स आल्सो। So as such, in Punjab we have not faced this problem, but ultimately it is the filtration the best. But calcium magnesium तो आप एलम यूज करते थे पहले? एलम से हो जाएगा सर? पता नहीं, सैनी साहब नहीं कोई नहीं, we will inquire it. Right sir, right sir, right sir. You can note alum and bleaching we are using that. You can note down our number, you can interact on this issue. 8264647328. 8264 सर? मैं चैट में डाल देता हूँ 8264647328. Thanks sir. Thank you sir. Anybody else? It's good that of late people are coming out, but at least we are discussing some context and some local issues. So it's always a learning to hear about that and to think that things in larger perspective, in the perspective of the others. So participants may not know about Shri Amit Talwar ji, IAS officer hai, or he is a BTech also. He had been our HOD for a very longer period and instrumental in modernize the DWSS. I mean, all the app, all the mechanism of MIS and hiring of very specific jobs, ISA, consultants. I mean, there are a number of things. SNK is modernized. Graphical presentations of the SNK, we monitor to keep service mechanism for breakdown below 5 days. ये सब ग्राफिकल सब इनका है, बहुत टेक्नोलॉजी इन्होंने इम्प्रूव किया है हमारे डिपार्टमेंट में। फिर वाटर क्वालिटी सेल में पूरा लैब का नेटवर्क, उसको NABL करवाना, लॉट ऑफ थिंग्स। सर सो मच थैंक्स। Thank you Sani sir for the generous words. I think I had my farewell very नहीं सर ये तो मतलब लॉन्ग मेमोरी थिंग्स है। Thanks a lot. I think we come to the close of the session with this. We have gone beyond 4 o'clock. So Kalia ji, I think we can close the session until and unless still anybody still has some inkling to speak out. That is always welcome before we close. That will follow up sir with them also in case anybody has afterthoughts. No, आप इनको ना classroom में लाइए, then it will be more fun to next exercise it is only. एक कालिया साहब एक रिक्वेस्ट है, जब ना पार्टिसिपेंट दे ज्वाइन द VC, अपना एक इंटर स्टेट है तो स्टेट लिख दें पहले, कुछ डेजिग्नेशन स्टेट नेम थोड़ा डिटेल्ड हो। That will share sir in future also.
कहाँ से है क्या है. And So it was a good learning experience. I always say that Sani Saab is mentioning other way around. I have learned a lot from the Department of Water Supply and Sanitation, and particularly this sector, which is connected to the people in a very direct sense. Yeah. So that is I will say that just a second. Let me. So it is always a two-way learning. So that is, the more you speak, I always ask you more to speak, because it is my own interest to hear and take the leads and learn more. So nonetheless, we will have more interactive sessions coming the way forward. This is just a beginning. So with that, thanks a lot once again, Kaliyaji. So I hand it over back to you. Thank you. Thank you. Sir, thank you very much for sharing your in-depth knowledge on the subject and guiding the participants regarding how to make a scheme successful, and with your vast knowledge, as Sanis have also said, that the modernization of water supply and sanitation in Punjab has been initiated, and you were at the forefront. So thank you very much, sir, for sharing your thoughts. And I'm sure that all the participants must be enlightened with your interaction. So thank you very much, Sanisab, also for sharing your thoughts also and giving input, valuable input. All the participants, I'm sure they must have been benefited with their vast experience. So now, since we are in the close of the two-day training program, so to the participants, I will just demonstrate the feedback form, which is very essential for us as well as for our resource persons also, because we have to build up our future training schedules based on the feedback in terms of the model which we have designed it, and in terms of the participation, the speakers, what sort of topics further we can include, because this was only the online sessions because of the prevailing situation. We are going for offline also in subsequent month. That is also already planned. And there we will have a physical interaction, and that will be more fruitful. Nonetheless, I now just show you that feedback form is a very mandatory. It is, so I request all the participants to please fill up the feedback forms, and we will tell you, we will provide a link also. Otherwise, you can just go to MASIPA, Mahatma Gandhi Institute of Public Administration's website. A link is provided there. I'll just show it to you. It will be on your screen. And here under the this is a site of MASIPA. If you just go to links, if you go to the links, then just click it, course feedback, and then you will get the link. See, only thing is, because in the previous program, we were some of the participants were not able to fill up, merely because they were not selecting the date. So you have to select the date here. Once you select the date, like suppose we have 8th and 9th, so now the drop down will come. So you can select the drop down of 8th and 9th, okay, and then you can fill up. These are the you have to register your mobile number, email ID, your name, and designation. And once you fill up this thing, we just demonstrate to you in case you just fill up this thing, then then you'll once you fill up this 5 columns, the rows, sorry, the 5 rows, then you will get, you have to click on this. Now this is a very common this thing where you have to give your rating, give your suggestions,
and then is the multiple options are given, and then you have to give your own feedback. So my request to all the participants, to you who are not now at the moment, but they attended the earlier also, and whosoever registered, all the nominated persons from your respective states, participants, please fill up all these things and send it to us. This is available on MASIPA website also. We'll provide you a link also, because we have already generated a WhatsApp group, as you are aware, that in the WhatsApp group also we'll provide the link. However, this is, you can just log into MASIPA website, and there. You can further also, in case you have to access, if you have to access MASIPA homepage, okay, and the homepage also, if you just go to the centers, just in centers also, centers, now you find the KRC JJM is there. Okay, if you just you click here, there also you will get this page designed for JJM only. So there also you can give your feedback, and for future also, whenever there's a column for suggestion boxes also there, you can give your suggestions separately also, as well as we have given links also. You can go to JJM training links, you can go to JJM dashboard, and operational guidelines also, and Margdarshika also there, and we will put in some of the photo gallery. So this web page is also designed for JJM. So you can access either way. You can go directly to the feedback form, which is accessed on the site, or you can go to the web page of under centers heading. You will find that the JJM KRC, and there also you will find the form. So I request once again to everybody to fill up the form and please send it to us. So I hope this training session for 2 days have been very helpful to you, to clear certain doubts and to improve upon if you have well designed your schemes, and with a vast experience of the resource person right from Mr. Dupola. So I take this opportunity to thank all the resource persons, Shri D.S. Dupola ji from UNICEF, Engineer Sukhbinder Singh ji, Engineer Y.S. Jillan ji, Engineer K.S. Saini Saab, Sir Amit Talwar ji IAS, and the other Mr. Deep Gandhi also, he was here. So I thank all the resource persons, eminent speakers, and last but not the least, all my participants, all you participants who have been nominated by this respective states for joining us in for 2 days training program. So once again, thank you very much. Hope we'll see you soon in one or another program when we are going to have the offline this. So thank you very much. Thank you, sir. 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 क्योंकि वो पास आउट होए ना पास ना सर 15 साल हो गए ना पास आउट हुए
I request to switch on the videos. Most of our participants are there. They're still on, and request them to.